shit, G shit, I really do this shit. I ain't about it, but you know I'm walking through this shit. Look, 8 rounds in the 45, it go down. Look, 8 rounds in the 45, it go down. Look, 8 rounds in the 45, it go down. Yeah, 8 rounds in the 45, it go down. Yeah, 8 rounds in the 45, it go down. 8 rounds in the 45, it go down. Yeah, 8 rounds in the 45, it go down. 8 rounds in the 45, it go down. Yeah. Fuck, I ran, I hit the dealer. Serving Coke 45 at the bleachers. About to follow for a follow, I'm the leader. Hit the bitch, then I pass, I don't need her. But don't call Peter. Like the Griffins with the lowest with the Peter. At the pops, he be smoking gasoline. I cannot fuck with these leaners. 8 rounds in the 45, it go down. 8 rounds in the 45, it go down. Yeah. 8 rounds in the 45, it go down. 8 rounds in the 45, it go down. Yeah. 8 rounds in the 45, it go down. 8 rounds in the 45, it go down. Yeah. 8 rounds in the 45, it go down. 8 rounds in the 45, it go down. Yeah. Said that I care, asked do you mean it? It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. Oh. You deserve to be alone, to be the one they're always thinking of. And I'm sorry I couldn't be there for you. Admit that I ignored it. You deserve to be alone. You deserve to
closer. Justin Diamond, Alvin, let's go. Yeah. I'm in the whip with authority, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartiers, and the bitch deserve it. Put in work for the money, she earn it. Give me top every night, lip service. Gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that Molly, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that Molly, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that Molly, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that Molly, yeah. Shorty a dancer with her OnlyFans, got her bands up. She independent, got a land truck, don't need no man, but I'll man up for that. Ooh, put it on camera. She a freak, nothing I can't handle. When I'm pulling up in that phantom, I got a pussy wetter than Niagara. Bitch, I'm a dog, I'm with the leash. Ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them off, falling my teeth. None of them fucking with me in these streets. Ooh, Sky Bree hit me in my DMs. I've been trying to meet up and see ya. I can fly you out to Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky Bree. Ooh, right beside me, in the phantom off that Molly, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky Bree. Ooh, right beside me, in the phantom off that Molly, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky Bree. Ooh, right beside me, in the phantom off that Molly, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky Bree. Ooh, right beside me, in the phantom off that Molly, yeah. देखिए क्या चल रहा है। 10 kills remaining. Straight to the Dominating. to the brain. 5 kills remaining. To the brain. Straight to the to the 1 kill remaining. straight to the Problem solved. to the to the straight to the to the क्या हुआ? पास तेरे में अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में, जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, जुदा हो के भी। बोलो बोलो रक्षित बोलो। नहीं तुम सुरताल भिड़ा लो अपने पूरे अच्छे से। यार भाई प्रैक्टिस करता हूँ भाई, डेली गलती से आवाज सही हो जाएगी किसी दिन, 2 साल 3 साल 100 साल 100 साल। आर यू श्योर? क्योंकि तब तक तुम ही सही हो जाओगे तो आवाज तो सही होगी। Match found. मुझे सही तो वो कर सकती थी, चलो क्या करूं। बंदी वाले लड़के नहीं जान सकते ना यार ये चीज।
ये अरे मतलब भाभी वाले लड़के नहीं जान सकते ना ये चीज। अच्छा भाभी हो जैसे हम, वो तुम्हें पता नहीं, हाँ हाँ Warm पता up. नहीं तुम्हें पता नहीं, मुझसे ज्यादा इज्जत करने वाला इंसान कोई नहीं मिलेगा। सही बात है। वेरी काइंड टुवर्ड्स एवरी मैन। यो यो तारे यो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? चुप करना चूतिए। सॉरी Yo, Theo. Yo, bro. Oh, God, it's mine. Hello. अरे क्या है रे चूतिए, चुप हो जा। मजाक कर रहा हूँ अश्विन भाई, ठीक है। हाँ पता है, तभी तो बोल। अबे वाइपर बच्चा है क्या यहाँ किससे बोल? तो तेरे चेहरे पर ये गम नहीं जचता, तायज़ नहीं लगता, मुझे गम से तेरा रिश्ता, जो भी गम है ये तेरा, उन्हें तू मेरा पता थैंक यू फॉर दे। गेटिंग बेटेड। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला। आओ साथ में घुसेंगे, मैं पीछे देखूंगा तुम सामने, ठीक है? तुम सामने वाले को ही नहीं मार पाए। मार दिया हाँ नहीं यार। तारे गिन 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 आओ चले, आओ आओ आओ। दिन चलो दोनों लोग सामने। अरे यार, तो कुछ नहीं यहाँ। अरे ब्रीच को मारो ना भाई। Headshot. आ गई तुम। मुझे पता था। मैं गाना गाते गाते साथ किल कर रहा हूँ, ऑर्डर चेंज नहीं कर पा रहा। भाई टाइम बी साइड पे दो बंदे हैं। भाई क्या स्पॉन मिल रहे हैं हम लोग को। पीछे अंदर आ गए, पीछे अंदर आ गए। मुझे हील चाहिए। वाओ Next. So close. You move. वाओ वाओ वाओ। अबे वाइपर के पीछे से एक बंदा आ रहा है। जो है अलबेला वाला, इसकी दीवानी वो किसना है? ये वाइपर बहुत बड़ा वाला चमन है। चले One less.
down. मैं गाते गाते गारंटी कर रहा हूँ मेरे को फोन नहीं भाई मैं खाते खाते 16 किल कर गया हूँ अभी तक। सारी हील ले लो। हाँ सब हील ले लेना। अरे यार मुझ Here. Here. गाय टीपी करी और मुझे मार गई। अरे यार 130। भाई कौन सी पंगड़ा अंग्रेजी गीत दे I win again. I don't see. One less. You lose. I'll end this you. Enemy killed. Next. बहुत बढ़िया। Be faster. स्नाइपर को टैग लगाना है। हाँ ऊपर आ गया हुक्का एक। Match I point. win again. Reloading. Here. और पीछे पीछे पीछे। अरे यार ये ब्रीच भाई गंदा प्लेयर है बहुत। नाइस वन। कर मार दिया Not your best. दो अंदर है। नहीं हार गए यार तुम मर गए। ला 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 ये कॉम्पी नहीं खेल रहे भाई बस जस्ट लगा रहे हैं। अभी अभी तो शुरू किया है भाई। आज तो VCT का फाइनल है भाई। तू पूछ नहीं हाल फकीरा नहीं पूछ रहे। सुना सबसे सुंदर चेहरे सबसे काली रातें दे जाते हैं अब आ गई मुझको कल। अच्छा फिर से बताना जरा क्या सबसे सुंदर चेहरे। सबसे सुंदर चेहरे सबसे काली रातें दे जाते हैं अब आ गई है मुझको कल। Match found. अच्छा मेरी जिंदगी में चीजें काफी कहने को और सुनने वाले खड़े हैं बतेरे निकल के झांकना है यार मेरी खिड़की से बदला बदला सा है सुनना तभी चल सीना है स्विफ्ट प्ले खेलना है क्या। प्ले खेलना है स्विफ्ट प्ले अभी अभी और गाइस हेलो गुड इवनिंग कैसे हो सब। हाँ लैंडी भाई कैसा। अरे 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 फ्लोटिंग लैंडी आ गई।
ये स्पाइसी भाई अश्विन भाई को कैरी कर दो। अरे वो तो डेली करता हूँ भाई, थक गया हूँ भाई इसका बोझ उठा उठा के। अश्विन भाई की फीलिंग्स को कोई कैरी कर दो यार। लालू पुचका वाला ये कौन बोला है लेकिन अश्विन भाई को कैरी कर दो? विनेटर। हाँ अश्विन भाई को फीलिंग्स कैरी करने के लिए ज्यादा नहीं 6,000 रुपए लगेगा। अरे यार इतनी बड़ी बात के लिए खाली 6,000 रुपए मांग रहा हूँ। एक दिन में सही हो जाएगा, बताओ है मंजूर? हेलो नोटी हो रहा है क्या? नोटी नोटी हो रहा है क्या? अच्छा नोटी हो रहा है। अच्छा। नोटी वनेटर भाई तन्ने बताए हम नोटी हो रहे हो तुम। गाइस कंटेंट के देवता अश्विन भाई का स्वागत किया जाए। क्या बात है, क्या बात है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। क्या बात है। कंटेंट के ऊपर हाँ कंटेंट के ऊपर अश्विन भाई को बैन किया जाएगा। कंटेंट के ऊपर हगने वाले अश्विन भाई का स्वागत है। ओके भाई ये रेना पागल पागल हो गया है क्या? पागल तो उसकी क्या? भाई ए भाई केंद्रिक कुमार क्या हाल है? अरे लेंडी भाई कैसे हो तुम? लेंडी भाई इसके मुंह में लेंडी दे दो, मांग रहा है। आ जाओ दिला दूंगा। दिला दूंगा नाइस। भाई साहब लेकिन मुझे जमीन पे चाहिए, फ्लोटिंग ज्यादा हो गया। guys you know I love you all. I love you Yeru. भाई ये मीठा हो गया। अरे वो साले Spike down mid. अरे भाग गया भाग गया भाग गया। Spike is here. थोड़ा दौड़ा के मारेंगे। अरे बेटा ये हमारे स्पॉन आ गए क्या? Enemy spotted me. Ready for me. They found my wire. One enemy remaining. Flawless. You guys are so much better इसने than ये weapon रेस material. समझ रहा था कि मैं नूबड़ा हूँ। अलग वन टैप दिया। नहीं ऐसे मुझे- नेट वेट फेंक रहा था। मुझे रेना पुश कर रही थी पता है मिड पे, गोश्त लेके एक चाटा, क्लासिक का एक चाटा। कॉम्पी खेलने वाला कोई नहीं, कॉम्पी खेलने वाला कोई। रैंक बताना भाई। हाँ रैंक हाँ क्या थी? वैसे तो असाइनमेंट है अभी डायमंड। डायमंड पे हाँ भाई तब खेल लेंगे। चलो आओ आओ यार आ जाओ आ जाओ। Trick shots. नाइस वन। को लग रहा है अपने स्मॉल से ही आ गई। मार्केट साइड है अभी दरवाजे पे। Satchel out. One enemy remaining. Spike Here. down B. Spike is B. अबे ओमन डायमंड है। Good job. नहीं तो तू ऐसे चिल्लाया था जैसे कोई पीछे दे रहा है। गन चाहिए किसी को? गन तो है दो पड़ी। नहीं हेनरिक कुमार डिस्कनेक्टेड। तुमने इतना जोर की डाला कि वो भाग गया। नाइस। Happy hunting, Omen. नहीं जीतेंगे वो, नहीं जीतेंगे। Still in sight. तो राउंड कूद। Bomb buddy out. अंदर 500 बंदे आ गए अचानक। Fire!
Last player standing. गलत मार दिया इस नियॉन को। चीकी चीकी। Wanna cheeky wiki wiki. Last round before the switch. करे cheeky wiki मेरा नाम होली है करे cheeky wiki. देखना मन है क्या ऑपरेटर लेना था मुझे। जो भी है सब बर्बाद करे अल्फाज मेरे। ऐसे अल्फाज होंगे तो बर्बाद ही करेंगे। अल्फाज मेरे। ओ या अबे भाई ये क्या हो गया इसके? Satchel out. ये स्पाइक रश में जज खेल रहा है भाई। व्हाट अ एल मैन। ओमन एक मिनट से पुश किया है शायद नियॉन। हाँ हाँ Hi, I'm pissed. Spike planted. Last player standing. यार ओमन भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुमने आईडी खरीदी है? आईडी नहीं खरीदी भाई मैंने। Switching अभी sides. खेलता नहीं अभी गेम। अच्छा पहले का खेला हुआ है। हाँ जी मैं भी सभी है शीशे। पहले बहुत खेलता था अभी नहीं। अभी जॉब लग गया तो टाइम ही नहीं मिलता। रात को 9 बजे आता हूँ सीधा। ओ भाई सैड लाइफ सैड लाइफ। पहले कोई नहीं होता है। अभी क्या अभी मैं कॉम्प भी नहीं खेलता। मेरा तो रैंक देखा है ना बस कॉम्प मेरी खेलता। अच्छा ऐसे टाइम कॉम्प पास। खेल के बंद से करता हूँ। पूछे Yeah. Okay. ये हो ये आदत नहीं है। माय फ्रेंड सही है भाई सही है। हाउ आर यू ब्रो Yeru, are you let's set a bind map because we come together. Satchel out. ये क्या क्लियर किया था तुमने अश्विन भाई? ये कौन सा क्लियर था भाई? Last player standing. All day, all night, मुझे याद आता है तेरी हम याद से। जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब मिल पाएगा मुझे? मैं खेलूंगा ना स्पाइक। तुमने ये चीज क्लियर नहीं की थी। नहीं मैंने कहा नाइफ करूंगा किसे। Gear up. Stay safe. कितने मार जाके तेरे वास्ते सोनिए। All day, all night, मुझे याद आता है तेरी। तुमने देखा अगला अपडेट जो आ रहा है? साथ में लो बस। अपने एक बंदा आता है। यस सर ओके। हाँ भाई साथ में। जीतना है यार मजे। मैं तो मजे कर रहा हूँ। जीतने क्या जब कोई हार रहा होता है तो यही बोलता है भाई। नहीं all night Satchel out. Cutting their vision. अरे बेंच Time to jump. वाली लौंडी है। रक्षित भाई ओडी निकाल दी। Spike down B. रक्षित ओमन ने आईडी खरीदी है। मुझे भी लग रहा है। हाँ रक्षित ओमन को मत लेना। ओमन का एम नहीं है। Match point. Their lives are so meaningless. Might as well give. अबे एक तो होता है जिससे मैं मजाक कर रहा हूँ ना। मजाक में जाके मर जाना सीधा मुंह पे। तुम्हें पार्टी में बुलाया? ना जा रहा मैं भैया। I need to blow something up. रहने दो अबे छोड़ो। ये लास्ट है इसके बाद निकलते Cutting हैं। through. हाँ My ult ready. Cutting their vision. Enemy spotted A. भाई यार कितना इरिटेटिंग है भाई यार। कितना इरिटेटिंग है भाई ऐसे छक्कों के साथ खेलना भाई। वे क्या छक्के हैं सीरियसली। Plant a भाई spike. क्या रक्षित चौटा मारा है। रेना को साली ओडिन चला रही थी। यो
मेन 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 Fake मेन teleport. मेन अच्छा भाई तो नहीं चलाना। Okay, they tried. Now it's our turn. चलो मजाक सेट के अभी जीतते हैं। अब रुको रुको बहुत हो गया साले का, ये जज वाले को बताते हैं। रक्षित आओ, रक्षित 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 एक काम करो, तुम इधर आओ मेरे साथ, इधर आओ। क्या हुआ था वो रक्षित यहाँ पे आओ, यहाँ से जरा मेरे को यहाँ नेट देना है, यहाँ नेट कर पाओगे तुम? कहाँ? या तो कर दूंगा बूम बॉट भाई। चला दो, या तो कुछ ऐसा कर दो इस बंदे का ध्यान भटक जाए। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ से पुश करता हूँ। Grenade! Fire in the hole! Satchel out. अरे भाई कितना नूबड़ा, कितना छक्का है भी। जा 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 जा। Satchel out. बैक से आए, बैक से। Spike down A. Next, I have the spike. My ear got them. Out of charges. लेफ्ट में जा जा, लेफ्ट में जा जा, मेन पे लेफ्ट पे जा बैक जा। से आ रहे थे वो। Last player standing. यूरू कहाँ चला गया? अच्छा ये क्या होता है? फर्स्ट 5 टू विन होता है ना मतलब ये? यहाँ पे ही हाँ है। हाँ। चलो चलो खत्म है ना, चलो ठीक है। Dead. My ult's ready. चेंज लॉक हो गया। खून में तेरे मिट्टी मिट्टी Time to में jump. तेरा खून, ऊपर I'll वाला handle नीचे this. धरती बीच में तेरा खून। I got the spike. रात को आसमां चीरे, रात समुंदर पीरे। I'm back. यूरू यार ब्यूटी है तू तो Yeah. यार। Yeah. 30 seconds left. टाइम वेस्ट करना। यार डाल Spike बेस में planted. बोला करो, इसकी याद आ जाती है। Yeah. इसकी Stay quiet. भाई स्टे क्वाइट बोल रहा जाओ भाई। Fake teleport. तिनका जरा जरा है रोशनी। Defenders win. बादल में चलना में से लग जा। चल बे फ्लोटिंग लेंडी आईडी खरीद के आया है। अरे आज ये आए हैं, कौन है ये? अभी देखो। तारे गिन 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 के रात रात को। डिमोनिक एक्सटी ये कौन है? अपना यूरू रिक्वेस्ट भेजे सर। यो फ्लोटिंग लेंडी की भी आ गई, नहीं ले रहा भाई। नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए। देखो हम मजाक में खेल रहे थे, असली में ऐसे कभी करेंगे नहीं, उल्टी सीधी हरकतें। वो पता चल रहा था आईडी खरीदी हुई है, जैसे मैंने उसका स्प्रे देखा तुरंत बोल दिया था ना मैंने, भाई तुमने आईडी खरीदी है क्या? हेलो बीचेस। अरे बाप रे बाप, आज कौन दर्शन दे रहा है भैया, बाप रे बाप। ये कहाँ, आज सूरज कहीं दूसरी तरफ से निकला था क्या? नहीं निकला, उधर ही जरा आ गया थोड़ा। अभी तो बस ये स्विफ्ट प्ले 1-2 लगा लो, उसके बाद जा ही रहा हूँ। काहे? वरुण भाई, वरुण भाई। वरुण नहीं है, अंशुल है। अरे रुको, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। अरे भाई गलती लगाओ से। अरे स्विफ्ट प्ले टीडीएम लगाओ, कुछ लगाओ। अंशुल भाई की आवाज एकदम वरुण भाई की जैसे क्यों लग गई बीच में? तुम्हारे कान खराब है। दे दो, तुम लोग बताओ। लग रहा है वरुण भाई की याद आ रही है। Match found. कहाँ पीछे लेना है क्या? खेल रहे हो आज? क्या चला दिया इसने साले ने? कॉम्पी चलाया क्या तुमने? नहीं कॉम्पी नहीं खेल। ना स्विफ्ट प्ले। मैं डॉज कर रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं खेलना स्विफ्ट प्ले। अरे अंशुल को खेलना है। मुझे कॉम्पी खेलेगा। कॉम्पी के यार अभी मैं थोड़ा ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा, तो 15-20 मिनट ही होना, तो इसलिए थोड़ा बस होते 11 बजे मैं और वरुण आएंगे आज, तो खेल लेना फिर। ओके, यस यस।
हेलो, अरे एक सेकंड, उसको बंद करना पड़ेगा पहले। हेलो क्यूटीज, कैसे हो क्यूटीज? अरे 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 बढ़िया एनर्जी है भाई। क्यूटीज अबे तेरे खड़ा बाल है क्या? कियो जनवन कैसा तू? अरे ओ कुड़ी के निगाह मारदा निगाह। अरे प्लेयर 5 बड़ी एनर्जी है भाई, कसम बता रहा हूँ मैं। हो जो दिन भर के बाद इतना खुश मैं रहने लग गया ना, अगर जिंदगी सफल हो जाएगी मेरी, मैं सही बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ देखो, ऐसा है, इसका YouTube ग्रो नहीं कर रहा, इसे खुद ग्रो अच्छा। करना नहीं आ रहा। अब मैं समझ जाओ। सुनो अश्विन भाई, क्या भाई? पहली बात तो ये भाई ये सुनो। आज का, एक सेकंड, पहली बात तो ये जो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, ठीक है, समझे? अच्छा अच्छा, एक सेकंड अंशुल भाई, ये आजकल के नल्ले चपरी लड़के साले 1700 की स्ट्रीम पे अपनी डोनेशन दिखाते ताकि कोटी बंगले लड़कियों को ले, ये भी कोटी बंगले वाले। धन्यवाद। नहीं मजा आई। वो उसके मुंह से ही अच्छा लगता है, तुम्हारे मुंह से थोड़ा सा गोबर सा लगा। अरे तो तुम्हारी स्ट्रीम कौन सी अच्छी है साले? क्या रहते हो? गोबर ही दिखेगा। आज एक शॉट डालूंगा, उसको देखना, उसके बाद थोड़ी देर कोने में घर में बैठ के रोना तो सोचना कि मैं कब इतना अच्छा खेल पाऊंगा अपनी जिंदगी में, ठीक है? दरबदर मिलता नहीं तेरा निशान। नहीं मिलेगा। थार में मजा आ रही है कि नहीं? अरे आनंदमय जिंदगी है भाई। कहाँ? तुम तो लखनऊ में ही हो ना? हाँ मैं तो लखनऊ में। अरे आओ एक दिन मिल जाओ भैया, देवेश भी आए हैं। हाँ रात में आते इधर बीच में, एक तुम देखता हूँ। हाँ आओ। आयो फिनिक्स, अगर तुम मिल जाओ। भाई इस लौंडे के खड़ा बाल है, इससे थोड़ा दूर रहना। जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ। अरे बाप रे। अबे इसको थ्रीसम का शौक है, जाओ भाई केओ और फिनिक्स जाओ भाई, इसको थ्रीसम का शौक है। मिलता नहीं तेरा निशान, होके जुदा कब मैं जिया, तेरी यादों में मैं रहता हूँ। अरे वैलोरेंट नहीं हो गया है, म्यूजिकल हो गया। सारे गामा पा है ना ये। कैसे गया? Spike down A. Last player standing. Grenade! सब पीछे जा रहे हैं, सब पीछे जा रहे हैं, बहुत तेजी। क्या हुआ? Okay. भाई मैं देखो, ये तो नहीं सहता, मैं नहीं सहता भाई। मेरी टीममेट के लिए कोई और तो कॉल दे तो मैं नहीं सहता। खड़ा बाल है तुम्हारे, पता चल रहा है साफ साफ। तो बैठा दो, तुम बैठाओगे नहीं क्या? क्या समझ में नहीं आया। खड़ा बाल बैठाओगे नहीं क्या? खड़ा बाल बैठाया नहीं जाता है, उस पे बैठा जाता है तुम्हारी तरह। गया कोई तो गया। कोई नहीं गया। अरे मार। अरे डिंग दे ब्रिज डिंग दे। Spike dropped. Bomb bug out. Satchel out. Euro backside 78. On A. Listening. Look over there. Euro low है क्या? Once a flashbang.
One enemy remaining. Reloading. 84 मेन पे Careful now. All enemies accounted for. डेडलॉक खेल रहे हो तुम? हाँ और क्या? We back in it now. मैं तेरा हीरो सुन लो जरा अमीरो बंदा मैं रब दा मैं फ्रेंड सबका देखे दुनिया में कोने हम दोनों ही सोरे कुड़ियों में अपने चर्चे अश्विन भाई बंदी है। गांड में देती है डंडे। अरे बाप रे। साले बातें ही ऐसे कर रहे हो लगातार। अब आगे जाओ ब्लाइंड कर दो। अरे निकलो ना मेरे साथ बाहर। एक रेजर क्या सीन फिनिक्स प्लांट होगा नहीं? नाइस वन। Last player standing. कुछ ज्यादा नहीं कर देते हो तुम? कभी कभी थोड़ा सा ओवर नहीं हो जाता है? खड़ा बाल है ना। अंशुल भाई बहुत दिनों बाद खेल रहे हैं। अभी आ Last जाएंगे round in the half. अच्छा बताओ जीतना है तो मैं वैसे खेलता हूँ ना, मैं तो मजे कर रहा हूँ। Spotify पे 100 पे गाना चल रहा है। मजे करो भाई मजे करो। Phoenix क्यों ब्रदर ऑफ भाई देना Phoenix hello brother, Make them how are dance. you? Still in sight. There. Reloading. Bomb buddy out. देर कर। बैक साइड चेक। ये सीढ़ी पे गए अभी, रोप पे थे, बढ़िया। अरे क्या बात है। Out of charges. एक फ्लैंक Grenade. फ्लैंक एंड सिटी। अरे इसके पास अल्ट है। Who's next? ऑपरेटर है, फ्लैंक पे ऑपरेटर है भी। अबे क्या है? Last player standing. Hold them to their grave. Nothing there. टेंशन क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मैं फ्लैंक पे ऑपरेटर से। मैं भी। हाँ। Switching sides. Catch your breath. Not that I need. अब अभी 9:30 बजा है, 12:30 बजे से मैच है। अरे बाप रे बाप। क्या करना है मैच से? भी देखना है क्या? VCT देखेंगे भाई बैठ के। सुबह ही देखूंगा मैं जो भी हो। मैं तो तारिक की देखता था लेकिन आज खुद की चलाऊंगा। हाँ मैं वही देखता हूँ। मारेंगे। He won't fool me. भाग यहाँ से। Grenade. कहाँ हो भैया रेना? मार गया, तुम किसी काम के हो? हाँ तुम काम के हो। मर गया ये। फोनिक्स मर गया। Sorry, bro. मेरे अंदर साइड Raise on side. ये यहाँ क्या कर रहा है? रेज़ ऑन साइड फिनिक्स। One enemy remaining. नहीं लास्ट में। लवली भाई दोनों हमारे टॉप रहे थे। तो अरे केओ ने क्या करा, केओ ने सोवो का पता लगा दी सोवो मिनट पे, लेकिन फिनिक्स से पिक करें, फिनिक्स पिक करेंगे। हाँ फिनिक्स पिक कर लिया।
अब फिनिक्स जाएंगे, फिनिक्स मरने जा रहे हैं, फिनिक्स से मैं मरूंगा उसको Last player standing. मर गए यहाँ पे। अब केओ की बारी की, केओ भी मरने जाएंगे क्या? केओ ने नहीं ऐसा पी जा रहा है। केओ ने पता लगा ले कि वो बीजा है, लेकिन मैंने केओ कह रहा है अरे वाह क्यों भाई, बड़ा एम। केओ कह रहा है कि मैं बॉल करूंगा और यहाँ पे हो गया केओ। देखो दरवाजा टूट गया, केओ जा रहे भी क्या वो निकाल पाएंगे? ये निकाल पाएंगे तो देखें। केओ ने अब केओ ऊपर से पीछे स्पॉन्सर जाने लगे। Calm down, brother. Calm down. Relax. 30 seconds left. नाइस वन। You're going faster than a fucking petrol car in the highway, chief, bro. Calm down. Fucking head. Bro, you Indian? I don't think you Indian, man. Oh, Spike shit, I'm no planted. Indian, mate. Shutting them down. Might be tree. वहीं का प्लांट ही है। He's in Kabi, I think. A Kabi. Nice try, KO. Nice try. No problem. Match point. Yo, bro, so like you are from which country or something? Like you from India or where? Luxembourg. Oh, nice. कहाँ से बोल रहा Are you like? कोई है so okay, like how's your experience at Mumbai, sir? Racist, you can say. Maybe. Oh no. Yeah, I'm being. कहाँ Okay. I love you, Kyo. I'm not racist. Okay. Sure. कहाँ से है ये? Sincerely. BB. Blind हो. कुछ कर ही नहीं पाएंगे। भाई मैं दो बार blind हूँ. They're going C. Rotate. On you, KO. Nice kill. Easy. Okay. Nice one. Get it. There. One enemy remaining. Satchel out. Flawless. Reloading. You cool. Reloading. Reload him. Okay, Wiz. Your pin cells, my fragments. Maximum damage. You one skin? हाँ उसके पास उसके नहीं। Nah, I have a champion, but it's fine. Oh, Champions 2021. or 23? He showed racism here, ना? No, 21. Please give me. कहाँ से? क्या बोले? ये कहाँ से था ये तो मत पूछो। Oh, I love this gun, bro. Seriously, man. Good time. When it came, I couldn't buy it. It came in him. अरे यार. And he's my friend and he's calling me always. Okay. Nice shot. All three, all there. Coming. KO coming to help you, man. अबे तुम्हारे पीछे यूरू है। On your right, bro. Get it. There. Someone. There. Go on side. Spike down. C. भाई यार। One enemy remaining. Okay, one is B. One. Barrier deployed. Might go A. He might go A or. हाँ ये पे क्रॉप है। डेडलॉक का अल्ट है ना प्लांट के लिए। बाय। सी है। मैं No surprises. हाँ ये ए TP डे। कहाँ? ट्रैप एक्टिवेट हो ना। इतनी गहरी साउंड कहाँ 30 से आ रही seconds है? left. क्लोन बनना चाह रहा था। He was trying to be a clone. VCT needs me. I can't be away for long. Let's see. Bro, Araxis. Who has Araxis? Can someone give me Araxis? Me too. It's not that all of them are bad. Some of them are, but overall it's actually fine. Not gonna lie. Who's next? That's nice.
Some of them are too toxic, man. I know. I feel you. I feel you. Bro, Raze is one of the toxic players I've seen ever in my life. Bro, I've never been toxic. He's a fucking idiot. One enemy remaining. Spike down B. Bomb buddy. I told you I would not die. Sudden death. Sawyer cheating. This world hurt me. अच्छा तेरी क्या Bro, KO, what is your rank? Plastic 2, bro. Bro, tell me the truth, man. I'm serious. I'm plastic. I like plastic. He takes plastic. I am plastic. He takes plastic. Too deep. I give you plastic. I give you plastic rubber. Okay, you bro. He's I've thrown a sheet of metal now and look at me. Phoenix, I love you, bro. You are my. Bro, tell me friend. your rank, bro. Tell me your rank. Phoenix, this fireball, I hate What? fireballs. I like ice. Silver. Okay. Grenade. This Reina is also silver. No problem. अच्छा. Yes, right. They are A. Priest है coming up. Yeah, come on. No. They are coming. Got one. Here was B. Oh. No escape. Go get him. Top here. Top लग पीछे गया. पीछे. Good trade. Nice try. Spike planted. Grenade. Reloading. One ceiling here. Last player standing. One enemy remaining. Last ceiling. Here Last comes ceiling. the party. Oh shit! Bro, yes. I know. Dream. So actually, KO, his rank is like real rank is diamond 1. Grenade. Hey, you don't die, bro. Come down. अरे भाई डिफ्यूज कर दे. Impressive wiring. Impressive wiring. Clutch. GG guys. Bye bro. Defenders win. Bye Phoenix. Bye Phoenix. What's the number? There we go. Bye. Nice work, Bye. everyone. सैचल देखा था तुम्हारे भाई का. सैचल देखा था. अरे एकदम लंडे एकदम बेकार छी. लगाओ कॉम्पी लगाओ इसी बात पे नहीं जाना है मुझे कहीं. अरे यार गलत है यार. क्या कह रहे हो? गलत कॉल दे दी इसने, मार डाल. अरे यार कॉल गलत दे दी भाई. सीलिंग बता रही नहीं दिया था साले को. भाई अरे यार अबे 1 HP था. अगर एक भी गोली अगल बगल से भी निकल जाती तो मैं मर जाता भाई. सैतल बहुत बढ़िया. दोनों साइकिल बहुत अच्छे थे. सैतल बहुत गुड. भाई जिंदगी में पहली बार तो सही सैचल हुए मेरे हिसाब से. नाइस. मोहा दो कर आता हूँ. जितना बोला है ना मेरा सर दर्द हो. नहीं सीरियसली. दर्द तो कुछ और होना चाहिए था. नहीं एक्चुअली मेरा सर दर्द हो रहा है. मैं पहले पानी पी कर आता हूँ. मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया. थोड़ा पानी लगा भी लेना. क्या आप क्या ले रहे हो एजेंट में? पिक करो तुम बताओ भाई. अब तो एक कंट्रोलर और इनिशिएटर की जगह बची मैं है. एक्चुअली सोच रहा हूँ ना स्प्लिट में ना. आप बताओ मैं सेज लूँ या रेना लूँ बताओ. भाई रेना ऑलरेडी एक बंदा ले रहा है तो तुम देख लो. सेज नहीं ले सकते. दो सेंटिनल हो गए. अरे नहीं सेज नहीं. 3 सेंटिनल. देखो स्मोक्स आता नहीं मेरे को. मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर उसको मैं खेल लूंगा. देखो रक्षित का काम करो. तुम स्काई खेलो. तुम सेज पे हो. हां ठीक है. ठीक है. किसको बोलना है म्यूटेड? सबको. अच्छा है भाई. मैं सोच रहा हूँ रेना रक्षित ये हराम बेकार ना कर दे मैच. अभी वो तुमसे ज्यादा फिर और ज्यादा थ्रो करेगा. अभी वो कम थ्रो करेगा अगर करना भी होगा तो. एक्चुअली नहीं ठीक है. राइट. नहीं सही कह रहे हो. एक्चुअली सही कह रहे हो. चलो ठीक है. हमारे पास सेज और स्काई है ना. अच्छा हील का कॉम्बिनेशन अच्छा अपने पास है ना.
हाँ सेंटिनल भी ठीक है कि डेडलॉक है, एक साइड के लिए एक साइड के लिए सेज है। ठीक है चलो, मैं बस पानी पी के आता हूँ। पियाओ पियाओ, मेरा पी लो मन हो तो। क्या ट्राई हार्ड टीम आई है, बाप रे बाप, सामने देखो टीम। अच्छा भाई फ्लैशेस बहुत हैं, स्काई रेना फिनिक्स, वही तो मैं बता रहा एस्ट्रा हूँ, खेल रहा है भाई, बाप रे। बहुत खतरनाक ट्राई हार्ड टीम आई है भाई। Another healer. चलो। Good. Now it's someone else's turn to answer requests. मैं बीमेन संभालता हूँ, ये देख लो। सबके सब छक्के एफ के बैठे हैं क्या? रेना चलो है तो रेना जल्दी हमारे इधर बंदे आ जाए बस। बी पे स्मोक्स। स्टार बी मैन। Hawk out. Blinded. बीमेन मल्टीपल। Okay. Get watchman. बीमेन। वापस ले स्मोक्स। आई थिंक रोटेटेड, कोई दिख नहीं रहा है। मिड केयर नाइस वन। Got to. Healing you. एक और है मिड। One enemy remaining. Nice, good trade. भाई रक्षित Hawk out. Blinded. one seaver. Rena, it's yours. उससे थोड़ा क्लोजर ऊपर रखना। Good round guys. अरे इससे पिछले बोला था क्लोजर ऊपर रखना। सही था। तुमने मेरा फ्लैश नहीं देखा क्या? ब्लाइंडेड। लेकिन पहला वाला क्लासिक बहुत गंदी चलाई थी मैंने। बी में साउंड। Hawk out. Blinded. मिड केयर, मिड एम इन केयर Barrier deployed. करने Hey, Spike take down it. B. Over there. Rena, they're coming back. Gun here. दे रोटेटिंग मिड। अरे रे ना नहीं। Spike down mid. नाइस वन। तुम रुक के पिक लेना, मैं ये जा रहा हूँ। Phoenix was आई एम गोइंग like B mid. CT. हेवन केयर हो सकते हैं। ओके हेवन केयर करना आराम से वहां से। मिड वॉक कर सकते डेडलॉक तेरे पे। या मिड वॉक करके डेडलॉक साउंड आ रही है क्या? डेडलॉक बी कहाँ आ रहे हैं, कोई कॉल है? बी हेवन इधर है, ना बी हेवन है। My Hey, ult's not 30 ready. seconds left. Heal up, squad. बी चेक करें। Time to hunt. One enemy remaining. Spike planted. नाइस वन। अरे यार ये बी हेवन किसकी आवाज आई थी फिर? ये बोल तो रहा हूँ मैं ये रक्षित के माइक लीक कर रहे क्या? नहीं भाई, I'll take out their sky. अरे ईयरफोन It's उल्टा something पहना है I भाई। Save it. अरे यार वही मैं कहूँ, मैं ये बार बार बी बोल रहा है। वही तो मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे पे फ्लैश किया जा रहा है। वही तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं तुम्हारे पीछे था, इसने बी हेवन बोल दिया, मैं डेडलॉक की मदद करने चला गया। अरे भाई एमएन केयर ऑपोजिट क्यों आ रही है हर एक साउंड?
अब ठीक पहन लिया भाई। वो क्या है? पे आई एम रोटेटिंग सेज होल्ड सेकंड ड्रॉप। Time to hunt. हां फिनिक्स लेफ्ट एकदम कोने में बैठा हुआ है। My ultimate. Heal up, squad. अरे मर गया। गुड रेड पीछे हो। मुझे हील चाहिए। रक्षित 1 सेकंड रुकना जरा। 1 सेकंड कहाँ से रुक जाऊँ? 9 HP हूँ। रुक जाओ, गेम बना सकता तो ठीक है, रुक जाओ। हाँ Can you wait guys? Can you wait? I'm on flank. Fuck. Here is a lamb bot and there is like. ए पीक रेना Hawk out. Blinded. मार ना रेना। Come on there. One there, Asra there. Kejo on side, Asra up. Planting. Go push side. Spike planted. Asra is heaven. He's stuck heaven. There. तू push कर अश्विन साइड push कर। Last player standing. हाँ ये रेना बहुत गंदा खेलता है भाई। जी नहीं मिल रही थी, मैं अब इतना अंदर कॉन्फिडेंट हो गया, Even with मेरे को numbers. पता ही नहीं लग रहा था कि कौन कहाँ है। Reloading. Remember that. भाई कॉल्स नहीं है टीम के, हम तीनों लोग ही बात कर रहे हैं खाली। हाँ यार क्या अभी पता है, यही दिक्कत है। Help a girl out, would ya? मेरी गेम सही थी, मैं फ्लैग अबे मैंने वहाँ पता है मैंने फ्लैश मारा ना, 2 बंदे फ्लैश हुए थे मेरे सामने। मुझे दिखा था। अरे यार पीक ही नहीं किया किसी ने। बीमेन क्लियर एक यार मिड है। ठीक है मैं प्लान कर रहा हूँ। प्लान करने कोई सेंस नहीं, मिड कह रहा हूँ, स्मोक्स नहीं है। मिड से निकल गया एक यार। नहीं अबे यार रिसीवर में लेट चेक कर लिया भाई। इजी बॉल जी, ठीक है। तुम्हारे पास गन क्यों नहीं है? साउंड इवन आई नहीं है ना यार। हेवन मल्टीपल हेवन। Need help, Ren. You want to fight it? Throwing net. पैरानोया। Reloading. है क्या अपने पास? Reloading. One enemy नाइस remaining. वन। अंडर हेवन राइट साइड अंडर हेवन। अश्विन भाई नाइस वन। अरे बाप रे बाप। There's no need for the enemy to suffer. Kill them fast. Reloading. क्या हो गया अश्विन भाई? सदमा तो नहीं लग गया? देखा तो है। Don't give them ground. वीमेन मल्टीपल एक साउंड। Time to hunt. 3 वीमेन Hawk out. Blinded. Finish. Last player standing. भाई मिड से मर Spike गए सब planted. लोग। यार ऊपर हेवन वेट हो गया उससे। Nice try. I feel something over there. चार Like नहीं us, पे but पुश करेंगे reloading सब। different. अगर अपनी डिफेंडिंग में हम निकाल ले गए ना, निकालना ही पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन नहीं है। अटैकिंग थोड़ी इजी हो सकती है। थोड़ा लोग होल्ड कर ले। सेव कर लो रे ना। गाइस कैन वी सेव है ना? Hawk out.
Joke's over. You're dead. Ole. Enemy spotted A. You should run. 2 वर्ड तो उन्होंने वेस्ट कर दिया हमारे स्टेट में। मिड पे आस्त्रा लर्क, Enemy spotted A. मिड आस्त्रा लर्क, वेंट से थ्रू आई। Spike Finish it. planted. Get low. Last player standing. नाइस लगा। आस्त्रा लड़कर है ना, अब मारता हूँ लड़कर को मैं। their life, not yours. दूसरा पे नुकसान। Here. भाई इसको यहाँ लगाया कर फाइट लेने में आसान होगा अपने लिए। Hawk out. Blinded. मल्टीपल भी। Bye, boys. Gone. किल। Nothing there. चला फिर। V7 छोड़ दे, V7 को देख ले। तभी के बाहर से रोटेट करेंगे भैया, साइड क्यों छोड़ देते हो इतनी जल्दी? मर गया मिड पे। Sensor destroyed. चमन, दो लोग वहीं रहो। मेल आ सकते हैं, मेलूम आ सकते हैं। नहीं आएंगे ऐसा 90 स्मोक्स हटा लिए। वेंट स्केयर अश्विन भाई, अंशुल भाई। Caution here. One's watching मेल here. ध्यान रखना। मिड को ही देखो यार। मिड से जाएंगे, देखो इधर आएंगे, मिड से देख लेंगे। वेट कर। अब ए में तो वेंट से भी कोई ना कोई आएगा ही। Spike down A. आस्त्रा लड़कर है केयरफुल। Time to hunt. Got him. One enemy remaining. गुड किल। इजी कट। इजी गाइस फॉर 10 seconds left. Hawk out. Reloading. I outlet ready. नाइस वन। You were a boulder. I am a mountain. Prepare yourselves. We fight once again. I can ult only for info. नहीं अभी नहीं, अगर साउंड नहीं आती तो करना, ठीक है? वरना ऐसा मत करना। साउंड जब है तो पास ड्रॉप दे दो उसको, एक फुल फील्ड लेके जरा रेना को। किसी और ने दे दिया। I got yous, okay? बी में अभी स्मोक नहीं आ पाएगा, ठीक है? कोई नहीं। हां ए बस वो सुन दे रहे ना शिट। नीमन क्लियर। अरे यार रेना क्यों फर्स्ट? कोई ना इजी बोल। जाओ तुम निकलो। Time to hunt. बैक साइड चेक कर दिया उसने। ए साइड। जाओ। Spike planted. स्मोक्स डाउन है उनके। I've got your trail. Your duty is not. हील से झील है। ठीक है। Hawk out. Many. Last player अरे standing. यार। 1 सीटी दो साइड। एक्स्ट्रा। They think they know pain. They can't begin to comprehend it. There. मैं ही खेलता हूँ। बी में नॉक लगा रहा हूं। हां तुम ये खेलो, बी में नॉक लगा। और रेना को थोड़ा इन्फो दो भाई, वो तो ऐसे ही मैं उसको बोला लेकिन फिर भी बहुत पैसे खेल रहे थे ना यार वो। रेना मेन से खेल ले। मैं कुत्ता करता हूँ तेरे लिए। बस मेरे पे चढ़ने मत दियो कुत्ते पे इनको।
ए में नो साउंड नाइस पिक असरा लड़का है थोड़ा केयरफुल रहना रहना वॉच मिड डोंट लीव आई एम वाचिंग देख अश्विन पिक नहीं एक है मिड पे एक है Here. Good attack. बट आई 80 आसरा 40 रहना बहुत लो No escape. So you can have my vandal. वैंडल पड़ी है नीचे पीछे आपके पीछे गोट पीछे वैंडल है अरे पीछे वैंडल पड़ी इधर लेफ्ट साइड को सीवर से आ सकता है सुनो उसका इंफो मुझे देना ठीक है हाँ मैं दे रहा हूँ उसको ये देख कहाँ आ रहा है मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है खाएगा ये पता है बी हेवन पे चढ़ के मार देंगे इसे लड़के लो है वैसे दोनों बहुत पर मैंने केजे को 30 seconds left. रेना ने भी केजे को मारा है कमाल है कैसे बच गया मेरे में 80 सीसी नहीं रुक जा Watch them run. One enemy remaining. नाइस शॉट है 10 seconds left. Spike कुछ down A. नाइस वन साइड कम ए साइड गुड मेन नो टाइम Stealing sight. ऑन साइट They're just bad. अंशुल भाई नाइस वन And I need a recharge. साल्ट की टाइमिंग बहुत गलत थी भाई बहुत ज्यादा अरे एक्चुअली पता हुआ क्या अल्ट के बाद रीपोजीशनिंग बहुत गलत हो गई हाँ वो थोड़ा सा एम मेरे हिल गया वरना तुम्हारा एम सही था ना वही तो बात है कर रहे थे एकदम वो भाग के यहाँ तक आ गए केयर बी मेन Cutting their vision. Time to hunt. बीमेन केयर You are divided. I can ult. You should run. Hawk out. खत्म होने वाले इसके जी डोंट फाइट इट हम Hawk out. Blinded. Last player standing. भाई Spike काउंटर planted. ब्लाइंड दे देता है पता नहीं कैसे रेना भाई एंटी उसके अल्ट को नहीं पुश Did you करना see था one ना of फिर my क्या करें creatures टेक is किल losing, alright? अरे यार What they वो do साला eventually. कोई ना ठीक है सेव पुश होता है भाई मेरे पास तो अरे भाई मेरे पास फिनिक्स बिल्कुल अल्ट करके पैसा साइड नहीं पुश है। करेगा तो देख लो जैसा खेलना मेरे पास तो एक फ्लैश यूज करने के अलावा एक रुपया ही नहीं है वरना मेरा अगला बाय नहीं आएगा नाइस Reloading. Hawk out. ए Reloading. ए Joke's over. You're dead. ठीक है Cutting their vision. पूरा सिटी से आना पड़ेगा ए Spike down A. नाइस वन मुझे किधर से गोली पड़ रही है अरे अश्विन भाई आराम से एम कर सकते थे तुम यार थोड़ा क्या करें उधर मेन देख हेवन नीचे कूदा नीचे साइड हेवन और सिटी मुझे साइड से आ रहे राइट हैं हाँ इधर से आ रहा है ग्रिडलॉक तेरे पे डेडलॉक तेरे पे Cover going out. 30 seconds left. Last player standing. परनो है तुम्हारे पास दोनों के लिए एक सीटी पे ऑफ कर रहे हो और एक उस पे
125 क्या कर रहा हूँ यार। अश्विन भाई वहां तुम्हारी एक पिक बताओ Last कितनी round जरूरी before हो the जाती है। switch. We cannot keep our goods after this. Spend all. Reloading. देखो अटैकिंग में रेना क्या करता है अपना भाई। ठीक है ट्राई गाइस जस्ट प्ले नो वन है। ये होल्ड करो। इतना ज्यादा प्रेजेंस दिखा देते हैं ना कि वो बंदों ये की होल्ड जीव करो, फट ये जाती है। नहीं मिड पे आ गया फेक है फेक था वो सब फेक था। हाँ ठीक तो होल्ड गोइंग मिड की बॉल टूट रही है। ठीक है टूटना दो मैच में बात करना। अच्छा पीछे अपने बंदों साथ कर रहा हूँ भाई ए केयर करो सब मैं fake ए है। पे बैठा हुआ हूँ। Seek them out. ये सीवर फाइनल ओके हां बेंच ठीक है। तेरे को तो माने 2 एमएन और 1 2 एमएन अननेसेसरी प्रोसेस नहीं। 30 seconds left. I've got your trail. अरे बाप रे भाई, अरे कोई ना। बाप रे। Over there. 10 seconds left. One enemy remaining. Spike down A. इनवाइट करोगे? अच्छा Switching sides. Combat is a means to an end. And we are the means. डर थे लड़के अंदर, यहाँ पे इन्हें पता नहीं कि ये एंगल भी चेक करना होता। भाई ऐसा फ्लैश दे के और फिर मैं ऐसा हक देता हूँ ना, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ यार मैं। अश्विन भाई थोड़ा आराम से कीजिए, ठीक है? आ गए और शिवांग भाई बढ़िया। तुम्हें यहाँ म्यूट कर दिया, मेरे पास तुम्हें वो देख रहे हैं ना। देख लो उसको। तेज हील है। अरे वो खुद को मार लिया हील। हाँ नाइस वन भाई। साइड जाओ साउंड नहीं आई, कोई नहीं है साइड। जाओ सब वहीं वो रोटेशन पे है। 104 केजी को मैं डरे। क्या होगा इसका? डॉग नहीं था उसके पास। डॉग नहीं था तो मतलब हील था। हेवन आया मेरे पास। Barrier deployed. दीदी साले ने हेवन पे इंटरनेट लगाया। Sensor tripped. Last player standing. One enemy remaining. 60 दिया यार। You can kill him वाली। नहीं काहे प्लाट उसको टैप पे खेलने दो ना, क्या करना? प्ले ऑन टैप। ही इज पुशिंग आई थिंक। नो खराब है मैं बाप रे। भाई क्या था, मेरे को याद है गाइस, मेरे को पता था ये आगेगा। ये कॉल देखो, जब बंदा कॉल्स नहीं सुन रहा होता ना तो बंदा हकता जरूर है आखिरी में। Reloading. ये अपने ऊपर भी लागू कर लिया करो कभी कभी। अच्छा 104 दिया था कि तो 104 दिया था ये जो अरे मार तो नहीं पाए ना 104 क्या आई थी। ए भाई ये आजकल के लड़के। तुम कब के हो? तुम बाबा आदत जवानी के हो क्या? स्लो खेलना पड़ा, ठीक है? बहुत जरूरी।
काम देख लो वो बोले तो Reloading. भाई ये रेना बहुत चिरकुट है यार, मैं I सब got कुछ the नहीं spike. बोल रहा हूँ। वॉल के क्लोज है एक। Throwing net. Enemy spotted. रेना ऐसे एंट्री करते हैं, रेना लेके ऐसे एंट्री नहीं करते हैं, चुप के पीछे से। One enemy remaining. छोड़ ना। Gun here. साला नुबड़ा। अपना पैसे खेल रहा है शुरू से। आराम से गन नहीं देनी है। I'm bugged. They think themselves are equals. They are mistaken. ये राउंड में बस हो गए लो। ठंडी रोना करना रहता ही है वेंचर। और क्या पैंच करना ही है हमको, तो पैंच हम भी करेंगे भाई। अब पैंच रुक जाओ अश्विन भाई, मैं बताता हूँ इसको आखिरी में, तुम टेंशन न लो। तुम्हारा भाई अभी यहाँ है। Find the weak यार point. अभी खेलो पहले चलो। खेल लो तुम, ये मैच जीत लो, उसके बाद इसको बताता हूँ। मैं स्मोक कर रहा हूँ। कितने प्यार से अश्विन भाई कर दे रहे हैं। Hunt. Scout destroyed. हाँ 78 का Spike down. भाई, हम दोनों ने हक दिया स्प्रे। Loading. भाई गलत जगह एम हो गया, क्या करें। गलती इंसान से ही होती है शायद। उनका बाय राउंड है ना, बस ठीक है। डैमेज करो। फैंटम पकड़ा दे पीछे उसको, याली उठा लो तुम। वो भाग गया तुम्हारे फैंटम दे दो। पीछे है, तुम्हारे पीछे डेडलॉक है। Reloading. यार तुम Spike down. नहीं, मैं पहले पैंटम पकड़ा देता हूँ, सही बात है। मेरी कॉल सही थी, अगर तुमने पहले सुनी होती तो। और तू अच्छा खेलता है क्या? नाइस वन। Good kills. Player standing. One mid. मैं देखा हूँ भाई ये फैंटम वाला। रक्षित बताओ। हाँ वो मैं जब मुझसे ज्यादा अच्छा खेलता है। नहीं बात उसकी, अबे दो फैंटम, एक तुम्हारे हाथ में एक नीचे पड़ी हुई है, तो दोनों को फैंटम मिल जाएगी ना भाई। क्या बात करते हो, वो अच्छा खेलता है खराब खेलता है उससे फर्क नहीं पड़ता भाई, दोनों हाथ में गन रहेगी तो। give a shit if I don't know the person who is playing with me. अच्छा, तो मतलब तुम्हें अपनी टीम से फर्क ही नहीं पड़ता है। नहीं नहीं। अरे भाई वैलो टीम गेम है। Stealing sight. अरे भाई Cutting their vision. Hold them. अंग्रेजी। बे यार ये रेना क्या कर रहा ब्रदर, तेरे चक्कर में मैं मर रहा हूँ। भाई भाईचारा टॉप पे भाई। पीछे। मैं जा रहा हूँ, ठीक है। Barrier created. अबे और उठा के रिवाइव कर सकते हो तुम, नीचे और होगा। Last player standing. बहन तो ये कहाँ से आ गया? Spike down A. One enemy remaining. यू कैन रिवाइव समवन। साइड में कौन है? नहीं यहाँ कोई नहीं है यहाँ पे। साइड में आसरा, केयरफुल। जहाँ मार के वहां चेक करना, जस्ट नीचे अंडर हेवन चेक कर लेना एक बार। यही हूँ मैं। Your duty is not over. Wait. This is what I अश्विन फॉर द विन। वो दिमाग से ही चलाया था ना, जो वॉल से कूद के ऊपर। हाँ अबे वो तो बहुत खतरनाक है, तभी तो मैं चुप हो गया वहां पे एकदम। मैंने कहा ये तो कुछ अलग कर दिया इसने भाई। वही एजेंट का वो होता है ना, थोड़ा आईक्यू। अच्छा मिड रश करो, वेंट्स के थ्रू ए चलते हैं। चलो over there. मैं कुत्ता करूंगा मिड पे, ठीक है। मैं यहाँ को कुत्ता करूंगा, उसके साथ कोई पीक करेगा बस। स्मोक दे रहा हूँ। केजे सेटअप है। जाओ तुम लोग निकलो, केजे सेटअप है। Stealing sight.
भाई कोई आया क्यों नहीं? 3 बंदे यहाँ पे, बाकी सब कहाँ हैं? एक अंदर आसरा अंदर है, आसरा अंदर है। प्लान देना यहाँ पे। तुम्हारे पीछे कुत्ता आ रहा है। चलो स्काई है बी पे, स्काई है बी पे। एक यहाँ केजे है, केजे है। One enemy remaining. फील करना वॉल कर दो, वॉल कर दो। हेवन का पार्ट Wall raised. वॉल करो, बैंड देखो। वेंट्स देखो खाली, बस आराम से, बस वेंट से ही आया हाँ शायद। हाँ उधर ही चांद उधर ही। वेंट्स आया, वेंट्स आया, वेंट्स आया। सही बैठो, सही बैठो। उतर जाओ, उतर जाओ, निकल जाओ। हेवन आ गया है ना। आ ही नहीं पाएगा टुकड़ा। पैरानोया, पैरानोया। नाइस वन। पता तो आ ही नहीं पाएगा। चलो सेज के 10 किल हुए। You on our path. लास्ट टाइम 2 किल करके रेज क्विट करके भाग गया था। हाँ कर लो। Reloading. तुम्हारे बारे में कुछ बात सुनाई दे रही है यार अश्विन भाई। अबे भाई मैं देखो कभी कभार ना यार, अभी ना गेम के बाहर प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, ठीक है थोड़ा। तुम पता है तुम थोड़ा ज्यादा सीरियस रहते हो भाई जिंदगी में। Need a No drop. mercy this time. I was in that game। नहीं कुत्ता करूं, स्मोक कर रहे हो यार? तुम्हें केजे को मारना था। अबे मेरी उसमें था ही नहीं एंगल में केजे। केजे वेंट्स था केजे। Kill confirmed. केजे मेरा एंगल में था ही। अच्छा अच्छा। One enemy remaining. मुझे लग रहा है मैं बॉटम फ्राई करने वाला हूँ थोड़ी देर में। रेना अननोन है। For you. अरे पास में लगाना डेडलॉक अपने। ये मछली के ऊपर लगा दे। हेवन कूदा नीचे। नाइस वन डेडलॉक। They're done. Ultimate ready. देखो दिख गया था उस स्क्रीन पे कूदते। Just some good old hard yakka. Standing in between us and victory. पांच अल्टे हैं भाई, इनकी अल्टे वेस्ट करवाओ पहले। अभी ये करेंगे, मुझे लग रहा है रश कर सकते हैं, थोड़ा पीछे गिरना है। मैं जा रहा हूँ वाइट करके, बी है सीटी पर। केयर करना, वो लोग वेंट भी पुश कर रहे हैं अब। हाँ वेंट 2 लोग थे तो थोड़ा असलो के। Joke's over. You're dead. Reloading. कहाँ अल्ट मारी? मेरे पर अबे One less. भाई मेरे साथ क्या हो रहा है? Healing you. वन है ना इजी। कट किल। अरे रेना साइड में जाना था ना ब्रदर। Throwing खेल net. आराम से। Sound sensor out. Got अरे केजे सिटी। You should run. Sensor down. भारो Nothing there. अरे वो आ जाएगा, टाइम आराम होता है। से। और उठा ले तब तक अश्विन भाई। हेवन सिटी हेवन क्लोज आ गया। Last player standing. One enemy remaining. हुआ है। साइड में हाई पे साइड पे ही है। निकाल। You're giving sound cue. फेक प्लान। You have ball. हेवन आ सकता है। Spike planted. हेवन पीछे। Blocking movement. नाइस वन। I do not. अबे इतना खतरनाक साउंड है। एंटी आंख पागल है, कितना साउंड देता है रक्षित भाई। One more. वही तो। First shout on me.
अबे भाई पता है एक बात बताऊं, ये नूबड़ा था केजे, इसमें साउंड देनी ही नहीं थी। अरे और क्या, वो कूद गया गलती से तभी साउंड आ गई भाई। इतनी पूरी प्रॉपर साउंड है, पीछे दीवार फेंक रहा है यार को के ना चाहे ज्यादा के लोग जैसे ये गोट के, लेकिन ये खेल, लेकिन इसका गेम सेंस ज्यादा कुछ खास है नहीं। नहीं भाई बे, कैसे कर रहा हूँ मैं भाई मेरा तो अभी 1v1 चल रहा है इस तरह से खाली। भाई भी खुश हो गया भाई। भी पुश है, कोई नहीं है पे, कोई नहीं है पे, कोई नहीं है पे, खाली केजे होगा मार्क द साइड पे। भाई बोट तेरे पास स्पाइक है, बोट तेरे पास स्पाइक है, मत Reloading. कोई नहीं होगा साइड पे, सबने भी पुश किया भाई, एक ही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। साइड जाओ। तो जा अरे एक हो सकता है, बोला तो था ब्रदर। एक और है। अरे साइड साइड। Last player standing. Spike down A. साइड पे कौन था? केजे साइड पे केजे मर तो गया, मर मर साइड गया। खाली है, रेना साइड खाली अरे है। रुक जा, नहीं कोई नहीं भाई, कोई नहीं। अच्छा मैंने क्या कहा था, मैं बॉटम फ्रैगर बनूंगा इस मैच। भाई साहब 20 राउंड में ऐसे कॉल्स मत दो कोई कि साइड खाली है, 2 बंदे थे साइड पे। मैंने कॉल दी थी क्योंकि मेरी क्या बोलूं, मेरी क्या मारी गई थी मेरी। नहीं सर, लेकिन पता है 2 बंदे वहाँ साइड। तुमने कॉल दी थी कि कोई नहीं है, साला 2 लौंडे निकले, वो भी कैंप पर। आराम से खेलो यार, आराम से। भाई 12-8 है भाई, गूंगा बोला। I've got your trail. Hawk out. Blinded. कौन है पीछे भाई मेरे भाई? एक्शन भाई, बॉल गया थी यार ये चूतिया डेडलॉग ने ब्लॉक कर दिया भाई मेरे को। मैं उस सबसे पीछे वही था मेरे। कोई नहीं यार Hawk out. जाऊंगा एक बार दोबारा से। Blinded. आराम से, आराम से, बहुत तेज खेलना है। लाल लेफ्ट साइड। Player standing. तुमने मार्शल ले भाई मेरा नहीं चल रहा कुछ, मैं क्या करूं बताओ। अब पता है बी डिफॉल्ट करो बस, ठीक है साइट मिलेगी। चलो नहीं अब मैं कुछ कर जाता है, लेकिन अभी नहीं। भाई मेरी कॉल है, बी डिफॉल्ट करते हैं, घुस जाते हैं सब साइट के अंदर, इजी कंट्रोल मिलेगा, प्लांट मिलेगा, उसके बाद डेडलॉक आ गए, पता है ना। हाँ तो ठीक है ना, एक्सपेक्टेड नहीं होगा। आखिरी तक पुश करना पड़ेगा, पीछे मत आना। आसरा मिडलर करता है, केयरफुल। और सुनो उसका तरीका मैं बताऊं क्या है। रुको सुनो ओमन भाई, आप इधर जाओ, आप इधर से ब्लाइंड फेंको, आप इधर से ब्लाइंड करो, इधर से ब्लाइंड करो। साउंड में दो अभी अब रुको। रहना मेरे साथ। बोलो साउंड वो मैं स्मोक को मतलब वो ब्लाइंड हो। केजे साइड एक और साइड। You should run. Here. पीछे चल ये चलो हो गया हमारा। Found one. करने दो स्काई को लड़ने दो। सही है चलो 3 for 3. लड़ो रक्षित और लड़ो। रहना फिर तो पीछे रह गया, फिर तो मुझे चूतिया किल के चक्कर में अभी बी पे कोई निकला, क्या करोगे? होगा बी पे कोई नहीं, होगा केयरफुल रहना। प्लांट करो, मरोगे देखा जाएगा। हेवन खेल रहना, कोई पुश नहीं करेगा, एक साइड में अंदर खेलो। आस्ट्रा के पास अल्ट है, आस्ट्रा के पास बस ठीक है, निकल गया राउंड। नाइस वन। आई एम वाचिंग बैक टैप। बस सेव आप सेव खेलना। कहाँ है ये, कहाँ है जगह तो बताओ। ऊपर दोनों सिटी
दोनों सिटी थे। 7 आ गए हैं, ठीक है आराम। अरे बहन की आँख। कहाँ है अश्विन भाई? अंदर साइड के अंदर साइड। One enemy remaining. Last side? player standing. ओपन प्लांट है दरवाजा। अरे हो ही गया, टाइम ही खत्म हो गया, जीत गए। Hawk out! Blinded. Attackers win. चलो वही जब मैं आता हूँ तुम लोग एक मैच लगाओ तब तक। ओके। ओके। नाइस। रास्ता है ये कि एक था नौजवान जिसकी मैं 12+ हुआ है। बोलो भाई। कैसा लगा? देख रहे थे क्या? हाँ भाई देख रहा हूँ मैं। वॉल वाला देखा? ओ जो रेना चढ़ गया। इसमें हलाल ने बोला सेज फॉर द विन। सेज, हाँ सेज फॉर द विन। हाँ बढ़िया था भाई। और बताओ सब बढ़िया। अक्षत, यही तो चीज़ है जो मेरे को प्लेटवन गलती से मजबूर कह देती है तुम्हें बोलने के लिए। अच्छा अब रुको जरा। अबे मैं शिवांग भाई जरा इधर आना जरा। शिवांग भाई जरा इधर आना। अरे यार ठीक है मैं यहीं पे हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई ठीक है भाई। अरे नहीं भाई ठीक है यार, तुम हो अच्छा खेलते हो। अरे हो ही जाए खलाल भाई, अश्विन मेरा हो ही जाए। अच्छा हलाल भाई हो ही जाए अश्विन। लेकिन हलाल भाई भी एक अश्विन मेरा हो रहा है मतलब, ठीक है हलाल भाई? ठीक है। तुम क्या करोगे? तुम देखोगे? एक मैंने तो वार्म अप भी नहीं किया है भाई। अबे भाई मेरा वार्म अप भी ज्यादा अच्छा नहीं आज। अरे तुम कॉम्पी में टॉप फ्लैग करके क्या कहते हो, बॉल करके आ रहे हो कॉम्पी में तुम। Warm up. अबे मैंने ड्रिल नहीं करी आज ना। तेरी शरीफ बेस्ट है ना उसमें। I will drill you अश्विन भाई। तेरे फोन लिए ठीक है। अबे स्टार्ट तो उनसे। These guns we use are अरे मार तो सकते हैं। no offense. अश्विन वो मेरा है भाई, हट जा। अच्छा तुम दोनों का है, ठीक है। अभी क्या मैं टैब दबा के चेक कर रहा हूँ कौन वो है। फिनिक्स है ये, ठीक है। अबे उस रुक जा, हट जा। तुम मारियो मत ना बे। अभी से हटा यहाँ से यार, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अरे नहीं कर रहा। मेरे एंगल में आ रहा है ये। नहीं तो भाई तुम मेरे को क्यों मार रहे हो? दोनों को मारूंगा अब। तुम पतला बलोरी तेरे ने। अबे कॉम्पी क्यों नहीं लगा रहे हैं? रुको रक्षित होने दो यार। शिवांग मेरा अब मत करना। अबे मत करो। तुम मुझे क्यों बोला उल्टा सीधा? मैं आराम से खड़ा हुआ था ना। हमने तो कुछ नहीं बोला भाई। नहीं बोला, तुमने बोला। तुमने कॉम्पी क्यों नहीं लगा रही ये तो बताओ। क्योंकि इसने चैलेंज किया है ना। पेट्रोल स्ट्रीम देख रही है बताओ पहले मेरे को। नहीं अभी तो नहीं। उसे बोले पेट्रोल को सब्सक्राइब कर रहे। आया। अब रुको आ रहा हूँ। मेरे को मत करो मैंने कुछ नहीं करा। अबे उसने भी मेरे को एक बार मारा था भाई, हिसाब बराबर हो गया ना। चलो अब हिसाब बराबर ना। अरे यार अब तो और हिसाब। अरे मैं ऐसे ही कर रहा हूँ भाई, मैं एम ही नहीं कर रहा तो मैं मारूंगा क्या? मेरे पीछे देख। अरे मैं भी एम नहीं करता भाई, इनफैक्ट मैं तो किसी को एम नहीं करता भाई। आजकल कसम से क्या ही मार्शल चल रही है भाई। ये रक्षित भाई ने तुम्हारे ने लो कर दिया था भाई। हेड दिया है मैंने, क्या बात कर रहा है तू? तो रक्षित भाई ने लो नहीं करा क्या उसका? तो हेड से फुल नहीं रहती है। मैं मार भी नहीं रहा हूँ इस बंदे को और ये बंदा मुझे मार रहा है। भाई दाएं भाई गोलियां चलाई है भाई। मारा नहीं अभी तुमने? मारा नहीं एक बॉडी? क्यों मारा शिवांग भाई, क्यों मारा? हील चाहिए थी भाई, सॉरी।
ठीक है। अब तुमसे मैं हील लूंगा, रुको। ओए टिंगलिक लिक, ओए अच्छा तुम तो वो टिंगलिक। अरे What a अच्छा shot! What a रुको shot! रुको बेटा, तुम रुको। भाई मैं तो खेल भी नहीं रहा, ऐसे ही मर रहा है तो। भाई ये हलाल बीच में आके भाई अपना मतलब टेंशन सीख कर रहा है और कुछ भाई। Embarrassing. भाई सॉरी 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 सॉरी। अच्छा भाई डैंडे दो कर दिया यार। वेंडल निकालेगा कुछ भी। रुको रुको रुको, तो तुमने क्यों निकाली मार्शल? मार्शल वेंडल में फर्क नहीं है, बताइए। फर्क तो लुल्ली और लुल्ला में भी है। आगे चल यार। अबे वो आगे आ गया तेरे शॉट के यार। भाई साहब मजा आ गई। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। अच्छा लग रहा है भाई, तुम लोग को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ क्या एमिंग। अब तुम दोनों लोग मुझे ही मारने पे तुले हो। वो तो अच्छा है, दलाल ने दिखा दिया कि वो चेंबर है, वरना मेरे को लगा तो ट्री से आ रहा है। मैं ट्री का एम लेके बैठा। अरे उसको लगा हेड लगा, हेड लगा, हेड लगा। अरे नो हील फॉर यू, नो हील फॉर यू, नो हील फॉर यू। मार्शल दे दी ना मेरी यार। रुको रुको लगाओ, तुम भी ले लो मार्शल। अबे वैंडल हो तो बताता हूँ मैं। आओ मैं तेरे शरीफ आया हूँ, तेरी शरीफ स्ट्रांग है, मैं तेरे शरीफ आया था, ठीक है। अबे भाई यार तो एक चीज, अबे अरे यार चिल करो यार। तूने बोला मार्शल नहीं, मैंने कहा ठीक है भाई। एक ही बंदा सामने आ रहा है मेरे। मारो मारो मारो। मुझसे नहीं, मुझसे नहीं, ठीक है, मुझसे नहीं। अश्विन भाई इतनी देर से मैं आपसे तमीज से बिहेव कर रहा हूँ। अश्विन भाई गुस्सा नहीं, दिस इज ऑल अ जोक मैन। भाई वो ऑफ ले आया भाई, मैं नहीं खेल रहा गेम। Embarrassing. कुछ तो करने दो, एक बंदा उधर से मार रहा है, एक बंदा ही। तुमने मुझ पे चाकू क्यों चलाया? मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। रुको बेटा तू। भाई ऑफ नहीं यार, अश्विन भाई चीटिंग हो रही है भाई। हाँ भाई पता है भाई। तो हमें क्या, तब भी भाई साहब फ्लैट 1 से नीचे ही हो तुम, फ्लैट 3 से। यार आउट स्पीक लिया था वो, देखी बात में। जरूर जरूर। अरे Stand aside. चीटिंग का एक वो मिलता है भाई, सबका टाइम आता है चीटिंग करने पे। ये प्लम्बर कौन है? प्लम्बर किसी नहीं बुला रहे भाई। कल 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 पहले हाँ वही वही पहले खेलते तो थे प्लम्बर के साथ। पंपी लगा दे। एक काम है मुझे जरा, चलो खेल लेते हैं पंपी। तुम क्राउच कर गए प्रॉप पे एकदम। पंपी लगाओ, पंपी बाहर आओगे, पंपी लगाओ यार, बोल आओ बाहर। रैंक अप है मेरा वैसे भी। बड़ी रैंक। अरे तूने भाई के सब्स देखे हैं लाल भाई? नहीं, कितने पहुंच गए?
गेस करो भाई तुम बस भाई किस या प्लम्बर पूछ रहा है जगह है बुलाऊं? भाई उसे बोल 2 बंदे चाहिए, एक से नहीं हो पाएगा। और बोल अपना प्लेट का है तो 25% कम प्लस होगा। बोल गोल्ड की आईडी से आया, कोई दिक्कत नहीं। आईडी होनी भी तो चाहिए। नहीं है ना, लगाओ कॉम्पी यार। तो भाई गोल्ड वन के साथ वैसे ही खेल रहे हैं हम। अरे यार आज भाई दिन इतना खराब गया ना भाई। हम कहीं गए, फोन घर में भूल गए भाई। सब कार में गाना भी नहीं बजा पाए, एफएम सुनना पड़ा भाई। बहुत बढ़िया। अश्विन भाई लगा दे कॉम्पी। अश्विन भाई कहीं चले गए लगता है। भाई मेरे सब्स हो गए हलाल भाई 942। बाप रे, तुम्हारे बढ़ते जा रहे भाई। तुम्हारे 843 से 9 अब तो अब बढ़ गए। अब तुम्हारे अब अच्छे आएंगे। ये क्या भाई हुआ? मेरी लास्ट की मोटा लास्ट की मेरी 3 लाइव स्ट्रीम्स पे Match 100 से found. ज्यादा व्यूज आए हैं। हाँ। ठीक है, और पिछले 28 दिन में मेरे 170 सब्स बढ़े हैं। वाह वाह वाह। भाई शॉर्ट्स पे व्यूज भी तो मेरे आ रहे हैं ना। 5-6 हजार शॉर्ट्स पे व्यूज आ रहे हैं। बताओ क्या ले लें यार, बताओ। जी बताइए भाई। जो मन करे खेलने का यार। ओके। या कहीं से बस वॉच की दिक्कत आ रही है, वो करवा दो। मॉनिटर्स की रिक्वेस्ट डाल दूं मैं अभी। सुनियो हजूर, सुनियो हजूर। टीम तो बढ़िया है, अगर ये रेना खेल पाए तो। मैं इन्हें ले लूं क्या? अब वो तो अश्विन भाई से डिस्कस कर लो। टाइम अब खत्म हो चुका है। So, game plan. What y'all feeling? I'm down for whatever. थोड़ा आगे बढ़ोगे? तुम जहाँ पे हो वहीं ठीक हो। मेरे को नहीं आते क्या ये जंप करना? ये लो पहले। ए यार अब लड़ना मत कि बॉटम पे कौन करेगा। ठीक है, ये लो। वो तो पता ही है शिवांग भाई। ये लो। तो हमें पता है भाई। शिवांग भाई से पूछो मत कौन करेगा, सबको पता है कौन। Placing sentry. बताओ हलाल भाई कौन करेगा बॉटम पे? Enemy spotted. मैं करूँगा भाई। बस ये हुई ना बात। गराज गराज वन। तेजी तेजी भाई, तेजी जेट लो, नहीं है जेट अपने लो। पास। मुझे डम टीम मैन। Reloading. Reloading.
One enemy remaining. Thanks, little man. Here. Dizzy's up top. Who could have predicted this? All right. What a dumb team, man. No Sage. Kick them when they're down. This insta-locker Rena stupid. I'm gonna buy. वैसे इंस्टा लॉक तो गेको ने किया था. So it's my choice. I'm not gonna buy. I'm gonna save. Get some, Reyna. Placing sentry. Don't be toxic, bro. No, though. Just like she ignored you, woman. A shot, both chamber and jet. That's how insta-locker dies. Our spike carrier is dead. Spike down A. Oh, fused. Raise pushing here. Ah, turret down. Raise pushing me. Here. Last player standing. भाई कौन गन बाय किया था? मेंटल इंसान जाके गन दे आया है. भाई नहीं आता खेलना, पीछे खेलो ब्रो. Enemy down. That's done. Team Ace. इसको राउंड जीत गए यार वो. भाई फिर तू म्यूट मार देना वुमन. Everyone तेरी makes बंदी fun थोड़ी ना of वुमन. German Desperate for efficiency. attention. Just keep laughing as you use all my gear. अबे असल में तुमने वो गेम लीव क्यों किया था वैसे उस दिन वाला भाई? अरे हम पता है हम 10 अबे कुछ 12 तक. अरे कुछ पर्सनल इशू था भाई. अभी गेम था. अबे रहना के जी मेरी टीम में है भाई ओमन. तेरी ही मान लेगा ठीक है. Find the leverage and wedge बाय it मत open. करो, बाय मत करो. Turret out. Omen, can you watch long for me? Watching shot for me, okay? No. Target spotted C. Okay, guys, chamber left their side, I guess. We can commit A, okay? Nice one, nice one. गराज रेना. रेना नहीं जो भी है पता नहीं. गराज एक है. Bro, I'm blinding. Can you? In sight. हेवन केयर. Spikes down. Side, come inside. तो देखो पागल है क्या? माय चॉइस भाई, मेरी गन. वाह ले. नाइस वन. गन से. Enemy spotted A. हेवन. One enemy remaining. Flawless. Reloading. Like Nice grenade out. one. गन से. They think themselves are equals. They are mistaken. तेरी जान की गांड में डंडा देने का इरादा है उसका. एक लॉन्ग देखना, एक शॉट आता है यहाँ पे. Turret out. देखो का. Just joking. Nice one भाई, nice one. I got the spike. Omen blind. Omen वो smoke देना. Barrier deployed. शिवांग भाई का अलग ही चल Side रहा empty, side है. empty. Throwing net. Enemy spotted A. Cutting their vision. Safe. Omen के उसके अंदर. Nice one. Bro, Gecko, if you do these type of tricks, then you will have to hear some bad things. One enemy remaining.
क्या हो जाएगा मैं वही करके दिखा दूंगा भाई मैं बोलना शुरू करूंगा ना अभी तो तू सुन नहीं पाएगा बात वही है तमीज से क्या खेलना हो गया केजे भाई? करूंगा तेरा खानदान नंगा हो जाएगा अबे तेरे खानदान को ऐसा चोदूंगा ना तेरे जैसे 4 बच्चे पैदा हो जाएंगे तेरे खानदान की तेरी माँ की चूत भाग तेरी माँ की चूत अबे चल भाग यहाँ से अबे तू बिना बाप का आदमी है तू बिना बाप का आदमी दिखाई दे रहा है अरे चल हट चल हट चल हट चल हट कुत्ता क्या हुआ क्या? अबे थ्रो कर रहा है बे झाटू आदमी अबे मैं प्लांट कर रहा था इसकी माँ चुद रही है बहन की नंगी करके मारूंगा तेरे शॉप के सामने एक बार तू बोल ले फिर मैं बोलूंगा सुनेगा तेरी औकात है तेरी औकात है इतनी तेरी औकात है तू बोल ले फिर मैं बोलूंगा सुनेगा सुनेगा Player standing. हाँ कहां से नंगा करके मारूंगा तेरे अबे लखनऊ से हूँ एड्रेस बोलूं आ घर तेरी औकात है तो आ अरे तेरे जैसे छक्के ना मैंने पाल रखे हैं पता है आ जाना तू कहाँ से बे तू कहाँ से बता बता तू कहाँ से है की आवाज में बोल रहा है गेको बता। की आवाज में बोल रहा है दिल्ली अबे दिल्ली मैं दिल्ली से हूँ। अब वो तो बैठा है मेरा दोस्त दिल्ली से बता सैनिक फैम सैनिक फैम सैनिक फैम सैनिक फैम गाड़ में ले ले सैनिक फैम बहन के लौड़े चल भाग यहाँ से छक्का चल भाग यहाँ से चल भाग छक्का मम्मी का मसला अबे चल भाग छक्के यहाँ से अबे तू किसी के मम्मी के पास नहीं भाग पाएगा बे बिना लंड के आदमी चुप रहे ना मर्द हिजड़ा अबे चलक 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 ना मर चलक अबे गेको भाई अपना फोन नंबर दे यार फोन बनाया बहन के लोड़े अबे बहन के लौड़े नहीं हो तो तुम्हारे घर में होंगे तभी तेरे यहाँ दिक्कत है बहन चोद गधे बच्चे बहन के लौड़े होते नहीं है तुम्हारे घर में दिक्कत है अरे इसकी आवाज यहाँ तक नहीं आ रही गेको की इतना धीमे तो बोल रहा है यार ये। अबे इसकी आवाज इसके घर वालों के कान में तो जाती नहीं है तेरे क्या आएगी भाई अबे मेरे बाप को तू जान लेगा ना तो तेरी गांड नीचे से फटेगी और टट्टी मुंह से निकलेगी पता है पता है पता है पता है पता है पता है पहले सुन ले जो मैंने बोला तेरे जैसे लौंडो को हलाल करता हूँ इसलिए नाम हलाल बॉय से चूती है अबे जा बे छक्के 2 कौड़ी के चल भाग यहाँ से चल भाग बस भोसड़ी के आ गया अबे जा रे जा रे जा रे जा रे जा रे जा रे नहीं हंसी आ रही हंसी नहीं आ रही हंसी नहीं आ रही बिल्कुल हंसी नहीं आ रही बिल्कुल समझ नहीं आया यार मैं तो समझ भी नहीं आ रहा स्ट्रीम रिपीट करके मैं स्ट्रीम जाके देख रहा हूँ पहले अबे मेरी जाके स्ट्रीम देख ले बहन के लौड़े मेरी स्ट्रीम जाके देख ले तेरे जितना सेटअप है ना उससे का खाली मेरा माउस है मादर चोद भोसड़ी के मेरा बात नौकरी करे तू दिल्ली में नौकर है बहन के लौड़े मैं नहीं हूँ लखनऊ में रहता हूँ खुद का धंधा है मादर चोद चल भाग यहाँ से चल भाग यहाँ से बोल दो अच्छा भाग तेरी मम्मी का अबे यही एक लाइन है क्या तेरे पास छक्के आदमी जा रहे म्यूट कर दिया तेरे को भाग यहाँ से चूतिया अभी इसके साथ फूल गई बोलते बोलते गेको की भाई 10 seconds left. Last player पता है इसने standing. क्या किया क्या इसने पता है क्या किया है इसने किया क्या है मैं प्लांट कर रहा था इसने मॉली डाल ली फॉर्म बता रहा है ये सैनिक फॉर्म देखो जरा कहां पे All right, homies, chill. We'll go again. Damn, अच्छा you love रुक being रुक रुक here. रुक रुक Like way too भाई much. सैनिक फार्म वाले का फोन नंबर होगा ना भाई तो फार्म हाउस में रहता है क्या छठे पर तो आज जंगल है भाई साहब टाइलों का काम होता है वहाँ पे टाइले है तेरी बाप की टाइलों में लेके जाएगा भाई साहब टाइलों में लेके जाएगा है कुछ प्रैक्टिकल बात तो कर भाई गेको भाई अबे उसको इतना ही पता होता तो वो ऐसी बातें कर रहा होता करने दे यार भाई दिल्ली से है चौड़ा हो रहा होने दे भाई दिल्ली से है अभी होली है अपने जमाने में बंदा खुश हो रहा होने दे भाई 21 साल का लौट लग रहा है Got one. कितने साल का है तू कितने का है तू बता अबे ये 6 साल का है छक्का समझे अबे नहीं यार भाई सुन सुन भाई ने मिलना है ना पंगा करना है कर ले भाई बहुत टाइम से हमारा भी नहीं हुआ पंगा भाई साहब हम भी कर लेंगे है ना अबे भाई अरे तू आ ना सुन सुन भाई बाप के भाई बच्चे आते हैं बाप के साथ हम अकेले आते हैं भाई ठीक है अबे आ जा भाई यार मैं तेरे घर देख रहा हूँ सैनिक फार्म भाई मैं दिल्ली में हूँ भाई मैं दिल्ली में हूँ अरे मैं दिल्ली में हूँ भाई अरे भाई देखने दे सैनिक फार्म भाई साहब अपन भी देख के आएंगे ना भाई कितना गड्ढा खोदते हैं हमने भी भाई रुक जा देखने दे अरे 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 भाई 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 अरे भाई 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 अरे भाई 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 अरे 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 सैनिक फार्म भाई सब टमाटर के खेत है इसके भाई 30 seconds left. रुक जा सैनिक फार्म पुल से दिया भाई साहब अरे 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 भाई भाई मैं भी रहता हूँ भाई मैं भाई साउथ मैं हाउस खास रहता हूँ भाई मैं
साइड के अंदर है, ठीक है। ये भाई जेन में Last पता है player क्या? standing. Spike down. C. 10 seconds कार left. कार के पीछे स्टिकर होगा भाई साहब, गुरु जी ब्लेसिंग है। सैनिक फार्म वही वाला है, तू वही वाला है ना भाई? वो वाला नहीं है भाई? क्या है तू? तो बाप का है। अरे नहीं भाई, ऐसा ही वो होते हैं ना, भगवान में नहीं मानते हैं, नास्ते करे भाई। ये जेनजी है भाई, ये जेनजी है भाई, ये चूती है भाई। अच्छा, इसको अगले राउंड से स्पाइक मत लेने देना भाई, इसको अगले राउंड से भाई स्पाइक लेने दे बच्चे को यार, जब तक मेरे से नीचे बॉक्टे दे दे, कोई दिक्कत नहीं। गेको स्पाइक भाई, गेको स्पाइक दे दे यार, छोड़ दे ना। अबे तू मेरा नंबर ले ले यार, तू अपना देख, चल दे नंबर ले चल। तमीज में रह, तमीज में, अबे तमीज में रह, तमीज में। अबे तूने लड़ना है क्या करना है, तू ये बता ना भाई। भाई इसकी लड़ने की भी औकात नहीं भाई, भाई इसकी लड़ने की भी औकात नहीं है। करने दे यार इसे भाई, अपन भी देख ले, करने दे। तो पैसा खिलाने के लिए बहुत है पुलिस वालों को हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास बहुत पैसा खिलाने के लिए भाई, मेरा भाई ट्रेडर है यार, कोई दिक्कत नहीं भाई। तू एक लौता केस नहीं है मेरा, ठीक है, तू एक लौता केस नहीं है भाई मेरा, इसके लिए चक्कर खाता हूँ मैं, ठीक है। अरे भाई कर देना, तेरे को लगता है, सुन मैं तेरे से इतने आराम से, मैं अरे बात तो सुन भाई, तेरे इतने आराम से बात कर रहा हूँ भाई, अब तो बात आगे तो लेके जा, तू बात आगे तो लेके जा, तू यहीं कर जा रहा है, तू यहीं कर जा रहा है, सामने आके मिलना, बात आगे लेके चल, आगे लेके चलना बात। कहाँ मिलना? सैनिक फार्म एड्रेस है तेरा, सैनिक फार्म एड्रेस है तेरा, जगह का नाम है वो। मैंने तो अपने जगह को बता दिया, तू क्या बता रहा है? एड्रेस बताना भाई, तू चौड़ा हो रहा है, हमने तो गर्मी ठीक करनी है बस। आजा, हाउस नंबर 111 गौतम घर। रुक लिख के दे भाई, हाउस नंबर 111 चैट में भाई। पढ़ गवार है क्या बहन के लोड़े? सुनाई अबे मैं टाइप करूंगा क्या? You want to play? Let's play. बहन का लोड़ा बहनचो, तो भाई मेमोरी तेरी बहनचो क्या है? अबे यार टाइप करवाएगा, लिख दे, फोटो खींच लूंगा मैं। डेडलॉक बस चुप हो जा, समझा कर, चुप हो जा। अश्विन भाई यार मत करो अरे मत करो ना, तुम मत बोलो उसे, गेम जीत रही है ना बे, छोटे बच्चा आते हैं। Spike down mid. I have the spike. Last player standing. सुनो ओमन are you listening me? Oman are you listening me? It helps. हवा निकाल ले, तू हवा निकालेगा, तेरे जैसे छक्का हवा निकालेगा, जा बे। सिल्वर 2 हार्ट्स तक। सुनो मेरी बात सुनो ओमन, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, ये दोनों मेरी टीम में है, डेडलॉक और ये केजे, ठीक है। अब तुम सबसे पहले म्यूट करो उसे, वो तो म्यूटेड है भाई मेरे में, गेको को म्यूट करो, तुम सबसे पहले म्यूट करो, हम चारों ढंग से खेलेंगे, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ ये दोनों कुछ नहीं बोलेंगे, ओके ठीक है, चलो अब अपना चारों का गेम करते हैं, इनसे जाने दो। ओमन स्पाइक किसी तरह उठा पाए तो उठाना। ब्लाइंड देने, ब्लाइंड अरे यार विंडो आ रखा है केजे, ठीक है। Last player standing. अच्छा Spike down mid. सुनो काम करो पहले भाई, सरेंडर कर दो, इससे अच्छा तो मैं तो कहूंगा सरेंडर कर दो। नहीं सरेंडर मत करो, रुको ओमन, सिर्फ गेको को म्यूट करो, हम अपना चारों का गेम खेलते हैं, इसे स्पाइक लेने दे, ठीक है। इसको खेलने दे, हम अपना धीरे से पिक्स निकालते हैं। तो अभी सेव है मेरा, बाय करो सब, चलो ठीक है ओके। डेडलॉक को केजे को किया है, गेको को करना चाहिए उसे, तो अनम्यूट करो ना उसे। Placing sentry. नाइस वन। कौन सी Target spotted. यार भाई सामने बताओ। ओमन ओडिन कर रहे आराम से।
enemy नाइस remaining. रन ब्रो। अनुमन बी पे लास्ट बी पे तेरे को मारना पड़ेगा, ये स्ट्राइक नहीं देगा। मैं इसका Last player standing. Spike down A. 30 seconds left. नाइस वन वुमन, नाइस वन। बढ़िया। They don't have a single life worth saving. भाई वैन तो म्यूट कर रखा, कुछ क्या देखा है? क्या फर्क पड़ता है भाई, एक किल का है। भाई वैन तो प्लीज ना बोलो रोशन भाई, बाकी शॉटों को प्लीज बोलने की तो मैं नौबत नहीं देखे। नहीं भाई, मैं भाई खेलना ही नहीं चाहता ऐसे लोगों के साथ भाई, जिनको गाली के अलावा कुछ काम है। पंडा लड़ रहा है भाई, चल बात आगे लेके जानी है, अपना बता, मिलते हैं कुछ करते हैं भाई। और ऑपरेटर ऑन सी। अब सुनो, केजी हमें बॉम्ब फेंक दे अपने स्टोव पर भाई। नहीं फेंक सकता भाई, मैं जब वॉक इन करता हूँ तब रेस पीक ले रहा है, पता नहीं क्या। Target spotted A. ये सही कर रहा है। Last player standing. अरे वहीं से आ गई यार। Last round in the half. ये काफी है भाई। Don't be cheap. स्पाइक आ गया गाइस, स्पाइक आ गया। चल भैया स्कूल को ऑफ नहीं देंगे भाई। रुको अबे गैराज पुश कर दे, बताओ अंडा। मेरे पास बाय नहीं है यार, अबे गैराज अंडा कर दे, मैं बताओ। नहीं रुको मैं ट्राई कर रहा हूँ, रुको कुछ। चलो कोई नहीं, मेरे को बेट कर देना, अकेले गैराज आजा, अंडा गैराज भाई, अंडा चल रहा। ठीक है रुको मैं Get out of my way. 130 रेज है भाई साइड पे, 130। Done. 105 सेज भाई सिटी आ रहे हैं, आराम से होने में, आराम से खेलना। Spike planted. दो बैक्स देना, बैक्स पे पाएंगे देख के, ठीक है। एक गराज है सेज। Blow him up, Mosh. अरे यार लूबड़े ने यार मॉली कर दिया। अरे कोई नहीं, जब थ्रो हो ही रहा है तो इतनी टेंशन मत लो भाई, थ्रो होने दो आराम से। One enemy remaining. एंटी आए मेरे भाई, एंटी भाई ह्यूमन के लिए मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है भाई, सच में। नहीं हो रहा क्या भाई मैं अबे तू फिर बोल पड़ा, जा रहे छक्के, जा रहे छक्के। अबे क्यों करूं म्यूट, मुझे सुननी है तेरी जाहिल बातें भाई। जब थ्रो हो रहा है भाई, सुन, मेरा YouTube चैनल है, मैं अभी लाइव हूँ भाई, मैं अभी लाइव हूँ, जाके देख ले क्या। अबे तेरे मुंह में अपना लंड देके ना तेरी माँ की गांड में खोल दूंगा, तब तुझे मजा आएगी बहन के लोड़े। चला लखनऊ के बहन के लोड़े होते हैं, आए बहन मजा आ जाएगा। तू भाई नहीं करेगा, मुझे पता है। अबे आप भी ऐसे ही है, उसको भी सुनने की आदत है। अच्छा सुना भाई, सुना और सुन रहा हूँ। तेरी औकात दिखाई दे रही है दिल्ली के चोदू, दिखा औकात दिखा अपनी औकात दिखा। को बड़ी शर्म आ रही है, इसके माँ बाप ने पता नहीं कैसे परवरिश करी है। अबे वही तो बात है भाई, मेरे को शर्म आ रही है कि कैसे माँ बाप है और कैसे बच्चा है। अरे कोई ना यार, तू कैसा रहने का कलुआ, कितना गंदा सा पैदा कर। अबे कलुआ देख रेसिस्ट में आदर चो, दल्ला रेसिस्ट भाई, दल्ला रेसिस्ट। ये दिल्ली वाले भाई जो तेरे को कोई काम नहीं है बे दल्ले, तू घर पे खाली बैठा रहता है, अपना लंड हिलाता रहता है, अपनी मम्मी की गाड़ मारता रहता है, अपने बाप का पैसा खर्च करता रहता है, तेरे पास कोई काम नहीं है भाई। तू छक्का है भाई, तू छक्का है, चुप रहे छक्के।
कुछ काम कर ले जाके अपनी जिंदगी में बे नल्ले यार, कुछ काम कर ले अपनी जिंदगी में जाके बे नल्ले बेरोजगार। भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, तेरी बहन को चौदू पटक के 10 बार। अबे मेरा बाप इतना बड़ा है ना, तेरे जैसे 10 बच्चे उसने छोड़ रखे हैं जमाने में, समझा? चल भाग यहाँ से। अबे तेरे जैसे 10 छोड़ रखे हैं मैंने जमाने में, चूतिए, तेरे को समझ में नहीं आता क्या? अबे तेरे जैसे 10 छोड़ रखे हैं मैंने जमाने में भाई, तेरे जैसे मैंने 10 छोड़ रखे हैं। तेरे को सुनाई दे रहा है? तेरे अंदर कोई इज्जत है? तेरे अंदर कोई इज्जत है बे? तू बहन का कितना बेशरम है बे? तू कितना सुनेगा बे? तू कितना सुनेगा बे? बेशरम आदमी कितना सुनेगा बे? 3 लौंडों से सुन रहा है तब से लगातार। तेरे अंदर 1 रुपए की शर्म है बे? 1 रुपए की शर्म है तेरे अंदर? साले दल्ले, चल भाग यहाँ से, तेरी भाग यहाँ से बे छक्के। अबे तेरी तो शुरुआत से फट रही है बे, तू मुझे क्या बता रहा है छक्के? तेरे को थेरेपिस्ट की जरूरत है, तेरे को अबे बहुत फनी नहीं है भाई, बिल्कुल फनी नहीं है। ना बोलियो भाई, दादा हो जाएगा। मैं तो इसके अपना यार बोलना आता है क्या भाई? अबे इसको कुछ नहीं आता है भाई, इसको कुछ नहीं आता भाई, ये छक्का है। रात में भाई, रात में 11 बजे बैठ के वैलोरेंट खेल रहा है और उसमें थ्रो कर रहा है, तो समझ ले कितना बड़ा दल्ला है ये भाई, कितना बड़ा दल्ला है ये। दिल्ली में एक जगह का नाम पता है, सैनिक फार्म, वही बोल गया। अबे ये जीबी रोड का है भाई, ये दिल्ली के सैनिक फार्म का नहीं है, जीबी रोड का है बे। अबे दल्ला नहीं है तू, रंडी चिदवाता है बहन के लोड़े, खुद को चिदवाता है बहन के लोड़े। अबे जहाँ पे तू दल्ला नहीं हो सकता। अरे तुम तो म्यूट। अरे चल भाग यहाँ से। पढ़े लिखे हो? हेलो क्या हुआ? मार दिया। Spike planted. One enemy remaining. बैक से कर रहा हूं, तेरे बिना जीत रहे गेको भाई, कुछ तो शर्म कर ले। लीव कर देना कि लीव कर देना भाई। इट्स ओके, आई एम कमिंग। कभी है यार, डिफ्यूज कर दो मन। बड़े डिफ्यूज करो। बढ़िया नाइस भाई। कैसा आदमी रहता है भाई ये वैलोरेंट में भाई। पवन पता है, मेरे को पता है एक चीज समझ में आई, तुम कुछ बोल नहीं रहे। पवन सोच, दुनिया कितनी छोटी है और इसको माँ शब्द की कीमत नहीं पता इसको, कि कैसे कैसे गाली दे रहा है। ये तू समझ रहे ना मतलब? अबे ओमन भाई, तुमको क्या लगता है भाई, हम लोग खेलने आए थे टॉक्सिक होने के लिए भाई? इसने दूसरे राउंड से मेरे ऊपर मौली करना शुरू किया है भाई, इसने मेरे ऊपर दूसरे राउंड से मौली करना शुरू किया है। इस छक्के से मैं बात करूंगा, वो भी तमीज से, अपनी जिंदगी में ना करूं। जैसे दल्ले 2 बाप के पता नहीं कहां से आ जाते हैं। Spike down A. अरे पीछे नहीं आ सकता था, वो लो हो गया था ना मैं। 59 है चेंबर, ठीक है 59। अच्छा निकॉल एक Spike down A. आस्ते हैं वहाँ पे, आस्ते 40 टैग है, ठीक है। One enemy remaining. जेट भी वही है यार, मैंने भाई लो कर दिया था चेंबर और सेज को यार। आस्ते पे मेरे पीछे भागते रहे हो, ठीक है? अपनी जिंदगी भर गेको आजा, मेरे पीछे भागा, मेरे पीछे भाग। कहाँ जा रहा है? ओमन अभी खेलो। ये सब मैं एक कर लूंगा। मेरे पीछे भाग दल्ले, आजा। सुनो डेडलॉक यहाँ पे गैराज पे अपना वो लगा दो, स्क्रीन्स लगा दो, ठीक है? ओमन आप कंट्रोल करना बी साइड, ओके? मेरे को तो सही लग रहा है। सही है। भाई सी स्मोक चाहिए मेरे को। ओमन स्मोक चाहिए मेरे। ओमन स्मोक चाहिए भाई। रुको ओमन रुको। नहीं कर सकता था भाई मैं, छक्का बैक साइड आ गए थे। Spike planted. Last player standing. 80 जेट 80 है, जेट 80 टैग कर भाई, राइट में गए आपके। तीनों बंदे टैग है भाई, तीनों टैग है, ठीक है? वो स्मोक ही नहीं दे रहा है यार भाई, वो कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत भाई 4v5 है शिमांग भाई, नथिंग कैन बी डन हियर।
वो लेकिन डाउन सही था, निकल जाता, मैं बस क्रॉस कर रहा था भाई। तुम पहले म्यूट करो तभी मैच जीतोगे, वरना नहीं म्यूटेड है भाई, ऐसा कर म्यूटेड दिया है लगा तब से बीच म्यूटेड में है क्यों भाई। अनम्यूट करा था? भाई मैं तो मैंने सुन तुम्हारे रहा लिए था किया था कि इतना क्या बोल बोल रहा रहा है। है। मेरे पीछे पीछे चलते रही होगे को, ठीक है, जैसे तेरी मम्मी तेरे मेरे पीछे पीछे भागती है वैसे। आजा आजा। अमन केयर भी अभी ए पे कुछ सीन नहीं है। अमन ए पे कुछ सीन नहीं हो रहा, आराम से अब देखना। अभी आगे ओ पीछे अमन पीछे को मैं ब्लैंक कर रहा हूं। Spike planted. विंडो ये अंदर है कोई नहीं अंदर। गाइस वन गैराज गराज है। Player अरे standing. यार मैं कैसा अकेला करूं यार? कोई ना, बढ़िया किया यार कोई नहीं यार। अश्विन भी आ गए। Remember, Ashwin your bhai. weapon is only a bhai. tool. Reloading. Just shoot. हाँ, इतना इनके चक्कर में टेंस हो गए तो मैं भी ये थ्रो कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं भाई। कोई नहीं मैं तो फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने पहले म्यूट कर दिया वैसे। बस हारेंगे भाई। क्या हलाल भाई, ये तो बताओ तुम में साथ क्या हो गया ऐसा? भाई मैं प्लांट कर रहा था, इसने मेरे ऊपर मॉशपिट डाल दी यार। उसके बाद एक लड़ाई झगड़ा कैसे स्टार्ट हो गया? क्या करा ये तो बताओ। क्या स्टार्ट हो गया? लड़ाई झगड़ा कैसे स्टार्ट हो गया उसका? भाई मैंने बोला तमीज से कि भाई मेरे साथ ये सब काम मत करो, ये मुझे गाली देने लगा भाई। बस ठीक है, उसके बाद तो मैं नहीं सुन रहा ना। तेरे को हेल्प चाहिए, ए साइड पे मल्टीपल है। ये राउंड अपना टेंशन ना ले भाई। Deleted. My ultimate is ready. Spike down A. One enemy remaining. शॉट पे 140। सीवर। शॉट मारो। होल्ड कर लेना बस। वेरी लो You're all more important than words in a brief. Look out for each other. भाई जब एक बंदे के थ्रो करते मैं तो भाई इसको पहले रिपोर्ट हम लोग ने नहीं किया अभी तक। भाई रिपोर्ट करो सब। कर दिया भाई, ये ले यार, ये ले। फॉर्म अब्यूज वॉइस, sabotaging the team, disrespectful behavior. तू भी कर दे भाई, तू भी कर दे। सब चारों कर दो। कर दिया Keep it cool. That's how you survive. Turret out. यार गलत हो गई मेरी जिगल पे। 105 दो गराज। शिवम Last player standing. Spike planted. Flawless. इतने आगे क्यों चले गए हलाल भाई? गलती हो गई भाई, एक डबल एक बार पीक ले। गुस्सा क्यों हो रहे हो हलाल भाई? भाई मेरे तो खेलने का मन ही नहीं कर रहा है। मेरा रैंक अप था यार, फिर से हार गया मैं। भाई क्या कर सकते हैं, आते ही आते जो बंदा थ्रो करना शुरू कर देगा उसका क्या कर सकते हैं। Get out of my way. अबे कितना बड़ा छक्का है ये। क्या हो गया? अबे विक्टिम कार्ड खेल रहा है। क्या कह रहे हैं? भाई इनको सिर्फ टॉक्सिक होना आता है। किसे कह रहे हैं? देखो रुको अनम्यूट करो, इसे रुक जा, अनम्यूट करो। मैं करी तो देखो भाई एड्रेस नहीं आया अब तक आपका भाई। Spike planted. हमने कॉल निकाल ली है मिलने के लिए भाई, एड्रेस तो दो। Last player standing. Flawless. भाई 3 है भाई, 3 है। तेरे भाई तेरे घर की कार के नाम पे ले रहा है भाई।
अपने घर की कारों के नाम ना ले भाई। यार क्या करूं भाई, मैं क्या करूं। भाई हम जवाब देके गेम भी खेल रहे हैं ना भाई, हम जवाब देके काम भी करते हैं जो हम बोलते हैं। तू कुछ कर नहीं पा रहा, बस बोल रहा है भाई। ये तेरा गेम ही यही है भाई, ये थ्रो नहीं होता, तेरा गेम ये है भाई। You want to play? Let's play. ओमन भाई हम लोग ये चाह रहे थे क्या, ये बताओ? हम भी तो जीतने ही आए थे ना भाई, इस छक्के के साथ खेलने थोड़ी ना आए थे। ही और विराज। अबे यार बच गया यार, बच गया। Spike planted. You want to fight it? तेरी यही इतनी बड़ी एक गति लेनी पड़ती है भाई साहब, तभी मजा नहीं आ रहा। Cutting their vision. Reloading. Last player standing. गंदी लेडी Attackers 145 भी टैग है दोनों। मर जा जाके को छक्के जा जा। देखो भाई यार, तुम भी यार बताओ यार। इसको ऐड करते हैं ना अभी टीम में यार, ठीक है भाई एक मैच। हाँ यार ये सब ना कब कॉलेज में छोड़ चुका हूँ भाई मैं। सेम ऐसा नहीं है हमारी लड़ाइयाँ नहीं हुई भाई। सेम तुम समझ नहीं आता, तुम अपना मुंह गंदा क्यों करते हो भाई? मैंने नहीं किया लाल भाई, वो अश्विन भाई मैंने नहीं किया। अच्छा तुम भाई तुम्हारे अंदर सब्र होगा इतना कि कोई तुम्हें उल्टा सीधा बोले तुम सुन लो भाई, मेरे अंदर नहीं है। मैंने जिस आदमी से मैंने तमीज से बात की, अगर वो मुझसे बदतमीजी से बात करेगा तो मैं तो नहीं सुनने वाला। तेरी भी सही है भाई, बात तेरी भी सही है। लेकिन मैं बताऊं अब ना, मैं बातों पर काम नहीं करता भाई, सीधा हाथ चलते हैं। इधर सुनो एक बात बताओ। एक बंदा जो तुम जानते भी नहीं हो कौन है, कहाँ रहते हैं, उसे बोलने दो ना। गली का कोई कुत्ता तुम भौंकता रहे, छोड़ो। तो भाई ये बताओ, गली का कुत्ता भौंकता है ना जब, तो मैं लाठी लेके उसको अपनी गली से बाहर निकालता हूँ, पहले बाहर जाके भौंके। भाई तेरी बात भी सही है, लेकिन मैं बताऊं हुआ क्या एक मुद्दे के। मैंने उसे बहुत तमीज से बोला था भाई कि ये सब नौटंकी मत कर भाई। उसने स्टार्ट किया, बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, चल भाई अब बात आगे तो बढ़ा। अगर लड़ना है तो भाई वर्बली नहीं लड़ना, हमने हाथापाई करनी है भाई। अगर उसे पैसे की पावर दिखानी है, टचवुड भाई साहब भगवान की कृपा से बहुत है, बहुत है भाई। पैसे भाई, जिस नल्ले के पास पैसा नहीं होता है ना, वो वही ये सब आके ये हरकतें करता है बैठ के। ये सैनिक फार्म बता रहा है, सैनिक फार्म में सब जा चुका हूँ, पूरा दिल्ली घूमा है मैंने। सैनिक फार्म बता रहा है। में पहली बात कोई भाई घर नहीं है वहाँ पे, ठीक है, और जिनकी कोठियां है ना वहाँ पे, वो भी वहाँ रहते नहीं है भाई, ठीक है। हाउस नंबर 100 वही भाई यार, मैं बता रहा है भाई, नास्तिक हूँ मैं। तेरी भाई साहब मैं बताऊँ नास्तिक भाई तेरे को यार। ऊपर जाके क्या जवाब दोगे? ऊपर जाके वाले की रिस्पेक्ट है, फुल रिस्पेक्ट है भाई। जब मेरे फटती है हनुमान चालीसा मैं भी बोलता हूँ। मैं कह रहा हूँ वरुण भाई एक बात बताना। बोलो। स्ट्रीम देख रहे थे क्या आप? नहीं। अरे देखनी चाहिए थी वरुण भाई यार, सवाल आ गया भाई। सुनो, कोई एक छपरी सा कोई स्ट्रेंजर अगर आके गाली दे तो म्यूट कर देना चाहिए, खत्म है ना? ठीक है। हमारे रक्षित भाई थोड़े उन्होंने कहा चलो जी आ जाओ जी। अब तक रक्षित भाई को फालतू बोलेगा, हम भी बीच में कूदेंगे भाई, हम भी कूदेंगे। मैंने बोला, मैंने बीच में बोला, चुप हो गया। मैंने कहा भाई ये मेरे पे जा रहा है। मैंने कहा भाई देखो इस बंदे से बात ही नहीं करनी। मैं भी नहीं कर रहा था भाई, मैंने तो बस उससे इतना सा बोला था। तब भी बीच में कूदा भाई कि अश्विन को फालतू ना बोले भाई। भाई मैंने क्या कहा, मैं प्लांट करने गया, मेरे ऊपर मौली आई, मैंने प्लांट करके हटा। मैंने इतना ही कहा भाई ये सब काम मत करो, शांति से खेल लेने दो। वो तुरंत गाली देने लगा भाई। हाँ तो उसी वक्त म्यूट कर दो, खत्म। अरे ऐसे छक्कों को उनकी औकात दिखानी भी जरूरी होती है भाई, वरना ये जाके और जगह गाली देंगे। इनको लगेगा कि ये शेर है, तो ये शेर नहीं है भाई। सुनो मेरी बात, कल ही हो गया आज ही। अरे इसी बात पे कौन मैच लगाओ यार तुम। इसी बात पे मुझे 10 मिनट दो, ठीक है? कड़क। भाई कैसे भाई?
पहले रक्षित भाई बताओ, मैं हाँ। घर पे माँ का हूँ दो, पानी पियो, फिर उसके बाद फाइनली क्या 2 ही हफ्ते के लिए हो, इतनी क्या खुशी मना रहे हो? हलाल भाई तुम ये सुनो, हलाल भाई, कहाँ के हलाल भाई, लपड़ मारूंगा ना हलाल कसम हलाल से सुन, बता। ये सुन, हलाल हाँ। से ये सुन, वरुण मैं और देवेश मिलने गए हैं। हाँ हाँ, बता मिलने चुके हो आए तुम, मेरे घर के पास, बता चुके हो मिलने तुम। आए मेरे घर के पास। वहां से देवेश भाई प्लान बनाते हैं कि नहीं एक लक्ष्मी कॉफी हाउस से वहां जाके खाना खाना है भाई। हाँ। ओके। ठीक है, उसे मैंने बोला हाँ। देख भाई 6:30 बज रहे हैं, यस। तो 8 बजे घर के लिए निकलना है, मेरे को 8:30 तक घर पहुंचना है भाई। ओके। ठीक है, तो मैंने कहा मैं यहाँ से आधे घंटे में घर पहुंचूंगा, मतलब 8 बजे तक यहाँ से निकलूंगा तो तब जाके पहुंचूंगा घर। सही बात। भाई वो बंदा मेरे को वरुण भाई के साथ कहता 15 मिनट की दूरी पे है, चलते हैं बस। मैंने कहा चल लेते हैं, 15 मिनट की दूरी पे है, क्यों वरुण भाई, यही था ना भाई। वो बंदा मेरे को वापस अपने एरिया में ले गया जहाँ से वो आया था, नोएडा से, और वहां जाके कह रहा है कि भाई यहीं पे था, गलती से आ गए, मेरे को पता ही नहीं था भाई साहब। ना कुछ खाया ना कुछ किया, अपन वापसी आ गए। ये प्रज्वल भी बैठा है भाई। नहीं प्रज्वल वो AFK AFK नहीं, ऑफलाइन ही है वो। अच्छा मैं Village से। 10 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? तब तक तुम लोग जरा वार्म वीडियो बना के अप जाओ, वरुण को डीएम लगाएगा। हाँ ठीक है रुको। मैं आया। भाई का मोनेटाइज हो गया वरुण भाई, क्या हो गया? मोनेटाइज हो गया चैनल। अरे अरे वो लगाओ बधाई ना, हो टीडीएम बधाई हो। लगाओ, इसको किक करो, टीडीएम लगाओ। हाँ अरे एक काम करो फिर मेरे को
I'ma cock my 9, mother. I'ma cock my 9. I'ma cock my 9, mother. I'ma cock my 9. I'ma cock my 9, One's a company, two's a crowd, three's a party coming, move around like first rush when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. Slide a laying low, hitting heavy. Take your time, let me know when you're ready. Couple months I've been messing with the steady. Open for plans tonight. Lost in the afterglow.
Match found. एक थ्रो करने की भी रिपोर्ट होनी चाहिए वैलो में। We're not getting the message. Leave it to me, I'll rough them up. Fight! Hit them fast, hit them hard. Sova's dead. Pitiful. क्या हो रहा है ये?
worthless. हो गया। बस हाँ। भाई क्या क्या The angel's dead. बैठने का है ओके। हाँ लग 10 kills remaining. शिवांग आ गया। मारो बे, क्या कर रहे थे? नहीं क्या ये एम चल रहा है। बच गए बेटा। क्या हो रहा है ये? मेरी गोलियों से डैमेज ही नहीं हो रहा क्या किसी को? Five kills remaining. हट। One kill remaining. मारो भाई। हाँ बे भाई। कहाँ गया वो अश्विन? हाँ अबे अश्विन को मैसेज कर दो। फोन कर देते हैं यार। अवेलेबल तो दिखा रहा है लेकिन पता नहीं। मैसेज तो गैरो को करते हैं भाई, अपनों को तो फोन करते हैं। तभी हमने डिवेश को आज तक फोन नहीं किया भाई। आ जाओ भाई। अबे वो पुल कितना अजीब सा था यार, पता नहीं। कौन सा पुल? हम कहीं गए थे वरुण भाई, मैं और दिवेश, उस पे वैसे पूरी बाइक खेल रही थी उस पुल पे। वो अक्षरधाम की बात वाला। हम्म। हाँ। भाई मैं वापसी वहीं से आया भाई, मैंने कहा क्या हो रहा है ये। हाँ स्टार्ट कर दो, मैं अभी ईयरफोन्स उतार रखे हैं। नमस्ते आंटी। शुरू कर दो, शुरू कर दो। यस चलो, थैंक गॉड। रक्षित अब क्या 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 क्या? नहीं 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 नहीं, क्या रक्षित? क्या क्या क्या? नहीं नहीं। Match found. क्या क्या? शांत रहेगा और क्या थोड़ा। क्यों शांत रहूंगा मैं? बैठा है आज पार्टी, जाके स्ट्रीम देख लेने इसकी।
आज कैदी करने वाले लोग आए हैं ना मेरे अलावा, कैदी करने वाले लोग आए यार। अच्छा मेरे अलावा, मेरे और अश्विन के अलावा यार। हाँ माय बैड अश्विन भाई। देखो भाई मैं तो कुछ कहूंगा नहीं, तुमने एक नाम भूल गए हो, वो बहुत कुछ कहता है लेकिन क्यों रक्षित? यहाँ किसको कैरी होने की बात करने की बात चल रही है भाई देखो मैंने कुछ नहीं बोला, तो शवांग बोल रहा है कि भाई मैं मेरे अरे भैया ट्रिपल सेंटिनल कहाँ ले रहे हो तुम लोग? अरे आदत सी हो गई है तुमको। अरे आदत नहीं हो गई है भाई, क्या करूँ, सपोर्टिंग लेना पड़ता है, लौंडे ऐसे मिल जाते हैं 5 से। अबे जब से पॉपुलैरिटी गई है ना अश्विन भाई को, अश्विन भाई सबको सपोर्ट ही करते रहते हैं भाई। अभी भाई मैं अपडेट तो नहीं आया ना? नहीं अभी नहीं है। अबे बहुत गंदा नर्फ आ रहा है भाई जेट का तो। ठीक है जेट नहीं खेलेंगे, उससे ज्यादा क्या ही कर लेगा कोई। नर्फ नहीं है, एजेंट हटा दिया है, नर्फ नहीं कहते उसे। अरे ये ले लूं मैं, बताओ ये क्या नर्फ आ रहा है, क्या नर्फ आ रहा है जेट का? नहीं भाई जेट के डैश का वो हटा दिया है, टाइमर जो था वो कम कर दिया है। अबे जेट पे कितने नर्फ आ रहे हैं यार? जेट को बहुत नर्फ कर दिया भाई। जो उसके डैश का वो था टाइमर जो 12 सेकंड का था, उसको 7.5 सेकंड का कर दिया है, और एक्टिवेट करने में जो टाइम लगता है वो बढ़ा दिया है। अब ड्राफ्ट 2 हटा के 1 कर दिया। बाप रे भाई जेट को खत्म कर दिया है भाई एकदम। उसके स्मोक का टाइम स्टार्टिंग में आईडी कितनी बढ़िया थी भाई। हाँ जेट के अब तुम स्मोक में बैठ के एक हाफ भी स्पाइक डिफ्यूज नहीं कर सकते। बाप रे बाप, हाइपर कह रहा हूँ, हार्बर फेड गेको। उफ। Okay, I put together some data on our last 6 combat missions. Did you read it? अब इनके पास बैकस्टैब नहीं है, इनके पास बैकस्टैब नहीं है। Can anyone here read? Turret out. वैसे पता है जेट ज्यादा नर्फ नहीं हुई मेरे लिए। क्यों? एबिलिटी नहीं यूज करता था। हाँ तुम स्मोक यूज करते नहीं थे, सिर्फ खाली डैश का काम है तुम्हारा खाली। फाइनली भाई मैं बहुत देर से आईफोन की रिंगटोन चेंज करने की कोशिश कर रहा था, हो गई थी। अरे मतलब अश्विन भाई प्लेइंग नैना इज इक्वल टू वरुण भाई प्लेइंग जेट। भी कोई नहीं है इतना भी यूजलेस नहीं हो। सी अरे सेज कहाँ है? सी फिलहाल थोड़ा हो जाएगा, चिल करो होपफुली। सी है बैकस्टैप जाना। हाँ बहुत बढ़िया। हेल्प चाहिए 78 One enemy remaining. भाई ओमन। अरे भाई मैं तो गोली चला रहा हूँ, मैं लेजेंड गोली चला रहा हूँ, मैं प्लांट तोड़ा मैंने। बात बताओ ओमन भाई, तू गोली किस पे चला रहा है? मेरे पे। तू भाई ओमन स्मोक में घुसा, मैं ओमन के पीछे घुसा, सामने 2 बंदे खड़े हैं, मेरे को अपना ओमन दिख ही नहीं रहा है भाई। ओमन ने बोला होगा ना, अच्छा मैं कल आता हूँ। Placing sentry. Placing alarm bot. Quick. Placing swarm grenade. ठीक कोई नहीं है फिर। अरे अश्विन भाई क्या कर रहे हो? खाना खा रहा है वो। ठीक है। ये किसको ही चाहिए? ये कौन थे दोनों जो खड़े हुए थे यहाँ पे? अंशुल भाई किसी को हील चाहिए? भाई तुम लोगों ने क्या बेट किया है? मुझे चाहिए भाई। लेफ्ट पे दोनों लेफ्ट पे। वाह भाई दोनों के ऊपर हक दिया भाई। लो है गन है। एस है। ओह अरे खाना खा रहा था यार, खाना खा रहा था। और मैं खाना खिला रहा था भाई। यहाँ पे जो ये और ये बंदे थे, ये कौन थे भाई?
भाई मैं 20 HP था भाई, मैं था मैं तो A main पे खड़ा था। तो भाई तो कम से कम मुझे इतना तो बता सकते हो कि भैया मैं खड़ा था A main पे, मैं A main पे खड़ा था, अंशु भाई के पीछे कोई वो था। अरे भगवान। Alarm bot out. Placing swarm grenade. Turret out. क्या हो रहा है? Calling my bot. कुछ नहीं भाई, तुम्हारा दिन करीब है, मुझे ये लग रहा है। Placing swarm. बस और कुछ नहीं भाई। आइदर गेको का ए पे। चलो देखते हैं पहले कौन मरेगा, देखते हैं पहले कौन मरेगा। कोई शक है? तेरे कोई शक है? रोटेट करो वापस आ जाओ। कोई साइड नहीं आया अभी, अब आया साइड। अभी भी कोई साइड पे नहीं है, कोई साइड पे नहीं है। गोली चलाने दो, खत्म हो जाएंगी इनकी। गेको है, बी लिंक गेको बैठा है। 145 सुनो 145 है फेड। क्या हुआ? अच्छा फेड कर, ठीक है। 145 फेड। रॉन्ग। तब भी घुस गए। One enemy remaining. 30 seconds left. कहाँ है मेन? हाँ मेन है। मेन पीछे मेन पे अभी भी मेन पे हाँ ठीक है Player भाई, ठीक standing. है। अरे यार कैरेक्टर थोड़ी ऊपर। Love it when वाह they make भाई। it easy for us. क्या हुआ शिवांग भाई, छोड़ रहे हो क्या दुनिया? क्या हो गया शिवांग भाई? हेलो शिवांग भाई, हेलो। गले वाले में क्या अटक भाई, क्या ले रहे हो? अरे शिवांग भाई के घर पे मैं नहीं था। Alarm bot out. Placing swarm grenade. शिवांग भाई जिंदा हो? हेलो। तुम्हें दिल्ली को क्या बुला लिया? तुम ये क्या करने लगते हो? एक मिनट रुको, क्या डॉगी के गले में? हाँ कुछ उसके शायद डॉगी के गले में अटका है क्या? अबे रुको, मजाक मत करो, रुको। अबे क्या है सवाल? Swarm grenade. क्या हुआ? Swarm grenade out. ऐसे नहीं होता। See ya. Enemy spotted me. ये है ना? ए रोटेट कर रहे हैं। निकल जाओ चट। नहीं ये क्या है? और रोटेट किया, वो भी रोटेट किया। अरे सी अंदर साइड के अंदर। भाई मेरी बहुत गंदी किस्मत चल रही है यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। Thirty seconds left. Spike planted. सी पे। हाँ see ya. देख के बैक स्टैप कोई वॉच कर रहा होगा शायद। सिटी पहुंच चुका है, एक सिटी पहुंच चुका है। Be faster. गन्स नहीं है उन पे, वैसे गन्स नहीं है उन पे। गन्स है। नहीं हार्बर ने ली है किसी की। मेरी गन है, मेरे पहुंच चुका था पहले। क्या? स्मोक है। Last player standing. अरे जहाँ डैश करना था वहाँ स्मोक डाल देते उससे पहले। नहीं भाई, वो बोला ना नहीं यूज करूंगा। अच्छा। इन ससुरों ने अपनी 2 अल्टे यूज कर दी जब एक बंदा हमारा एफके था। वाह। रक्षित भाई रेना में। सही बात। अरे अगर अपने पास सैचल होता ना तो गेको को सैचल मार के उसका वेट हटा देते। Placing swarm grenade. मैं तो कह रहा हूँ शिवा, ये वरुण भाई तुम यहाँ खेलो ऊपर यहाँ पे, Here. तो तुम भी भाग जाना Time for a सीधे। field test.
अंशुल भाई आप टीपी मार लेना वॉल पे अगर आपको लगे। नहीं मैं सीख रहा हूँ। हाँ सी है सी है सी है। भाई भाग नहीं पाया मैं। Bot recalling my bot. नहीं Stay down. Enemy spotted C. क्या लैग हो रहा है? Oh yeah! Monster on the loose! Spike planted. एक स्मोक होना। Reyna killed. One enemy remaining. हाँ एक बैक साइड सिटी के पास। फ्लैश। Placing sentry. अरे मैं मेरी बात देख रहा था। Healing you. Oh no. You don't deserve my inventions. Defuse the spike. ए Defuse the spike. तमीज। अरे यार एक्सेस रह गई। Probably best to play as a team. So, what's the plan? भाई पता सडन ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसा लैग हुआ कि मैं दीवार पे चिपक गया एकदम। पैकेट लॉस आया होगा। हाँ मतलब मैं पीछे आ चुका हूँ बट मैं एकदम देखा दीवार पे चिपका हूँ। हाँ वो पैकेट लॉस ही होगा। Alarm bot out. Placing swarm grenade. आएंगे तो मैं आइस करके पीछे हो गया। ये है। हाँ इधर है। Placing swarm किसी के grenade. माइक से डिस्टरबेंस आ रही है। गेमिंग। बी का दरवाजा तोड़ा है, केयर करना। रिजल्ट करके घुस सकता है। उससे नॉइज आ रहा है। यार म्यूट कर दो ना उसको फिर। Multiple enemies A. बी साइड है साउंड। Fire in the hole. Swarm grenade out. Found them. Swarm grenade out. ये ट्री में स्क्वायर करना है एक बार। BM Spike planted. अरे he's 80 78 One enemy remaining. Last अरे player 120 बिलिंग 120 बिलिंग। Shadows traveling. नाइस वन। भाई कसम से जैसे कोई स्ट्रेट ट्रांसफर नहीं हुआ काश घंटा मोटी मेरे पास मेरा आराम से निकल जाता। What will it be this time? Have any patterns emerged yet? अरे लैग उठा लो। तेज रेड सबका रेडी है भाई। तो उठा लो। हाँ सामने वालों को ना मिले तो ज्यादा ही ठीक है। उठा लो अश्विन। Turret out. Placing alarm bot. Placing swarm grenade. अबे तुमको यहाँ से कौन मारा था वरुण? कौन? यहाँ पिटरी पे कौन मारा था? अच्छा अल्ट मारा था। यहाँ कोई नहीं मारा था। यहाँ कोई नहीं मारा। अच्छा अल्ट किया था। अल्ट मारा था ना। हाँ अरे ठीक है। ए पे कोई साउंड नहीं है। सी में स्मोक कर रहा हूँ। बी के बाहर ही है। भाई गन दे दी भाई मैंने। कोई ना करो ना। 111 लेना चाहते। ए के बाहर 3 है। वो नहीं है उनका वो है सेव। ठीक है वो तो हरा। ए के बाहर 3 थे। 3 घुस गया एक। नहीं यार जी भाई। Last player standing. ऐसे ही बात है भाई। कुछ ऐसे ही। भाई नहीं भाई अगर कहीं पता होता ना मैंने देखा नहीं टैब दबा के सेव होता मैं तुरंत भाग के मारता। Recalling my bot. Spike planted. के पास गन से सिल 111 रहना। वो पीछे से आ रहे हैं। नहीं पीछे ऊपर चढ़ गए। ऊपर है। क्लोज राइट चेक करता हूँ। Reyna killed. ठीक है कमिंग
एक्सट्रीम लेफ्ट एकदम। अपनी अपनी जगह होल्ड करो, थोड़ा आराम से खेलो। और शिवांग भाई अपेरेंटली आ गया ना शिवांग तो। हेलो शिवांग। नहीं, वापस नहीं आया। कुछ घर में हुआ है सर। Placing alarm bomb. Placing swarm grenade. Let's go. मैं थोड़ा पीछे खेलूंगा, मेरे को साइड रेडी हो गई। Watch this. Placing swarm grenade. के बाहर और स्मोक कर रहा हूं। अच्छा होल्ड कर। आएगा नहीं फक। एक सेकंड दे रहा हूं। Enemy spotted A. The hunt begins. I suggest you move. हाँ यार टाइमिंग यार। Oh yeah! Monster on Spike the loose! planted. अरे नहीं यार, मेरे को मैं खेल ही नहीं रहा भाई, हद है। Last player standing. स्टेयर्स हैं तो। स्टेयर्स से आ सकती है। शिवांग भाई को फोन करो यार जरा, क्या हो गया? Pero like, why can't we just hug? आ गए शिवांग भाई, आ गए भाई। क्या हो गया था भैया? Can I get this? क्या गले में अटक गया था? आवाज कहाँ से आ रही थी बे? माइक खुला था। ड्रॉप दे दो। Placing sentry. Thanks. इसके गले में क्या? Alarm bot out. Placing swarm grenade. कोई नहीं, चलो आओ। सही है ना अब? सही। उधर खेलो, ये खेलो। क्या हो गया था? कुत्ते के पास गया था क्या? मम्मी की तबीयत वैसे खराब चल रही है। हाँ। Placing swarm grenade. ज़्यादा जरूरी है ना, तो Face your fear. अरे भाई मेरे मुंह पे घुस रहे हैं 5 बंदे एक साथ। तुम लोग हो कहाँ पे? Spike planted. एक लॉन्ग बैठा है। यहाँ पे रबल पे लेफ्ट साइड में रबल का राइट साइड क्रॉस कर गया। Last player standing. इसको रिवाइव करो। नहीं बैठी थी रहना ऐसे यार। समझ नहीं आ रहा ना, साउंड ही नहीं आ रही एक तो। मेरे को भी नहीं आई थी यार। One enemy remaining. 3 बुलेट। दोनों मर जाओ कोई दिक्कत नहीं, सेव करो आप। ऊपर आगे पहले। नाइस वन, मर गई। अभी तुम भी जाते भाई। Time to stock back up. बढ़िया यार। भाई यार एक बात बताऊं, मैं बी छोड़ दूं? बताओ मैं ए पे कंट्रोल कर रहा हूं। नहीं बी पे वॉल जरूरी है। Turret out. Alarm bot out. Placing swarm grenade. Keep it cool. That's how you survive. Placing swarm grenade. Somebody's there. कर दी वॉल तो कर दी। सब टैग हुए थे बी पे, ठीक है। Spike down. C. Spike down A. जा रहे हैं यहाँ से और लेके गया वो, ठीक है। ए आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि ऑफ नहीं लग रखी वहाँ पे। ए पे आ सकते हैं। ओमन अल्ट मार दे कोई दिक्कत। अरेना क्लोज था, निकल गया शायद। सेज गोलियां चला अपनी साइड। हाँ चलो सेज चलो। हाँ चला। सी पुश कर रहा है कोई। सी जा रहे हैं। नहीं सी रेना वहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया फिर वहाँ से।
अबे तुम जाके रिवाइव दे सकते हो एक को। वरुण के पास सेज। Enemy spotted. It's all you, little homie. 30 seconds left. डिटेन हुआ, पुश कर वरुण। Spike planted. अरे वरुण को कह रहा था मैं, यही डिटेन हुआ था सामने, निकल गया वो। Party's over. तुम सबकी कॉल बहुत बेकार है, तुम अपने फायदे के लिए खेल रहे हो सब। पीछे पड़ी है रेना हो सकती है बैकस्टैब, रेना हो सकती है अपने स्पॉन से आएगी रेना। हाँ स्टिक कर दो, कवर देना, बस कवर देना उसको। नाइस वन। भाई मैं सी साइड जाना चाह रहा था, सबने रोक के रखा यहाँ पे। अरे क्या बात करते हो अश्विन भाई यार, कोई तुम्हें हाथ से पकड़ के रोके है? और क्या अश्विन भाई, अश्विन तुम अच्छा खेले ना, बताओ तुम अच्छा खेलो, तुम अच्छा किए नहीं। Can I get this? ये गेम जीते तुम्हारी वजह से राउंड, क्योंकि तुम होल्ड करके रहे हो। शिवम बस चले। Turret out. भाई एक ड्रॉप मिल Placing सकता है? alarm bot. Placing swarm ऐसा नहीं है grenade. भाई। Can I get this? ऑप वाले ड्रॉप दे दो। Thanks. ऑफ मैंने से ड्रॉप किया खुद ही। अभी दिया था। अरे डिंग द रेस डिंग द हेड पड़ा है उसके। आने दो। मैं स्टेयर्स जा रहा हूँ। जल्दी। Spike down A. One enemy remaining. या Flawless. आज चाय करना है बॉयज, आज चाय। भाई अब घर पे गए। Last round before the switch. नहीं आ रहा वाला। तभी तो 15-13 किल पे चल रहे हो दोनों लोग भैया। अंशुल भाई तो मुझे लग रहा है 3-4 दिन से पक्का बहुत ट्राई हार्ड प्रैक्टिस चल रही है अंशुल भाई की। क्यों अंशुल भाई? नहीं भाई, ऊपर रहने के लिए ट्राई हार्ड प्रैक्टिस नहीं चाहिए होती भाई। किससे? That's my job. Turret out. अबे यार मेरा सेटअप नहीं लग रहा है। Placing sentry. कौन मरने वाला है? मुझको अंदर से फील आई है गट पिट। मैं बैक पे जाऊं? Placing alarm bot. Placing swarm grenade. Multiple enemies A. जैसे बैक से निकल जा। Kill my bot. गेको बैक से आ रहा है, गेको आ रहा है। मैं गया। Fire in the hole. Spike down A. अंदर आएगा नहीं, हलाना चेक करेगा। एक और क्लोज। हाँ चल लेफ्ट में। कोई नहीं। हाँ मर गया। रोटेट कर गए वो लोग। रेना उमन नेट मारते भाई, लास्ट राउंड है। तो मैं पे रहो, बी छोड़ दो, बी रीटेक पे खेलना। बी छोड़ो, बी रीटेक। The hunt begins. 30 seconds left. ये बी है, नहीं सी है। Last player standing. ये नहीं इतना टाइम लगा रोटेट करने में। अभी नहीं, वो रुके हुए थे बा। Spike planted. फेड बहुत नूबड़ा है आराम से, एकदम बॉटम फ्रैगर है, कुछ भी नहीं आता। भाई तेरे पास अल्ट टाइमिंग हो गई भाई। दोनों के, एक के 80 लगा, एक के 40। वाह भाई, Switching sides. मिल गई। बहुत बढ़िया। If you need help figuring out how, just ask. मैं आइसोलेट ही करना चाह रहा था ससुरों को कि एक का फाइट मिल जाता तो हो भी जाता। ए फेड इतना नूबड़ा, वो तो मैं मार ही नहीं पा रहा था। रेज नेट करेगा यहाँ पे। पहले तो फेड अपनी वॉल भेजेगा। Placing sentry. फेड भेजेगा अपनी। अरे स्पाइक दो। फेड नहीं मतलब इधर। Here. हाँ गलती से फेड।
अच्छा ये वो कॉम्बो है। हाँ जी वो कॉम्बो। कौन सा कॉम्बो है ये? वो पकड़ने वाला और नेट डालने वाला। Enemy spotted. Here. Okay. Reloading. Turret out. क्या तोड़ रहा है? बोल लेना मैं स्ट्राइक ले आऊं। हार्बर भी है। सी खाली हो गया, सी खाली हो गया, ठीक है, सी खाली हो गया। देखे यहाँ हार्बर है। अरे दो हैं यार। One enemy remaining. वही है, लिंक है, इजी लिंक है। लिंक अश्विन भाई आराम से हील दे दो। अरे वो भी पुश कर गया है, साथ में खेलो ना, साथ में खेलो। For you. इससे ज्यादा हील नहीं होगा, भागो। क्लोज बैठा हो सकता है राइट साइड। I have the spike. साउंड दे दो ये जाने की, फिर सी निकल जाओ शिफ्ट वॉक करके। टाइम है भाई, दोनों अलग क्यों खेल रहे हो यार? 30 seconds left. डरता है क्या अश्विन? भागना साइड पे। बी से बॉल आई है, बी से कोई दिक्कत नहीं, प्लान कर तो देखो। Here. Spike planted. अश्विन इधर आओ। यहाँ बैठो। क्राउच करके। नहीं इधर। ये सुनेगा ही नहीं, वो अपने आगे बोल रहा है ना, बैठ जाना रे। अब पूरी आवाज। क्राउच करके बैठे रहना। हाँ, थोड़ा आगे हो। बस क्राउच करके कर लो। अबे नहीं, अबे क्राउच करके बैठे रहो। There you are. क्राउच करके बैठे रहना। हाँ, उठना बैठना नहीं रहता है। हाँ। This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out. बढ़िया था भाई। पा गया तुरंत खोपड़ी पे टप से। वो देखो हाय राम वोल्ट 4 कर गया भाई। तुम तो इसको रेड क्विट करवा दिया यार। नहीं बे। Placing sentry. देखो चूंटी ने सीधी नहीं तो देख ले रहा। हार्बर था। Here. Stealing sight. Reloading. Here. Here. One enemy remaining. Flawless. Flawless. What did they इसे बैन expect? नहीं लगता क्या? अबे क्या हो गया? सही में चला गया? हाँ बे, बुलाओ अश्विन यार, तुम भी हम लेते हो बेफालतू। अरे यार सच में रेड क्विट कर दिया भाई। मैं तो जेन्युइन एक स्ट्रेटजी बता रहा था। हाँ वो सही में स्ट्रैट है भाई। लाउड है, लेकिन वो बंदा हमारा थोड़ा भाई है यार, हो जाता है यार। Don't let Harbor slow you down. थोड़ा लेट में चलेंगे, मेरे को फोन करके आया। हाँ भाई। मिस भी कर दिए शॉट, मरी भी नहीं, वो गोलियां भी डाल दी है। अरे नहीं अरे नाइस शॉट। हीलर अपनी तो है नहीं। अबे 101 यार फेड। अश्विन भाई को फोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। व्हाट्सएप कॉल मिला, व्हाट्सएप कॉल ही मिला है। हाँ अरे तो वो नेट ही चला गया है कुछ ऐसा। अबे नहीं यार, उसने बंद कर दिया नेट। रुको मैं नॉर्मल कॉल करके आया। Wait until I blind them to strike. मैं तो इको कहता लास्ट में बाय कर लूं क्या? हाँ सब बाय कर। क्या हो गया भैया?
अरे मेरे को सबकी आवाज आ रही, तुम सबकी आवाज आ रही है, मेरी वाईफाई का रिचार्ज खत्म हो गया, लेकिन मेरे को तुम सबकी आवाज आ रही है। हंस रहा है ये, रिचार्ज खत्म हो गया भाई रिचार्ज खत्म करे बैठे हैं। सुनो, अगर सेकंड भर में वापस नहीं आए ना तो परमा किक कर दूंगा मैं तुमको, इतना जान लो। अरे सुनो, मेरा वाईफाई का रिचार्ज खत्म हो गया, मेरे फोन का भी रिचार्ज नहीं है। पीछे लगता है जेट फिर से मरने की तैयारी। अबे यार फोन ही रिचार्ज कर लो कम से कम। अरे यार, अरे कर लो, मेरे भाई को तो सबकी आवाज अभी तक आ रही है, पता गेम में कुछ बोल ही नहीं पा रहा। स्पाइक है तुम पे। अरे यार कैसे लेते हैं भाई? अभी ये पुश कर गए यार सी से यार। आओ आओ आओ, कोई तो आओ साथ में यार। ठीक है आओ आओ, मैं मैच में हूँ जरा। One enemy remaining. केजे के पास स्पीड है। मोहम्मद अली मार के मेरी ऑफ पे आ भाई। हाँ सही बात है मिल जाएगा इस पे पैसा। भाई, इनका नेट ही गायब हो गया। परमा जेट बाइट है यार। Appreciate it. Flash is ready. अबे स्किन दो ना मैं अपनी। तो भाई सेल करो सेल करो। भाई तो ऐसे करो यार, तो क्या फायदा है एक्चुअली में नौकरी करने का भाई। अरे 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 तुम इतनी बुराई कर रहे हो HCL की ना, हमें तो लग रहा है तुम्हारा लेटर आने वाला है। भाई मैं रिजाइन मारने वाला हूँ, ठीक है। बढ़िया, सब तो और ही गजब है। मरेगा जेट मरेगा। Enemy spotted C. अरे यार ये क्या हो गया, मैं बेट हो गया। रेना बी से रेज और फिड एक खेलते हैं वैसे परमानेंट। रेस ही बता लास्ट अभी कोई देख लेगा बातचीत में। तुम खुद ही बता दो तुम कहाँ हो। पेट कह रहा, पेट डिटेक्ट नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लगा मुझे। I love this skin boys. टूटा भाई नहीं टूटा भाई। निकाल दूं क्या क्लच? क्या बोलती पब्लिक? ए अच्छा तुम खेलो अपना जरा। अबे वरुण भाई तुमने वो देखा था EG वर्सेस पेपर एक्स? अरे भाई साहब, अबे जो असेंट देखा था? तुम क्या कह रहे हो, पीछे से जो उसने अबे भैया मेरा दिमाग फट गया था। मैंने कहा ये क्या हो गया, और वो भी इतने बड़े स्टेज पे। हाँ 10 seconds left. आज किसको सपोर्ट कर रहे हो भाई? आज तो EG भाई। मैं तो पेपर रेक्स। नहीं भाई EG भाई, समथिंग इज अ प्रोडिजी। ये देखो अरे मैं मुड़ गई, वो मुड़ गई। भाई पता है तुम ऑफ मत क्या करो यार, पैसे बर्बाद करते हो यार। दो ऑफ भाई करो, एक रिक्वेस्ट करो आप अपनी। अबे रुक जाओ, अश्विन को आ जाने दो भाई, हार जाएंगे वरना मैच हार जाएंगे। हारना नहीं है। जीत गया यार भाई, खेला भी नहीं 4 दिन यार। यही यार चीजें बर्बाद कर रहे हैं। जैसे उस दिन चुपचाप नोएडा आ गए होते तो नहीं उधर दिल्ली आना पड़ता हमें। क्या? कुछ नहीं दिल्ली नहीं आना पड़ता। Time for a field test. समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? निकालो यार, रेस पे ऑफ है हम लोग। शिवांग भाई Variable 3. फेड पे ऑफ है, स्टेयर्स पे ऑफ कर रही है भाई। वो। मैं बताऊं सी आ जाओ। बात मन सी आ जा भाई। नहीं ये आओ, एक खाली है। ये आओ। रुक जाओ तेजी में कहां जा रहे हो? प्लांटिंग बस फ्लैंक देखना। Alarm bot out. Tell my bot here. भाई भाई के उधर को याद आता है क्या फ्लैंक? Area's clear. Turret out. The hunt begins. Placing swarm grenade. One enemy remaining. अबे भाई रेस को ऐसा चाटा पड़ा था बेचारा, डिलीट हो गया। Got it. भाई हमें ऑफ डे और हम किल ना करें तो भाई के मरने के बाद तो कहीं कर ही सकते हैं ना भाई। क्यों वरुण भाई? बिल्कुल
बिल्कुल 9,400 रुपए बर्बाद करने वाले एक किल की है 850 समझे। अबे भाई एएफ के था 5 राउंड 6 राउंड कम से कम, उसके बाद ऑफ एक किल किया मैं बता रहा 9,400 में। 2 राउंड की ऑफ का पैसा बता रहा है वो। ये फेड और रेज ने पुश किया है। ये पुश हो रहा है पुश। मैं बी वॉकिंग कर गया हूँ, ये क्लियर करना है बस। One enemy remaining. किल चोर Flawless. अरे बाप किल चोर भाई। मैं एक काम करता हूँ, अश्विन भाई से कह देता हूँ रहने तो ज्यादा मेहनत ना करो, वैसे भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। कोई कह रहा था कि 3 राउंड से एक ही किल आया, लो 4 बंदे पेल दिए हमने, और कोई सेवा था। 3 भाई 3 मैंने मारा। वीसीटी देखोगे अभी 12:30 बजे से है ना। नहीं अभी तो भाई आज वो चल रही होगी ना नौटंकी बहुत ज्यादा। अरे नहीं रिलीज दिखाएंगे वो सब। 12 से ही शुरू होगा ना मैच तो 12:30 से ही शुरू होगा, वही तो बात है। अरे यार क्या बात कर दी वरुण भाई तुमने। अच्छा भाई मुझे नहीं पता। हाँ भाई 12:30 से स्ट्रीम तो बहुत 1 घंटे पहले से चल रही है। ठीक है भाई ठीक है भाई। Placing sentry. Oh yeah! Monster on the... Enemy spotted A. Watch this! Spikes down. I suggest you Alarm move. bot out. Wait, Huh? really? One enemy remaining. Face your fear! Yeah. Flawless. Attackers मैं win. जो ट्राई किया है राउंड नहीं खत्म हो जाए भाई। Blocking sight. बढ़िया देखो ना जैसी अटके पाट गोली पड़ी बगल में खड़ा था मैं इसके। बताओ। अबे गेको ने अल्ट किया गोली पड़ी, हार्बर ने अल्ट किया मेरे टर्रेट ने मार दिया बेचारे को। हार्बर को लाल करके भेजा था ना भाई मेरा फिर से रैंक अप नहीं हुआ। कितने पे रोक दिया तुमको? 90 पे। मैं एएफ के था ना भाई। तो जरूरी है भाई। चलो गाइस भाई तो जा रहे होगे, मैं तो जा रहा हूँ मैच देखने भाई। तुम लोग खेलो। क्या करोगे यार लाल देख। भाई पहले ये तो देखो चल क्या रहा है स्क्रीन पे। भाई रुको अभी देख के आता हूँ, बताता हूँ तुम लोग को क्या चल रहा है तुम्हारी। अरे मैं ऐसे बता। अरे उसकी नहीं थे। अबे मैच शुरू हो गया है बे, तुम लोग कैसे से हो भाई? कहाँ मैच शुरू हो गया बे? अभी कहाँ शुरू? नहीं अभी नहीं शुरू हुआ। वो तारीख में कुछ और उल्टा सीधा दिखा रहा है। भाई अभी टॉस भी नहीं हुआ पता है। कुछ नौटंकी चल रही है अभी तो। भाई अभी टॉस भी नहीं हुआ है। टॉस 18 मिनट तो ऐसे ही है बच्चे। अरे 18 भाई बोल तो रहा हूँ 12:30 पे नहीं शुरू होगा। 12:30 पे सारी टीमें आके बैठ जाती, उसके बाद से सब चीजें होती हैं। हाँ भाई 17 मिनट 50 सेकंड तो अभी दिखा रहा है। हाँ तो भाई अभी टॉस भी नहीं हुआ, उसके बाद टॉस होगा। हाँ उसके बाद हाँ उसके बाद सिलेक्शन होगा, फिर एंट्री होगी, फिर बैठेंगे, फिर एजेंट सेलेक्ट। भाई अभी एक मैच और हो जाएगा। तुम लोग खेलो यार, एक मैच अब मेरा हो गया है, तुम लोग खेलो। अब तो तुम लखनऊ में हो ना, डेली खेलोगे ना? हाँ तो बस ठीक है, फिर कल आओ फिर जल्दी थोड़ा। बस जल्दी नहीं आएंगे इससे वजह। चलो तो कल लंबा खेलेंगे फिर आराम से। हाँ पर तो ऑफिस है साले, जब छुट्टी है तब लंबा नहीं खेलना इसको। अबे ऑफिस तो वर्क फ्रॉम होम ही तो है। उठना तो है भाई, सुबह सुबह स्टैंड अप हो जाती है मेरी। अरे बताना रहता क्या किया मैंने। हो दिया भाई वो सब ठीक है। भाई वो लोग ना बोले जो वो महीने में 2 बार ऑफिस आते आ रहे हैं भाई, रोज आ रहे हैं। ठीक है आ रहे हैं रोज। ये कौन सा रोज है जो आ रहे हैं? जो सितंबर तो अच्छा चलो भाई ठीक है, मिलता हूँ सबसे कल। गेम खेल के जाए। ना माफ करो दादा, मुझे माफ करो। कल मिलता हूँ मैं, ठीक है? बाय 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 बाय। लगाओ भाई वरुण भाई। Lotus for map number 4. PRX side on Lotus. Attack.
attack, and map number 5 by default will be Pearl. EG, side on Pearl. Defense, please. Defense. All right, let's run back through this, make sure we're all set for grand finals. PRX came in with both bans. It's Haven and Fracture. Map number 1 is Split with EG on defense. Map number 2 is Ascent with PRX on attack. Map number 3 is Bind with EG on defense. Map number 4 is Lotus with PRX on attack. Map number 5, Decider, is Pearl with EG on defense. Good? All right. Good luck to you both. Thank you. Let's get it. Go. Oh, that is a juicy map pool, but also good to see CGRS as well. Yeah, good to see him in the mixer for a moment. I don't think this should be surprising. Potter was talking yesterday in the press conference about how she thought it was going to be those two maps, Haven and Fracture Band. It's the same exact pool that EG played in the lower finals against Loud, but I think 15 minute है ना मैं आया 15 minute में because Fracture the best map for EG and Haven PaperX never likes to play that. I love how PaperX approached this veto. They went straight for the hurt knee like a fighter almost, right? Going after Split. That's where EG is 0-2. That's their weak point of their map pool. Map 3, Bind. We saw EG struggle a little bit on Bind, and they saved Pearl for last. That's a map PRX is 5-0 on in this tournament. You would say it's their best map, and they're saving it for last. 5-0 on it, but it was one that EG let slip away from them. They were on the cusp of being able to close that one out. It was 11-6, the advantage that they had, and then it went into overtime. So if it gets there, both of these teams you would suspect are looking to improve on those weaknesses that we did see in that series. The Ascent that got away from PaperX, the Pearl that ended up getting away from the side of EG. So I think that this is going to be a bloodbath, and like we were saying before, I think it's going to be a 5-mapper. Yeah, we've seen today's maps, but it's time to get a glimpse of the future. Let's get our first look at Valorant's newest map. There we go. I was blind. Kingdom. They said they were making the world better. Safer. Bullshit. This is what they've been after. You three, shut it down. Reyna, on me. Yo, Wings. It kind of looks like you. It's encrypted. Identification needed. Wait. Can I, borrow this? What? It's just a thumb. Oh, du kommer til å kaste oss ut av system. We have to shut it down now. Damn it! Ugh. Wait. This can't be the only way. Are you sure? What if you can't come back? Come on! Just trust us! Wings is different!
distraction. Fumbling in the dark, grasping for something to stop the bleeding. The truth is, our world will never be safe until we deal with the real enemy. Touching down at Alpha Radionite location. Them. Look this way, look at me now. This free game, I'm breaking it down. If you want it bad enough, you'll find a way. If not, it's easy to find your way out. Been running around with a chip on deck, making it happen, not what they expect. They gon' start hating when they see the check. Don't need you to like me, but need your respect. Too many went fake on me, too many went waste on me. Run around, throw the snakes on me. Say they ride with the brakes on me. Too many went fake on me, too many went waste on me. Run around, throw the snakes on me. Say they ride with the brakes on. They picked the wrong day to mess with our world. Eagerness will undo them. Keep your guard up. That is right, everybody. Sunset is going to be coming to Valorant, Seth, the latest map of the game. What did you make of that? I love it. I mean, you know, we have to see a little bit more. I can't wait to get my hands on it, dive into this one, and see how everything's going to be playing out, what kind of angles you got to play around. But, I mean, we just continue to do excellent jobs when it comes down to these trailers. You can hear the crowd going absolutely wild when they thought Wingman was going to sack himself. But, of course, they're not going to kill him off. No, and yeah, the map is just absolutely gorgeous. It's literally like a work of art. You look around the map, it feels and looks exactly like Los Angeles. And the way the map is designed, I think this is going to be one of the best maps in the pool. I'm going to be quite real with you, Yinsu. I played it on like Wednesday, and it's insane. It's a gorgeous map, and it plays really well. It's a map that What's the meta? What's the meta, Sean? Set There's going to be a lot of mid control. I mean, it's a map where there's no gimmicks involved, and there's a heavy mid, there's 2 sites, and the sites are perfectly designed. It's a great map. High praise. Yeah, the vibe from seeing it almost feels like it's like another Ascent, like another just like good, honest map that is going to be super consistent. I'm just always excited to see what the teams, what the players can cook up with to try and figure out this new map once it's released. It's going to be a Yoru map, you think? Every map's a Yoru For map. Sean, every map is. Come on, every map. Give him a buff though. Yeah, no maps are your map. I need you to give me the leaks here. Like, what agents should people be playing on here? What would you suggest? I think you can get away with a lot. I think double controller will be pretty strong, like on most maps lately. But Breach looks like could have a lot of impact. There's low ceiling, so honestly, even a Gecko could fly. Like you could do a lot of cool stuff on this map. We're gonna see a lot of agent diversity. Well, I can't wait to see that. We are taking a quick break here, but after we will talk to Riot Games' co-founders Mark Merrill and Brandon Beck. So do not miss it. More Champions Los Angeles will be back right after this. And welcome back. These two gentlemen met in college. You guys,
this would not be here today if it wasn't for these two gentlemen, the co-chairmen and co-founders of Riot Games, Mark and Brandon. Welcome. So in the opening days of Valorant, when it was first in development, did you ever imagine this? Like all of this today here in Los Angeles? I mean, you kind of dream about it as a possibility, but you know, it feels so remote and distant. So yeah, we're kind of pinching ourselves. Do you have any additional thoughts on that? You know, we always hope that the game will earn the respect and appreciation of an audience, and you know, it's just incredible to see, and it's incredible to have it here in LA in our backyard. I'd love to get both of your thoughts on this. I think you guys have seen how the game has grown and the sport has grown to such tremendous heights in such a concentrated period of time. What's it like to watch this game create such a welcoming space and such like a big community for anybody and everybody that could possibly want to be involved? You know, I think it's a great testament to what Riot's all about. You know, our goal as a company and as devs is we're trying to make it better to be a player. And there's so many different ways that can manifest. And, you know, but it's you never know, right? It's always great to see, you know, players attached to something that you pour so much heart and soul into. And, but the community is amazing. I mean, we just look around and walk around, you know, in all over the world, and players are just having a tremendous response to Valorant, and we couldn't be more proud. Now, before Champions, before this gold carpet, long ago, it was just an idea. After the League IP, how did the process of, you know, sparking Valorant come about? Yeah, look, I think when we start a game, there's always a passionate group of people that are deep fans of the genre and the experience. And, you know, when we started the project, League was the only game we ever made, so we'd never made a shooter before. But a ton of us were big tac shooter fans and had inspiration from games that we've played our whole lives, like Counter-Strike, and wanted to, you know, take a crack at building something in the space that we love so much. And so you got a bunch of talented people that came together with that dream and a passion for things that they wanted to add to the experience in the genre. Now, I do have to ask you, any final thoughts before we go into, you know, the greatest show of this year? Oh, I mean, just ready to have fun. Like we're stoked to be fans and sit in the audience and cheer, and hopefully have a great match. I want to put you guys on the spot, right? I'm going to ask you to give me a glance into the future, right? How do you see the future 5 years down the road, maybe? What do you see as the future for Valorant and for Riot as a company in particular? So, you know, we really believe Valorant's just getting started. And, you know, there's a ton of cool ideas that the team has, a lot of features we're working on, a lot of content, different ways to expand and evolve, not only the game, but the franchise. And there's a lot of cool things that we have cooking at Riot. So, you know, Arcane Season 2 is going to be really exciting. You know, we got other great games in the pipe. You know, League has a bunch of momentum with Arena Mode and the cool Soul Fighter event that we just did. And TFT is, you know, something that millions of people around the world are loving. And there's awesome events that are coming up to sort of keep growing the TFT scene. And we just announced Project L, which is our fighting game, you know, over at EVO, and we're really excited about that. So, and there's a ton of stuff in the pipe we can't talk about either, but there's just always cool things that are cooking at Riot. So, always just trying to figure out ways to add value to players out there, and hope that we can do justice to their incredibly high expectations. Well, I think I can speak for everyone who's listening and everyone who's watching who's a fan of Riot Games when I say I'm very excited for the future of Riot, very excited for the future of Valorant. Gentlemen, thank you so much for the time. We're going to let you guys go. Enjoy the show. Enjoy the opening ceremony. It's been a blast. And that's actually going to do it for us here at the Golden Carpet. It's been so much fun. Thank you all for joining us. We're going to throw it to the desk one last time for closing thoughts before the grand finals begin. Thank you very much, Doug and Victoria. We have come such a long way. You guys heard them talk about the beginning of Valorant, but this is going to be the third Grand Finals of Champions. Sean, we are going to have a win to Ascend before, a win to Loud, but who's going to take it today? I've been telling people all day PaperX is going to win this series, but I'm flipping the script, actually. After seeing the veto, thinking how this is going to go, I think we're going to go to the 5th map. I think it's going to go Pearl, and I think EG is going to play double Initiator and win this series. Woo. Okay. The crowd liked that one. The crowd liked that one. They did. All right, Seth, what you got? I think that there's not going to be much surprise as far as my opinions on this matchup. Bustio said that China would never be better than North America, but he didn't mention anything about Indonesia, about Singapore, about Malaysia, about Russia. PaperX are going to come out here. They're going to W Key Gaming all
go for this North American squad. They're going to send them home packing, and they're going to be lifting that trophy as the first Pacific champion. I don't know if you can go home if you're already in front of a home crowd here, guys. Evil Walk down the Geniuses are comfortable here. They have come so far to this moment in the grand finals of champions, and I think this is the moment where EG is ready. I believe that EG is going to take this one home. Okay, I'm going to balance this out. You both went for EG. I'm with you here, Seth. I'm with you. I think Jing's last tournament, they've never lifted a trophy before. They came close at Copenhagen. With something in the squad right now, it just feels like their time. They came through the upper bracket. They got the ban advantage. I'm with you, Seth. I believe in them, and it's time to get this started. It is Paper Rex versus Evil Geniuses in a best-of-5 series for the crown. One last series to end the year here in LA, and it's time for the Valorant Champions Grand Finals to start. Everyone, give it up! I don't know what you've been told, but I'll be insane not to play my role. Yeah, I know I can break a fall, the stakes are low. Know that I got a hand that I can lend you. No matter when or I'll protect you. Call on me, whenever. Rated in 1, but 5 is better. Know that I got a hand that I can lend you. No matter when or I'll protect you. Call on me, whenever. Rated in 1, but 5 is better. Oh, you think you tough, huh? I did that sound lightly. You can keep on looking, but can't find nobody like me. Eldorado pussy, boy, I'm faster than a white tee. You know I love you, I need someone who can guide me. You know, a little bad, I need 3 mil. Going in both directions like a B-real. I been eating good, and we lucky to get 3 mil. Run it up, it feels like you. It's like you. You know that I got a hand that I can lend you, and it don't matter when or I'll protect you. Call on me whenever. Rated in 1, but 5 is better. I got a hand that I can lend you, and it don't matter when or I'll protect you. Call on me whenever. So rated in 1, but 5 is better. Where you been? I'm back, let's bump that. Got a phantom in my hand, I'll clutch that. Got an agent on the, got a loop back. Shall we send my arm down with the 5-star? Where we been? I don't know, going downtown. Got the city lights, here like a ghost town. Got the butterflies, having all spooked out. Cause we got radiant nature, better bow down. Whoa, you from a nigga with the no. I'm with the alpha and you know. Don't make that ticket spike sound. Put that away, you'll hurt yourself. Be an anchor, let it all come your way. We got plenty for you, boy. Just if we got share, it's no sorry, I boy. Get the venom, had gone to the venom world. Who's there? Know this? Ooh, when my back's against the wall, all the
you out with another spike drop. Overheated, but I love to lock and load. I hear the echo, I hear the echo. Bang, bang, run it back. Team with the rush attack, all day. Enough with the chit chat, steady with the one tap. I'ma set it up, just wait. Oh, era una mea con la oh no. Porque la alfa soy yo, go. Vete, vuelve cuando no estoy y así desapareció. Oh, como pienso que no traigo la peña, la del shero pelo. Llama chatarrero que se bate rico, por lo que dejaré de ti por el suelo. When my back's against the wall, all the mirrors will dissolve. Bring the heat and bring it on. Watch me ignite it. We're from different worlds. Mirror, mirror, eyes. Can you feel the burn? Watch me ignite it. Now there's only one thing I can do. Fight until the end like I promised to. Wishing there was something left to lose. This could be the day I die for you. What do you see before it's over? Blinding flashes getting closer. Wish that I had something left to lose. This could be the day I die for you. This could be the day I die for you. I need to keep you around with my feet tied, tied to the ground. The end's nowhere to be found. I don't know why you don't leave me to drown. Oh, don't know where to go unless you say. Don't know what to do unless you stay. Thinking that today will be our day again. Let's get it, win it, lose it, either way and there. Got an attitude, I'm out the roof up in the air. This round I make it count, yeah I'm talking right now. Feel let it come back, kid, got no time to spare. Whoa, double up the score, turn a 2 to a 4. You know I win it like, gotta win one more. On a hot street, never gets old. Solo with the ace, so my team went gold. Why am I playing with time as it's ticking away? It's ticking away, away. I'm asking why we run for our lives, not a second to waste. It's ticking away, away, away. LA, make some noise! Ticking away,
I'll give it one more try. I don't know why, but I keep coming back every time. I want it more than my life. I don't know why, but it feels so right. Why am I playing with time as it's ticking away? It's ticking away, away. I'm asking why we run for our lives, not a second to waste. It's ticking away, away, away. Ladies and gentlemen, it's time for the Valorant Champions Grand Finals! Now I have one question for you. Are you ready? No, I think we can do it better. I want to hear you loud and proud. Are you ready? Let's welcome your two finalists, Evil Geniuses and Paper X. First up, it's Jing! Giacomo! Mind Freak! Ethan! Forsaken! And Demon One! Coach Alex! And Potter! Honestly, at the start of this year, I kind of already had an idea that this might be my last year playing. Everyone in Singapore has to go to the army, and I'm of that age right now. Of course, I'm scared and like anxious. I don't know what's like waiting in front of my life, but I just wanted to give it my all, like really all, so I wouldn't have any regrets. Jing holds the line. Jing, and the transfer comes in. The defuse is there, and we are not done yet.
everything was like surreal. I would have never expected to be in the grand finals of a Champions. It feels so impossible sometimes just to play rounds against them. You have performances like that. What does that do to the spirit of the team from having, lost such a close game? It's just always like a humbling experience. But this year has been about second chances. No one expected us to be here. It really shapes your mental. Going through all those ruts. Don't think about what these people online have to say. Just enjoy it while you're here. As long as you do that, you can have no regrets. Evil geniuses pulling off once more, a bit of a repeat of history. We've had so many second chances this year, and we've always made sure we take full advantage of that opportunity. Copenhagen, it was like our peak. There was a world where we actually won the grand finals. Champions, we bombed out, we didn't even get into playoffs. Lock-in, we lost first round. It was like rock bottom. It was like a really big moment for all of us, so I think all of us really woke up. We went from a team everyone counted as down and out, and we became one of the best teams in the world. But there's always something to be better at. So having that sort of support behind me is just like undescribable. Before I joined PaperX, I was like really quiet and I was always like just doing my own thing. But now, I don't know, I just feel like I've grown a lot to become like a better person. This core has been together for so long, but that big global trophy has always eluded them. But you gotta think this time around, this is their chance. It's more than just trophies. Like we need to grow up as good people, and we need to just have as much fun as we can. It took a lot to get to where we are, so I want to be known as a hard-working team. But be free and have fun. That's what we're going to need to win the grand finals. I give my heart and soul. I wear my heart on my sleeve no matter what, and I'm gonna give it my everything to beat PaperX. If this is my real last tournament and I never come back, I'm just proud of everyone in my team for going through this journey with me. I hope the fans just remember like this era of PaperX. But if I win, I think it will be a really great ending for me. The rest is history. Just one more series to close out the year. History is going to be made no matter what happens. EG or PaperX will lift their first ever global trophy right here in the Kia Forum. And Mimi, you saw it in the trailer. You see what it means to the both of them. It is going to be a crazy and emotional series. Both these teams have had a core that have been together for years, that have been grinding it out regionally, waiting for an opportunity. They've both been in a final before, had an opportunity to win a global trophy, but it eluded both these teams. And it's one more chance this year. It's the last game for Jing with this iteration of PaperX, and it's EG's last chance to complete their Cinderella run, to go from that team that no one expected to do anything to a team who could be the world champions. That's the thing, it's the largest stage to try to get it done. That much more pressure, that much larger of an audience, that much more pomp and circumstance to get themselves up here onto this stage, into this moment.
I can't imagine the pressure that these players have to be feeling coming into this one right now. We know that these are both teams that love to say it's all about having fun. We want to go up there, we want to have those good vibes. We want to just have fun and not let the pressure seep in. But you all people know, Sean, that is not impossible to lock out. You can't block everything. No, and that's why they took that team huddle. Both of these teams, so much similarities, right? The coach having so much control over the team, the innovation we're seeing out of both of them. They both brought in star duelists in the middle of their seasons. The similarities are honestly, you can't stop. These teams are so alike. Yeah, let's talk about those two coaches, because you guys heard that when Alex and Potter walked out to this crowd, the cheers, the love that they received. I mean, for Potter especially, both of them used to play on the teams they currently coach, but a lot of people doubted her, Mimi. A lot of people criticized her, but she's answered back and she's proved why she's one of the best. EG is now the team leading the meta in a lot of ways in this game. They are one of the best in the world, and Potter has been there since the beginning. She was playing on this team, like you mentioned, when EG was first signed, and she's been there, has made the hard choices, dedicated to cutting BCJ, to picking up Demon 1, to taking all these risks to get this team to the position they're in now. But it's the same case for the other side. Alex has had to make those
operator is kind of figured out the right time. Like I said, with PaperX desperately trying to create a little bit of pressure towards 8. I mean, you see what the byproduct is. Colin Busio actually go exploring on B main. They're trying to force somebody to peek into mid. Yeah. Create an opportunity elsewhere on the map just by showing a little bit of presence. Obviously, it's difficult then if it's not Ethan on the other side of the map to really send out any utility to garner some information or even set something in motion with a flash. We can see if there's a play to maybe get Jorgamo up on that ult here. Let's keep that in the back of your mind, but again, they did get that operator back. You're starting to see the money not fully stabilized, but in a far better spot for PaperX than it is EG, so they should start carving away at this. And you can see maybe they're aware of the intent here. PaperX waiting this out, not falling foul to any of it. The flash is going to catch and should give away the game. Jorgamo he's still alive. What? Got 2. That's a classic! That's a classic, and he's found 2. That's obscene. But now it's down to Ethan and Demon 1. Sheriff and a classic and a flash to play in, and that's about it. Demon 1 going to be jumped. Oh, what? Out of this world from Demon 1. This is finally put to bed. But that was far too dangerous. I kind of want to see every single kill that just happened there from EG. How did Jorgamo get 2? Jorgamo 2 with a classic. Demon 1 shoots the Sheriff out of his backside, apparently, to catch something in midair. Oh. Mine don't do that. What is this, though? Whoa. Oh. What? But it's still around for PaperX. All of these, I feel, are going to be like this, right? Such violent delights when we watch, but PaperX now chipping away and creating a little bit of space on the board here. 6 rounds to their favor to the 4 of EG. They're starting to stabilize into the game, but I feel it's going to be this high-octane form all the way through. You better be careful. Well, just on that point, though, you're saying you're expecting this, but for PaperX, this is sustainable, right? For EG, is it? That's the question. Can they really commit to this sort of play style? Because this is playing into a PaperX style series. Yes, it certainly is. So Divide going to go through, a little bit of a scrap over towards A, but it's kept 4 players here. You've got Forsaken commanding the attention of 4, and this Bustio's now all heard the falls steps. to Bustio. He's calling for support, he's calling for help. Can he slow down the roll? He's trying to. All that utility he's investing is just trying to buy seconds. Rotations in, they're backing away. No way. I mean, how much space does Forsaken get here? 36 HP. Ethan, does he slip back on the elbow? He's spotted! But the flash, he's turned it, but he's still giving away. What a shot from Forsaken! Creating all of this room, and they are running 30 seconds. Jorgamo is here with a showstopper. Forsaken, yes, has the sight, but look at the space that Jorgamo's taking. This is going to be so deadly. He's ready to just satchel here. Here he comes. It's all about timing. Bustio's taken away something. They're on the site. Jorgamo sends it. Posts it, doesn't get it, but he does take down Mind Freak. Great trade from Divide. Now maybe they can plant. This has been, once again, a mental round, but a 3v2. शिवांग भाई आओ देखा जाए साथ में अगर जगह रहे हो तो way over, but Demon 1 hasn't left Kevin. The timing on the double swing is divine, and that is perfection from PaperX. And this is the sort of thing when I talk about sustainability. Can EG constantly come up with this, the troubleshooting on the fly, problem solving? It doesn't even really fall to Bustio. It falls to these individuals on EG to make the right decisions. Perfect example, Jorgamo there with a showstopper. Again, what do you choose? There is no clear choice, a bit of a Sophie's choice if anything, but now we're looking at the Seekers being there for Forsaken. That could be right off the rip, but it looks like they want to go head first into this. EG, are you going to try and stand and fight this Demon 1? Going to be forced off. Trying to spam away those Seekers, but do they springboard quickly? Spam going to connect, and that's a problem for Demon 1. Falls away on 42. You can see, yes, damage to something on the other side, and that paint shell could become pivotal. Oh, went near to catch him with a spam as well. No harm, no foul just yet. PaperX getting themselves ramp control. EG still in control of the site itself. Again, device set up to try and catch an overpeak elsewhere, something alongside him in mid. PaperX have been given access to vents, actually, so a very easy opportunity here to regroup. PaperX waiting for someone to play into this. The pivot's happening. Straight through middle, going back towards B.
Jorgmo yet to adjust. The flash might send him हाँ towards भाई it. देख रहे हैं आओ It's going to connect for Con. Discord पे आओ Tries to slow it down himself. Falls away towards the site. Allows Bushi to get the play in, but it's Forsaken. Breaks in like a thief in the night. Paper X. So clean on these site takes. Plant's going to come through, and EG, the last three were a mile away. Yes, Jorgmo got there, but he's got his work cut out. Snakebite to slow things down here. Jing still looking to get aggressive. 1 kill away from the showstopper here, but the flash is perfect. Jorgmo finds it, but he's shut down by Forsaken. And Mind Freak's timing is just gorgeous to witness. 8 rounds for Paper X on this half. 4 for EG. A little bit of comfort Paper X found in the latter half. The opening here on split. Like I said, there was resistance shown here by EG, showing that they're happy to go toe-to-toe. But like I said, once Paper X get a feel for it, a read on the game, how these rounds are playing out, in this sort of playstyle, that's where you expect them to excel. Thank you very much, guys. What a start it is already to this grand finals. Paper X, they're leading at the half. But let's take a look at the Verizon high-speed moment here from Demon 1. Mimi, we knew this matchup is going to be high-speed, and we got a treat to kick us off. Yeah, we did. I think that EG switching over to the double duelist comp was a good idea. It's a lot more comfortable for them. And they showed this early on with some of these Flood retakes. This round was entirely Jojimo and Demon 1 working together to win things out on the retake. We saw throughout the half how strong these two players were, but it really was just these heroic moments that were winning rounds for EG. Yeah, and this brought them at 3 rounds, Mimi, out of their 4. It was 3-3. The only other round they got was that Viper's Pit round where I think they got a little bit fortunate to win that 2-on-2, Seth. Yeah, Mind Freak trying to get around the pillar, but the timing comes in. Demon 1 manages to nail the shots and takes him out. I mean, this is a fantastic display here. I think the real high-speed moment is just the build time on Jogimo's showstoppers, because the guy had these so rapidly, 2 within the first 6 rounds. This was an incredible one for them, but it started getting away from them. Last time they played against each other, they did play Fracture. Last time they played against each other on Split, it was an 8-4 half for the side of EG on the defending half. They started off really strongly. This time, not so much. Yeah, and I think it's especially impressive because I don't feel like the Star Duelist players for Paper X have had nearly as impressive a start to this game. They tend to take a little bit of time to warm up, especially for something. And while there were great moments in that half, I was more impressed with the consistency with the Paper X site hit finding success, and as well as that, in these late rounds, the clutches that continue to be excellent from Mind Freak. Well, Paper X, they have the momentum here, but let's see what things are going to unfold as we switch halves. Back to you, Pansy and Hypok. Thank you, and yeah, at 4-8, this is a fantastic start for Paper X. They've done what is required. They've got that first real half under the belt. You can see the succession of rounds is near on a streak. There was a couple that offset it for EG, but EG were in the fight, but I think you said it right. Do they have the ability to continue at this pace? Because Paper X aren't going to slow down. Definitely not. You know how proactive they like to get on the defense as well. EG, though, stacked up. As 4 into B main. All good, all just good. Syscom disconnected here, no surprises. But this is just a post-Demon 1 up here. They're actually going to regroup as 4 into mid. Okay, let's put something on the chopping block, and that wide step out has got him dead. Big start for EG there. Frenzy. No chance of a trade and still above a minute. हमारी frenzy तो ऐसी नहीं चलती. Did spot multiple though. Problem being, Paper X still holding on to utility here for a contact play in B main. Jeez. Char. Well, the timing is absolutely devastating. That's heartbreak. Oh my god, EG. You couldn't ask for a better beginning. Forsaken could maybe do some damage though. Good flash, and he tries to look his next step towards the other side of Pillar. Catch someone on the push-up, and he's trying to do damage, but it's just not landing. EG swarm the site. They should have enough for a plant here. Divine looking to maybe get a little ahead of that. No. Does he want the smoke? Yes, he does, and it doesn't matter. EG with a pistol under the belt here. Going to get themselves a chance to close that scoreline up. There's a couple of heartbreaking moments, split seconds deciding this. The overstep here from something, dash bombed, obviously no chance to retreat from that, but and then Mind Freak just slipping into Astral form at the worst possible time. EG pounce on the opportunity, a pistol round on the board here.
And I've got to say as well, just a side note, almost sidebar, Jorgamo is having He's nearly on 20 kills. He's having a game. Looking like Jing wants to get himself working towards that showstopper nice and early. And a pace change for EG after a very slow, meticulous start to the pistol. They've shifted gear a little, looking to try and test or at least posture towards middle at the very beginning, taking over towards the top side of things to four. Oh, come on! This guy is literally inhuman. I don't know what this man is made of. It's just ridiculous to watch him in certain situations. Sure, anti-eco, I don't care. Who cares? It's so clean. This was the map that gave him the title of the new King of Hell, and you might be seeing it again. The guy's aim is off the charts. Gonna find something. A Mind Freak. Well, he's in spawn, so that's quite a ways away. Looking to potentially get the plant. Yeah, going to be building up the showstopper again with the plant coming through here. Just still being careful in case there was someone waiting behind those screens. But Com, all too aware, you don't get to flank the flanker. Com's going to find him. Prime Gaming flawless. Moving forward, and Demon 1 warming up. Just filthy. Oh. Kid's a real talent. Yeah, same. Brings the scoreline within 2 now. Paper X still leading. Evil Geniuses with a good opportunity here in the bonus as well. It's well fleshed out. Well, compared to the first. Jorgamo, right off the rip. Up towards ramp, he does have Ethan not too far away, but look at the spike and look at the player on the other side. It's going to be something. Jorgamo can split mid here. They aren't actively playing towards vents. It's on something's shoulders, and he shoulders it so well. Perfection. Couldn't quite outdo Demon 1 in the upgrade. I don't know if it is in his hand. There's the control from him right back at you. But the problem is they are still a player down. It's a 2v3. This is not easy. And Ethan couldn't really find any space on the other side of things either. Still kept in check by Forsaken on A site. Team 1 has to come across this way for the heal regardless. To try and make something work. Charge on Demon 1. 1 kill, we'll have the Blade Storm here, but perfect timing on the flash. And look at this angle. Oh yeah, that's real. Wait. Well, don't keep Demon beaking him. Demon 1's got knives. And 3 kills. And 3 kills. The chance for the ace here in round 15, Lauren. 35 seconds, are you kidding me on this one? He's been heating up to this the last 60 seconds or so. Feels like fate, but again, it's Devi, it's Jing, come on. Surely not. 25 seconds, he's not being entertained. He's not being given these fights. He's gonna have to fight for them. Jing, looking like the timing's right. Yes, it is. Safe pair of hands. Vapor X weather the storm here. And leave Demon 1 out to sea. 6-9. Vapor X picking back up now. Forsaken's going to struggle in terms of the purchase here. See how things... Actually, yeah, Jing I think forfeiting a shield or something else along the way to get Forsaken a rifle in hand. We noted it, Demon 1 up to 15 kills now. Boost your bomb. Blade Storm. Let's go. EG maybe looking to pop once again towards ramps. Well, be careful, you can see a little bit of a trap sent there. Demon 1 caught a pixel out of place, but no. Paper X keep themselves safe. Play a little bit deeper towards heaven. They allow the access to the site. When do they fight back? That spike is going to make it across before they're able to swing towards ramp, so it's going to be common, maybe Boostio, to deal with the pressure, unless they get ahead of this. No one's checking. No one has checked on this. Does Forsaken just go? Does he take the green light? They might note Jing, but maybe not. Oh my god. They both slipped through. They've slipped through the net, and it's going to be devastating. Already taken away Ethan. Oh, but Boostio! The timing on the crest of the corner gets him up to 8 with 2 in this round. And now the 3, something divine, Mind Freak, where are they? 2 towards heaven, 1 towards CT, and a messy engagement gives Boostio the 3rd. Now it's Mind Freak, now it's something, and Boosty wanted the ain't gonna get it, but there's the denial of Mind Freak as something, it might be time to back away. It's another round that's just decided by a split second. The timing on that one. Yeah, Forsaken's holding backside towards spawn. I think initially because nobody's shouldering the angle from either side. The kill comes through onto the site and they think that they've got a little bit of room to play with. Yeah. Problem being, there's no second layer coming from screens or from heaven at the same time to follow through on that initial kill onto site.
And I'm a little bit nervous to say it, but I'll start nonetheless. Okay. I'm a little worried at how many of these rounds are a little bit individual from EG. We just had that round. Yes, the timing, but Boostio's there. I come back to the same thing. This isn't where we think about Evil Geniuses in terms of sustainability, in terms of consistency. It's not. This is playing to the strength of PaperX. Even though here we're looking at a 9-7 scoreline. Respectable. This is what they love to do. Oh, they'll do this all day long. There's no stopping them on it. But can they get chaotic in a round like this when the buy is far from perfect? Ethan already going to take away Forsaken from the equation and open up the map. Now it looks like the extremities are going to be PaperX's focus, right? Start trying to take a little look towards A. Didn't find anything initially, but B main, they're getting a little bit more invested. Something wants to work towards the ult. One off now. And Heaven, the exchange. What won't catch. Jing actually trying to get ahead of the curve here. Might even catch one. Yes, he does. Jorgamo gets off a little bit of damage. Massive. And they're going to read into this. Yeah. This seems very indicative of that A hit coming through. So your call's going to be made. Devi has to try and do something with this Guardian. I mean, they're trying to make it work on very little in this regard. Jing going to back away. But it's stalled out EG. One kill from the showstopper, though, if Jing finds another. Already set up here, but there it is. That's a showstopper in the back pocket here. Reset on the paint shells. Right, EG is scrambling to try and find a rotation. Mindfreak is positioned towards Evan. Down to 10 HP, has something in close proximity here already. PaperX, they're rotating ahead of this, Lauren. Yeah, they're matching him step by step. You're not going to get an easy fight. Mindfreak, how does he play this? 10 HP. He's got to be... Yeah, he doesn't have the chance on it. Seeker's now going to pop on through. It's going to reveal there are presence towards Heaven. Demon 1 turns around, takes him down. Something's gone. And now for the farm. Oh, nice one. Oh, a nice one, yeah. They need to get towards the site, and it's on Demon 1 to do it. He's going to get the plant down and now Devi. It's only a stinger. This is so much to ask of one man. Is there an upgrade around? I'll be able to find it on the corpse of a fallen foe. Waiting towards that drop, there's already a player. So 5 bullets in it, has to reload. And Demon 1's now called to attention. Yeah, comms definitely relayed this information. You can see the pings coming through. Devi now at a crossroads, a dilemma how to approach. He's got to give it a go. And nice one. Gonna find Devi. And EG scrapping their way through that round. Mike, again, that was a little on the back of Demon 1. Those back and forth rotations, they were getting ground down. Water supremacy. But Demon 1, but just the presence of mind here as well when the clock's running this low. He dips into this cloudburst to find the first. Something falls. Let's go! Hits the updraft to avoid the showstopper from Jing. I mean, these rounds are just ridiculous. I have to imagine Potter is absolutely tearing her hair out right now. Because all the structure, all the discipline that you've brought to this team now, you have to throw the rulebook out the window. I feel like they almost started on that, though. This map may not be a gimme, but it's going to be one of those where you've got to know this was going to come out, right? You knew the Vita was going to look like this. That last composition, the chamber wasn't looking good. It wasn't working. The Astra with Demon 1 didn't look as comfortable. So they've gone for a risk, right? High risk and potentially a high reward. Rolling it back, I don't know how much time they've had playing this comp as of late. So again, you look to it and you think, okay, you roll the dice. And for now, your big hitters, well, they're hitting. Jorgamo and Demon 1. Now on the other side of things, this hasn't been the perfect start to the second half here. The scoreline nearly closed up at 8-9. Only one round so far for PaperX, but they're back on the bye. They have some big ults to play with. One off the divide. They're very close here to it could be a very deadly round. Being short mill like nice. Things as easy once again stacked up, maybe in the same sort of position to get Demon 1 posted here in B main. There. See a very quick adjustment on the back of it. Mindfreak will take a tag. Kept honest here in the opener. But PaperX on red alert towards mid here, because, like I said, previously EG did this to post up Demon 1, then reaggress elsewhere. Oh my God. Might be. He was kept honest with the first jump peak. He's put in his grave on the second. This creature has escaped hell to wreak havoc on this server. This is mental. I ain't seen that mid-round.
End around, sure, this guy is ensuring death wherever he goes, but still it's only the first pick. Mind Freak gone, and that has to cause a reaction from PaperX. They have to be dealing with the fact that B is pretty much open. But for now, they prioritize middle. They're looking for Ethan, who walks away barely breathing on 6 HP, but the pace changed towards B. They want in, and Jorgamo gonna lead the way. Comms claimed Forsaken on the other side of the map. They're winning out everywhere. The big swing factor may be Devi here, but look who's waiting. Demon goes down, Ethan on the trade. But now timing is everything. Denied the initial plant, can they find any more ways to cause problems? Something wants to. The spray, the shot in the dark, but it's Busio to find Jing, and it's all on something. In a 1v4, this is brutal. Ethan to the left, 3 to the right, he's got the first, looks towards Heaven, tries to snap back around, 7 HP ain't enough! EG tying this up at 9 apiece. Just wild. Some of these rounds to watch back. This is just so clean to find this headshot. Screen for the. I think the desk is going to be working overtime today. We're taking a beating some of these rounds because some of them are they're very frustrating for somebody to sit back and watch in terms of the intention, I guess, that both teams have in certain situations, and then the outcome. I mean, even there, like Comms killing Forsaken behind him. Like, well, something wants to try and be the difference maker to this. Wants to isolate Com, and he has. Clean. Nice. A decisive start. Half the maps by PaperX, and they're winning out towards middle. Couldn't quite outdo Demon 1. That was only a stinger, but fantastic work considering what they brought into this round. How did Devi reset there with the stinger? Busio walking back into the Blade Storm. Something. Nice one, nice. PaperX have to respond, they have to draw bodies over this. Yes, they can leave one. I think that's just Mind Freak on towards B, but again, look at the weaponry. It's Forsaken who's the big player in this. Yes, the paint shell could be pivotal. Yes, all of the blast packs could do well, and they have. Forsaken makes the most of it. Busio on the trade, but still. It's a 2v2, and James caught himself on the site. And caution being shown by EG, they're aware. They're so aware, and he's down on 4. Hemorrhaging blood. He's been deleted by Demon 1, and now Mind Freak. Possibility, yes, in the HP, but the timing's everything. He's got to find this first kill. Can you Busio. do it? On a platter. It's not worked. He's so low. He's gone away. 10 HP. 28 in total for EG. This is doable. Couldn't quite connect on either of that. How does he close the gap now? Bustio's gone down. 5 HP or? Oh, the temptation. 5 HP on one side, 18 on the other. 4 bullets. Demon 1 breaks their hearts again. Double digits lead taken. He'll take the fight. He doesn't care. Take the warnings. Are putting on an absolute show in the second half. Just one round. This is for PaperX, and it's round 3 when they come in at such a huge disadvantage. Nice! Let's go, boys, let's go. And I'll change up a little bit. I was talking about it being concerning in terms of sustainability. EG are going to be brimming with confidence at winning some of these rounds, Lauren. This was never meant to be the map they started out. Oh, Christ! Yeah. Demon 1! Absolutely devastating impact off the rip. That takes away Forsaken. It opens up all those possibilities on the side here. Just going to put the showstopper in towards Heaven. Secure a second for the plant. And it's on the floor from PaperX to try and bring this in. That operator not having a chance to rattle off even a shot. PaperX have to get a move on, though. Time already passing by. Look how disconnected Busio is here as well. Yeah, plenty of utility. I was expecting it to be Com. Yeah. It is Boosty. But you're right, time is of the essence, and PaperX need to get a move on here. Try and face their demons. They've taken away Jorgamo. That's fantastic. Quick flash, can't follow up, and now there's a chance. An opportunity cracked open here for PaperX. Maybe this is the time they can break through. Maybe not. It's out of this world.
As Divide, Something the time happened is to gone. something. He knows it. He can't change the outcome anymore. बाप EG रे up to 11. बाप Demon 1 अरे What a stark बाप contrast रे as well to how this map started. Jorgamo, we talked about him being on the brink of 20 kills. I think at that time, Demon 1 was on 6. Something like that. He's on 25 now. I mean, he just doesn't miss. This was such a good opportunity for PaperX. I felt like once they crested Pillar, once they got close, once the knives were used up, that was a huge chance for them. अरे बाप Timeout is hit. Alex तो एकदम ही PaperX need to come up with a plan. Alex is worried. This was never meant to be the start of this. In a best of 5, the team coming in from the lowest rarely wins like this. 2 out of the 5 times we've seen this scenario, that's all that you could imagine could be done, right? 2 times out of the 5 we've seen lower bracket teams be able to convert those wins because the veto is so heavily favored normally towards a team from the upper side. PaperX came in with a targeted first map, and it might be slipping through their fingers. I mean, it's a real concern actually, because क्या था? I know Sean was saying what he'd love to see in terms of Mimi best of sign 5. में I बनाना feel like this is a little front-loaded for EG. The win conditions for me. Why lie Shorty with doesn't do PaperX at the that? start of this veto. Doesn't do that. Pearl for me is a bit of a 50-50, depending on a comp change, sure, but PaperX have looked flawless with the Phoenix there. Absolutely. So for this to, I guess, trend the way you'd expect it to, this starts with a PaperX win on split. EG already defying that. 11 to चक्कू 9. कितना sexy है ना VCT A desperate time out there for PaperX. बार वाला तो। Hopefully a plan has been made to handle EG and, well, specifically this one, Demon 1. Demon 1 And a chance, and it's dealt with. Perfect beginnings for something. Isolate Time out का and सर है conquer. Giving them the man advantage for the Let's first time in go, what feels देखो। like a while. Oh What doesn't catch नहीं Bruce, नहीं you're किसी already को way ahead of this. nice one That shot on the fade away. EG Brings it to a 4v4 now. EG Even though the Seekers, yes, went towards B, you can see how quickly those rotations are coming in. Jing is already towards CT side. Forsaken is on the side, but it's a Bulldog, and it's a Judge. Judge Far and from Bulldog. perfect. Oh, and Busio just Busio, slides right nice between them. A follow-up? No. Jing trying to hold on. A 2v3 in the site is क्या EG's. 4 second गया One should be coming in, and I किसने don't think मारा? they can close the gap. My paint cells are really high, but Jing could have sat He's her in. off! He's got off! nice one In a blink of an eye, he's dead! EG let's go Go on, and क्या हो रहा है इसको Point EG. I mean, this just reeks of the loud performance on split as well from PaperX. Really struggling to find a solid grasp. And just getting overwhelmed time and time again. Now, unfortunately, have the second line of pressure, which is a deficit here. A financial disadvantage. Demon 1 and Jorgamo heating up. truly a deadly duo between the both of them. Looking at Viper's Pit going through a middle. I'm going to try and isolate some of these fights on the extremities. 3 players put to task towards A. Come on the other side. And the rest of EG focusing towards B, at least on the start. Oh, again. Combo going to be tested. Something. So the crosshair placement will look way off there. Lucky to only get away with a tag down to 89, but re-walking this? That's bold, to say the least. I'm slipping away from this, but this will be noted relatively quickly. That's a big indicator, actually, that Com's given up this control. Oh yeah, you can see Jing already. Exactly, yeah, because something's in such a deep position now. He can get very early information. Backside Astra. Back of the side. Bulldog. Divide. They're going to try and get ahead of this, try and help him out, because look at the pressure coming his way. Paint shot going to go down. Demon 1 closing in, and now the chaos begins. Divide's fallen. Jing! Jing double. Out of nowhere fights 2. A third would be everything for them. How much can he do? Not quite enough. The trades are coming down, 1v1. and it's all No, 1v2. on Com. A 1v2. Spike is not in hand. Something is trailing him. 13 seconds, Mike. I don't know if he has time for this.
Mind Freak perfectly positioned. He's got him. A chance here for Paper X, making double digits. All good. Opens up the slightest of opportunities. Chance here, but it definitely doesn't help the finances with it being as scrappy as it was. Comes down to just one. I mean, that's round. heroic. Yeah, I mean, I wanted to see that back, just how Jing caught the timing there through the divide. Beautiful stuff. EG, slight pump of the brakes for Potter. Grinning right now with this performance. In the second half here on attack, it has looked nothing short of phenomenal here from Evil Geniuses. Yeah. Nice time out. That was a 6-round streak from EG. I mean, timeouts to take a breather, really. Why not? Yeah. Tune up, get in. At worst, you go OT. Now that. Demon 1 के बारे में कुछ नहीं लिखोगे नंदनी? Paper X when they needed a miracle. I mean, Jing was right there. You got that. Seekers. Don't worry, stay calm. But no other ults to depend on. Guagomo. क्या था जोगेमो क्या नाम है इसका भी? बड़ा कठिन नाम रखते हैं. G firmly in control here. It's Paper X we're looking towards in terms of making some sort of adjustment. Going to be tough here with Divide down on a Judge, Forsaken on a Bulldog. Ultimates, yes, 2 away from the Blade Storm. But a must win to keep their hopes of opening up this best of 5 with a map win. It looks like middle is once again a priority position for EG. Yep. Looking at who's patrolling it. Divide, Judge is there. Jing, very nearby as well. Com, once again spotted. He's going to be challenged by not just one, there's 2 to this. Double check there's no one further behind, so this is actually unleashing something to go walk about if he wants to. Well, all of this test happens in middle. Look at something. Look at... Wait, there's no way that Boostio just had a little look back. He's looking, he's watching. He absolutely is! He's killed something in spawn. He's read them like a book. That deep flash, maybe just a little read on what they wanted. And this is, I don't feel like addressing Com is the issue nice here. Nice one, Wait, Demon 1 found another one, Jing's fallen. It's a 5v3, Lauren. This feels like it's just slipping between their fingertips on map 1 here. 2 men up to the good. Not open. The 3 standing. कोई open नहीं है एक ही बंदा. Demon EG वाला ना है तो कुछ बात. You with EG, yes. It looks like EG are congregating over towards A. This plays in Forsaken and hopefully Divide. Seekers invested, it doesn't really tell them anything. 30 seconds. They're running low on time though, Mike. Have to make a move. Flash will catch Let's go, NA. You've got to be calling for Mind Freak to hit that rotation, hit the panic button, get over here. There's 5 players coming our way and Divide. Ah, nahi, 4 second it's all miss. on him to try and stop the rot, stop EG. He's desperate. Nah, but it may not 1v4. be enough. Mind Freak. As Mind Freak now in a 1v4. Map 1 on the line. And EG turning up on a map that none of us expected to see this level of performance on. Mind Freak has a minefield to walk through. USA. And you got 4 players. Divide or not, he's got to go. He takes down Com, but the trade for Jorgamo is there. EG, map 1. And a statement made by Geniuses, Lauren. A confident opener to this series. They look absolutely lethal, Mike. I'm looking towards Demon 1. I'm looking at Jorgamo. अबे कहाँ बैठे हैं तो? A belting series. You do not want to miss the rest of this. दूसरे मैप तक कुछ खेला जाए. Overwatch. अरे नहीं यार, क्या ये होगा अभी? सोने से भी टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसमें.
टॉली ब्रॉडबैंड क्या इतनी स्पीड पे इसमें इतनी स्पीड क्यों आ रही है 4 MB डाउनलोड हो पाया है रीस्टार्ट ही करवाने लगते हैं तुरंत पता है चल रहा है मैच लाइव पे दिखा रहे हैं ओ भाई साहब इनका अभी तक चल रहा है मैच 5 स्टैक चल रहा है तीनों के साथ नाइस नाइस ठीक है भाई माफ करो Match found. क्रॉसयर प्लेसमेंट हो तो डीमन 1 जैसा है Win. Show me where to go. Win. Show me where to go. Fight! Let's go! कितनी फिजिटी है सेज Got him! मुझे साउंड आ गई थी ये क्या है Enemy kill. Sky.
अरे बाप रे बाप What the F मैं भाई फैंटम तो बिल्कुल ना चल रही One down. Dominating. Be faster. भाई क्या है ये कौन है भाई भाई साहब ऐसी हालत हो जाती है कभी ये क्या टाइमिंग हो रही है Stay down. Eyes down. 10 kills remaining. अरे बाप ये कौन सी एमिंग चल रही है भाई Five kills remaining. नहीं यार See ya. अरे बाप रे One kill remaining. Party's over. मैप ऑन है नहीं ये जाता At this tournament has एग्जिट क्यों कर दिया मैंने इतनी स्पीड आती है इसमें क्या लगाऊं मैं धीरे स्पीड आती है इसकी That's why I think going into the rest of the map, well, even though PaperX started here, I think their innovation across the other maps is where I'm mostly impressed. I think this is the most vanilla map that we're going to see from PaperX. We're now going into Ascent, which is my favorite map to watch PaperX on. This is where they're playing Viper, Harbor, Reyna, Sky. On Ascent, again, the map where everybody else plays literally the same comp in every game, and it's so well constructed. This is the map where I have a lot of faith in something to come back and
look like the superstar we know he is when he's playing on this Reyna. We're about to see in the Prime Gaming Agent Select if we're going to get that Reyna or not. But Potter, she's very confident. She even said 2-0, baby. Do you guys feel the same way here? Is this going to be bad news for Paper X? I do think she's kind of underestimating Paper X a little bit on Ascent. I know EG looks like the best Ascent team in this tournament, but what I see out of this Harbor Reyna in particular is the Cove Lear entrances by the A site, by the B site. They do such a creative take on both of those areas of the map. Now I'm sure Potter has cooked up some good anti-strats and yep. Oh, Paper X changing the comp. Devi is on the KO now. What? So What does this change? No What does this Sentinel mean? comp now. It's just a little bit less info coming the way of Paper X, but the KO can do a lot with the knife to get cross-map info. Yeah, I mean, you're not going to be getting those refreshable flashes coming through here, but this still can work in the same way that they have been piloting it. It's just a little bit different, a little bit more delayed. You can't really, obviously fly those guiding lights through and get them exactly where you want to, but Devi can still be chucking these through those harbor walls, off the back of the Lear, get that double flash out, and then go for the side exact. I think the KO knife is really useful for cross-map info on Ascent. That's why you see pretty much everyone run it. Versus the Sky as well. You can still get those Reyna Lear flash combos out of the Cove you're talking about, but it might be a little bit harder. We'll have to see if Paper X's new comp is what it takes to be the first team this tournament to beat Evil Geniuses on Ascent. EG, they are ahead now, but Paper X, they have a chance here to bring it back and tie things up. Let's send it over to your casters once again to take us into game. Over to you, Pansy and Hypok. Thank you so much. And yes, map 2 now coming up. Paper X have their work cut out here, Mike. This is a little bit of a different look as well from what we maybe expected. Absolutely, a slight adjustment here. The obviously, well, we're going to really speculate as to the application here of the KO, but one of the things that worked best was the Trailblazer. To set something in motion, the layering of the flashes, sure, but the one thing that really put something in a position to excel on the Reyna was the Trailblazer from Devi. So that's the initial concern at the minute, whether or not Paper X are going to try and slow things down, if something and Jing are just going to try and go ham together, I guess, is the next step on that checklist. We'll have to wait and see. Wow. It starts with this pistol round. Demon 1, he's stuck around. He's gone back in. That's a little too far. As Forsaken's going to punish and put him back to the next round. 4v4, but look at the rest of the map. Boostio's taken space away. Paper X actually might be in a little bit of trouble here. Bomb's coming as well. Boostio's got a fantastic position again, Forsaken. Perfect trade, though. Standing ahead. Dart will go out. Actually, we'll catch him. Yeah, King as well. Devi's lucky to get away with his life here. Down to 62 HP. This has been god tier work from Forsaken. I have to be crystal clear about that. Those trades he got kept them in this. And hold on. Yeah, a little bit of vengeance. Best served. Double check on the body there, it felt like, from something, leaving it all on Jorgamo in a 1v3. Knife's gonna note him. And you can see something waiting. Oh, the crossfire was in place. It was okay in the end. Something taking the reins in the round, but credit in my mind goes to Forsaken there. Absolutely. Something. With the cleanup, I mean, there's a chance here for Common Boostio to make a real good go of holding things down in tiles. Team 1 to open things up. Yeah, so this moment here, I think Com's kind of forced into a very, very tricky spot where he could invest the recon bolt. That's the rating for my ranked games right there. Lurking in tiles, planting on A, shooting bodies in mid. Love to see it. But something off to a flying start, 3-0. Huge confidence round for him as well. You want to be seeing that coming out from something. Get that confidence early. Start building into the matchup as it looks like a pacey piece towards B. But look at the stack. There's 5 bodies here. Everyone from EG is present on this site. The stack towards the back of Bauhaus. Paper X trying to fly on in. Lear gets dealt with, but Jing's the one to do so much damage on this one. This is lovely work here. Demon 1. Oh my god, he's still trying to fire off. Takes down 2, but it's a 3v1. And Boostio, I mean, this would be a lot. Would be a miracle. Forsaken tag down to 72. Easiest to pin down, but a 1v3 nonetheless. He's got a clean fight on the first, couldn't land it. Beautifully controlled by Paper X. They walk into the stack, they come out with 3 alive. Get themselves off on the right foot here on Ascent. And having a look back on this, it could have gone dangerous. You saw it there for a couple of seconds. In the end, Devi doing well, keeping control. And for Paper X going at that sort of pace, you may walk into a stack, but they come out as highlighted with 3. So this bonus round not going to be lacking in too many areas. They do have
2 full-on rifles, 1 Bulldog to boot. That's with Mind Freak. It looks like rinse and repeat. However, late slip through there for Demon One, gonna get himself on the site, but paperX not toying with the rest of the map, and again, opening up this chance for EG to take space. Yeah, Jorgamo's done just that. Look how deep his position is already. But they still have to deal with the site take, right? It's one thing to know where paperX are, it's another to try and handle them as they make it towards the site. First man forward's Jing, eyeing up CT, keeping them at bay, or at least keeping one at bay, that being Ethan. Wait, do they not know where the paranoia came from? Apparently not, but they're trying to break through on the site. They don't turn in time, and Jorgamo does get down 2, but still the trades are effective, and paperX keeping 3 alive. The HP is dreary for 2 of the players. Com in with a real chance of doing some serious damage here. Chance with the recon as well to maybe find a little bit of damage. So he might just commit to trying to hold for exits here. I mean, Jing down to 5 HP, Divide on 39, could find something with a shock dart potentially. How did Divide not taking it in there? Jing, lovely from paperX. Again, it's one thing to know where paperX are, it's another to handle them all together. So what's bizarre though is Jorgamo sends the paranoia from tiles into B main. Not sure if it's just not relayed quickly enough, but nobody reacted to the flank until Jorgamo comes through and finds 2. Just so happens paperX won everything they needed to towards the site. Sorry. Well, what a dreamy start for paperX as well. Bonus on the board. Making up the wrongs, right? Great ult progress as well. Forsaken 1 away from the Reckoning. Jing 1 off the showstopper. Already have. Here we go, Jing right off the rip, taken towards the A site, and look, it's down to the Sheriffs. This round was never meant to be too deadly. Full-on rifles. And Jing willing to be aggressive, confirm the space, take it. Noting Boostio on the back lines, it's all looking, I was going to say tickety-boo, but Demon One has found Jing. He's found the knives as well. Okay. Chance here if another kill comes through that EG tried to explode on the back of that. You can see the difference, right? paperX dig in a little bit more. Yeah. एक पिक्सल पे खड़ा है. And time's starting to dwindle here. Forsaken controlling towards heaven. Something's there towards Demon One. This is lovely. Any more, and I get a little bit nervous, but I think Ethan knows he's not going to get given much more play here. Being pressured down by something. And he caused them any more troubles, any more woes. Absolutely not. paperX weathering the storm there. Again, yes, aggressive, yes, got a little bit, I don't even say dangerous with Jing going down, but they instantly shifted gear. That was perfect from them. Back into full purchase here. Look at those Tom with the Odin in hand. Yeah, the ultimate's really starting to swell now for paperX. EG actually going to call the time. I'm not sure if that did come through a little late. And it's also very uncharacteristic for EG to be calling timeouts this early. We know that they generally have a plan up to almost round 6. Something that they're notorious for. They come in with very, not scripted pistols, but they have a really robust plan. So an early timeout certainly causing me pause for thought here, Mike. As it stands though, paperX, I was worried after map 1 they'd take that to heart, but these guys are warriors at this. They've come back with a blistering response. I'd be curious to see if there is much of a change here. We've seen EG try to address the back line of paperX a number of times, kind of shadowing some of the executes they've had towards B site in terms of tiles control, taking all of the space in mid, confirming that there's no real second prong to the attack. And what EG think that, because it's not really as if that's caused them any issues just yet. They've lost out in terms of gunfights towards the site, but generally in terms of the read of what's going on, you've seen players on EG in the right position to do damage. Like I said, even with that paranoia into B main, nobody posted up close to that, so I don't know if Jorgamo's just trying to slow things down, or he's trying to set somebody else in motion. That's the curiosity on my part. I have those answers to the questions once we come out of this timeout and get the round underway. What the adjustments may be for EG. They have a purchase here. A couple of big ults. Well, one big ult. And a TP. And on the other side, well, we already noted it. Looking lush for paperX. Looks like a fairly standardized start. Testing towards A, but no instantaneous follow through. We've been seeing kind of, not necessarily one-dimensional, but very hard-headed approaches from paperX. Like that might continue here. Looking to regroup ahead of the 60-second mark. Something already trying to make progress towards B.
fish out the turret. Try to, at least on the first peek. Cleans it up on the second. Reckoning invested here, covering the entirety of site. EG, like I said, perfect read. They're actually playing towards a retake setup here. Team 1 actually finds mine free. That's a difference. They've had a couple of first picks though, but still, site now being contested. Paranoia center, they try and work off the back of this. CT has 3, they're gonna start swinging on through. Jorgamo in a curious position. Keep your eyes on the kill feed, it's straight coming out. Forsaken getting invested, swings ahead, and another fight won for Demon 1. And held in place by Divide, but the numbers overwhelming. The site's EGs, and this time it worked out. Said the read was generally pretty good of how Paper X were going to approach the site here. Reckoning invested almost no value outside of finding the plant. Everybody from EG set up to retake very quickly here, not giving, we were talking about in map 1, not giving Paper X the time and space to get aggressive. Once Paper X see a little bit of space to play into, if they've got 2 or 3 bodies, they're gonna do it. I wonder if the adjustment, if there is even an adjustment for Paper X yet. I don't think they have to. It's 1 round. They've still got Device ult now to bring into this one. 5 towards A, and actually EG have 4 players here now, sitting a little bit deeper, maybe cognizant of Device ult, but Com clearing towards middle, noting nothing towards tiles. As we can see the Paper X, all 5 players here. Can they deal with the flood that's going to be coming their way? Knife goes in, clears out towards Dice. See the Cove going up, the Lear going to come out, a little offset on the timing, but it's fine. No one's there to challenge this. They're expecting it. The core on the cross, a lot of chip damage being done here. Com laying down the covering fire, takes out Forsaken. The lockdown is in effect. They have to retreat here. And this is a good read from Com. Mindfreak can't really push much deeper than this, but can swing onto it now. Com posted up with the Odin. He's found him. Removed the lurk, removed any sort of safety net from Paper X here. 20 HP, something, spike in hand, but he's solo on Catwalk. This scares the life out of me. Device falling away. Jing trying to get played in maybe if someone tries to re-clear towards A main. Oh, this is so dangerous! Put his life on the line, try and set something in motion, but they stack up onto a shot. What a shot! Something removes Com and opens up a chance, an avenue forward, and Demon 1 might shut it down. Nice. Two knives to the head. We'll find EG their second. And straight away in response. See the timeout come through from Paper X. Feeling as if EG are actually here, the comparison to Split. It was fast, it was pacey. I don't know if the timeout actually was something that Potter's kind of related to the guys. Slow things down a little, let them play into you. Because again, we're seeing a lot of reactive utility as opposed to start of this. It's, you know, taking space in mid and trying to address the back line. I'm curious now of what Paper X's adjustment will be. We definitely haven't seen the same sort of approach in terms of the Reina just yet. We have seen Paper X leaning towards death falling. Shocker. Who'd have thought it? I mean, it got them 4, but it does feel like a bit of a battle of the minds here. You've got Potter on one side, obviously, who has a ridiculous conversion rate when you look at timeouts and next round success, incredibly high. Now, I asked the same thing of Alex here. Does Paper X have that ability now to shift gear? The EG have found that step, right, as you were alluding to. I don't know what the adjustment will be for Paper X going into it. Do they start toying with expectations? They have been deathballing. Do they start trying to punish rotations, catch one of these players off guard? You're going to need something. There's already the money starting to get worked down at here. They still have the ult from Divide. I think, 2 away from the Viper's Pit as well, but the others pretty far off. The concern being EG are in a position to almost get an operator in hand for the next round. Behind a purchase also. Hunter's Fury, we know Com's always good for one with the ultimate. And it looks like a similar look, right? They're trying to sell the same sort of picture, but the pace change is on short, and it's Jing to open up the account and pretty much take the entirety of the site. No one is on A. They've got complete free reign here to get that plant down and get the site on their side. I don't know if you've heard it, yeah. But whether or not Com got caught by the null command here, because he was backing up towards Fountain to try and use the Hunter's Fury. Jing, 45 HP. Demon 1. Trying to sniff him out here on short. He's down a little lower. Jing, 45.
Not enough for the first time. Oh dear, Kong from across the map. Takes out Jing and unlocks the next. Ah! Good for two. Forsaken stops the rot. Denies Demon 1. Nice follow-up from Mindfreak. Better from Forsaken. And it's all on Com in a 1v3. Not going to be happening. Paper X holding on to the A site. The reactionary Hunter's Fury here from Com. It's just ridiculous how good he is on the Sova. As soon as Demon 1 gets contact here, there's even a flash coming through. I didn't even note the flash from Ethan. And that's the thing, you have to watch 3 or 4 different camera angles to really appreciate the little things that Evil Geniuses do. Regardless, Paper X around on the board, beautiful cleanup from them. I want to see these guys fully activated now. Paper X looking a little pissed off after map 1, coming back in, fully ready to go. And feeling very little intention behind that early utility. EG might adjust off the back of this. 2 players trying to hold goal. Oh my god, the grand reveal! Mindfreak has been removed, and this has stalled out Paper X. I mean, there's 5 people in B main here, and nobody's actually holding for a dart. Com rewarded with a freebie. Boostio played in here with the judge as well, up close and personal. Be careful. Trying to play the line here. There is no back line to this. There's no exit plan. There's no great escape for Paper X. They have no other position to look at the map. It's closing in. The net is closing in. There's no way forward. It's a blender at the hands of Boostio as Divine. Oh, blinded flash, dead. EG starting to figure out that Paper X pace. Beautifully done. Com just understands the timing so well on the Sova. The back of the turret, taking contact, being dealt with. He waits a second or two. Like I said, nobody able to react quick enough to the dart. And this is the thing, versus EG, you have to expect Com to be in that position. Yeah. Time and time again. Wait, Ethan, has he been seen? Getting nervous here. I think Paper X felt something. They heard me, because now Forsaken's trying to find Com. They have switched up though. It's Com and Boostio now, Odin and Judge. The dynamic duo elsewhere on the map. Paper X looking to maybe set up towards a B split here though. I like that. Again, we knew that Death Ball would eventually hit a point it can't carry on at, but Ethan is still ahead of this. Demon 1 taking all the attention, almost enamoring Paper X to focus towards him, but it plays in Ethan. Do they still stay diligent? Do they still check as well? First fight, it's his. Boostio succeeds. Ethan on the double down. Takes away Divine and Jing, leaving something in Forsaken with a little bit of space and not a lot to do with it. And already feels red. Look at the attention towards CT. The crossfire perfectly held. They're going to need a lot to break back in here, Mike. Something. It's paranoid, spinning back and forth, and Jorgamo will find the headshot, just leaving Forsaken as a headshot from Demon 1 to find the Prime Gaming flawless. And it's so well thought out. You never expect anyone to be ahead of Demon 1 when he's playing like this, when he's hyper-aggressive, and Ethan, the one to tuck in close here. Got a little nervous on the first couple of shots. A little bit. But this has broken the bar of Paper X. And that was the first time I think we started to see them kind of explore that slightly less single-minded approach. And it's not a bad approach when it is Paper X. I can't even doubt it that much. But look at the string of rounds now. Nearly 5 in a row here. After that timeout from Potter, whatever it was the cure. It's completely changed the mentality and the read into this game, and it puts the pressure back on Paper X. 5 is respectable. But you want to be seeing a little bit more out of them here. See if they can post up a couple more rounds, give them some safety on that side switch. See what they're trying to set up towards here. Paper X 4 towards short though. Be a ton of damage. They're walking into Boostio sets up here. How is Jing alive? How's he still standing? He's still fighting! Jing! I can't believe it! Walks
looks across the map, somehow breathing. Giacomo dives in head first. And Demon 1 in a similar spot. This time he's going to be handled by Device Utility. And this is that bloodied battle we were waiting on. The explosive pressure that Paper X needed has finally landed true. Com now in a 1v3. Jesus, that's too close. I mean, Devi tagged up down to 48. Gonna get an opportunity here to play a rifle out. The safety net here for A side. Oh, he's still got his dart. Just Starflow down to 70 HP. Eyes trained on Heaven. He shouldn't have play into this. I think he knows he's really running low on chances here. Just wait for an exit, maybe. Yeah. Hello, and goodbye. Gonna take away Mind Freak. Spots out one on the site, but again, time. Oh, Devi's having none of it. None of that here today, and Mike, the absolute wherewithal of this team. Paper X just flew through that site. I mean, Boostio, it takes him a couple of seconds to actually pop the second Nano Swarm in tree here. I think that's the issue. Jing has a little bit of room to work with, and he's able to get, I mean, that is just beautiful. Filthy. Yeah. I was going to say a disgusting spray with the Stinger, but it gets the job done. In one of the most Paper X rounds I think we've seen so far today. They could have done with one. It was starting to get a little nervy, right, when you looked at the run-arounds coming in, but back in we go. Even one played in a little off the spam of Com. And wait, Giacomo just got the first? Ooh. Taking away Jing almost instantaneously is a problem. Clean from Demon 1, and no opportunity for a trade. Of course, something denied. Well, thought about it. Something given a second shot here. Some time and space in middle. Spike not committed just yet. Something's been noted as well. Yeah, he has. Now with Paper X looking to regroup. Well, something actually started. I'm still curious towards B-Main. Just keep in mind how deep Aegis sitting on all of this map as well. They're entertaining no early frags here. No one's playing up by tree. No one's playing close towards the B side. No one's even on the A side. They're sitting CT. They're sitting super deep here. Gonna make Paper X work for their dinner. Oh. They've got plenty of ults, so. Ethan spotted. Closing in a little. They're looking for chances here, Paper X, and there's just being nothing offered. 30 seconds left. Devi at the jump on point now. Utility still there, that's not ideal. Actually, a bit of an issue, Neron catching up to him, but towards the site we go. Again, EG not taking the bait, showing discipline. Well, until then, the flash almost perfect. Devi could have been in danger, 13 seconds, now they're in trouble. Spike's left loose, and EG play a patient round. And the protocol list is so robust from EG. Constantly, Ethan jump spotting here. The alarm bot takes contact. They set up for this flash over from spawn to put Boostio in a position to punish Jorgen. Beautiful opener. My ultimate. One enemy Fantastic stuff. Unfortunately, mid-round not really suiting Paper X there, conceding 2 kills, don't really get an opportunity to pin down any sort of engagement across the map. EG mitigating risk really effectively there. And look at the pressure. Knife catching Boostio, gonna make this very difficult to hold. They have to respect what's coming their way. And Jing disrespecting all the utility, all the presence. Something on the follow-up and the site may be theirs. One stands in their way. Oh my God! Inhuman reaction from something. And this guy is fired up. Back up to 4. Paper X hold the numbers. Com hot on their heels though. He ain't a million miles away from this. This becomes difficult now. Giacomo and Com facing down Neron and Army. Trying to toy with them, see if they can spot them. He got tagged. He's been forced away. Giacomo dives in. Oh my God, the trade. Look at the HP. Mind Freak is on 29. This is scary. But Com is not being given many more chances. He's got to slip. And no shot. He's got to swap out. The pin's gonna drop. Oh, Devi! Gorgeous timing from him. That got down to the wire. What a ridiculous exchange. 7-5 on the half though, Lauren.
This is a great game we're seeing here. PaperX doing everything they need, just about securing the last couple of rounds, digging so deep. Disgusting from something. Filthy work from him, and it's what you want to be seeing. And this is such pressure stage now for both sides. PaperX in recovery after they struggled. That timeout that came for Potter and EG worked so well. But to hear from someone who knows what it's like on a major stage, let's hand it down to Tarek and Doug. Yeah, thank you so much. We're hanging out in the co-streamer area right now, and of course, we've got a fan favorite in Tarek. Tarek, talk to me about the vibes in the arena right now. This place is packed. Yeah, oh man, it is electric in here. Can I hear you guys one time? Just make some noise. Mission accomplished. Yeah, I think they got it. Let's talk about the series a little bit. EG, PaperX, who you got? You know, it's a tricky question. I think there's really no right answer here. I'm happy for either team that wins, but... Bro. Go EG. Fuck it, go EG. We can edit that out, right? We can get that in post-prod. Do you have any predictions on how far the series is going to go? Is it going the distance or what? Oh, we want map 5. We pray for map 5, definitely. All right, last couple of thoughts I'd love to get from you. Talk to me about the new map, in particular, Sunset. What do you think? I'm excited. When do I get to play? Right after this, actually. I got you. Let's get it. And then the cinematic. I know there were people who had really strong feelings. What was happening to Lil Bro? What was happening to Wingman? Was he going to make it on the other side? Tell me, you cried. You cried. I know you cried. You can admit it. Boaster cried for me, so shout out Boaster. That's my GOAT. All right, any final things you want to say to the crowd, to the venue before I let you go? Go Valorant. He nailed it. Go Valorant. Thank you so much. Tarek, back to you guys. Wow, they are some hard-hitting words there from Tarek. Go Valorant. Go Honestly. Valorant. Yeah, absolutely right. But 5-7. Yeah. This is an incredibly close game. Now, I feel like the bulk of rounds in this for PaperX happened at the start, right? Gave themselves a nice buffer. There was that turn. There was that timeout that gave EG the springboard back to a competitive half. But PaperX still hold the lead here. They do. Things still looking very scrappy. EG showing that they're happy to go toe-to-toe once again. Continuing that trend. Very early exploration here. Really caught on the counter swing here from Tile. That'd be nice. That's his main shell. That'd be very nice. Some decent damage. Com and Boostio down to 45. Jing will be happy with that, but I mean, damage back on the other side too. Almost walking away in very similar spots, but a totally different change of pace here for EG. Much slower, a little bit more meticulous, a bit more careful. You know what you're facing here, one of the most explosive teams in the world, even on the defending side. Mind Freak shouldering this. It will be Demon 1 to spot. And Utility instantly coming through. Now note the spike. This is not their end goal. They're drawing eyes over. Which they haven't actually achieved just yet. Oh! Boostio lands a banger onto Forsaken. Still conscious that maybe it being the Killjoy could be a lurk setup. Yeah, no over-rotation, is there? They're thinking about it, but again, with this timing, this pacing, 30 seconds, it's going to be down to the wire. This is going to be a very close call on things here, and there's still 2 players to clear out, and it's Jing and something. Yes, lower HP, but still with the boombot. And it's about timing on this. When does he invest? Does he invest? He could do now. Oh, it's stunning from Jing. Denies the first man in. That's Boostio. 10 seconds now. They got 2 targets to find. This is so much to do for EG, but Calm again! Creating all the space, but PaperX playing forward. Already, Mind Freak slipping forward towards Switch, looking to get closer by. Divide by CT, but a 2v4 is so tricky. Mind Freak there draws the attention. Divide on the swing, and denied by Ethan. As EG pick up the pistol in the second half. For the 6th on the board, 1 away from catching PaperX here at the start of the second half. Beautiful opener from Boostio. They left it so late. Yeah, they did. Terrified. Again, the plan was executed perfectly though. The flash over the top to set Com in motion. Really well done by EG. It makes you wonder, though, if something a bit more HP, if Jing was sitting a little bit pretty on the HP, maybe they could have held off a little longer, but
That's neither here nor there as we go forward at 6-7. EG closing the scoreline just a little bit now. Sheriff coming out from Divide. Beyond that, it's classics. But we saw what Jorgamo was able to do on map 1, so maybe don't write it off just yet. But still, stack for Paper X's. Well, they're coming up as the antidote to this round, but man, it's not going to be easy to make count. EG have been quite careful on their approach. Trying to find that information first, but let's see if they can navigate away from this cluster of mayhem on this site. EG expecting aggression, maybe not expecting a 4-man stack in A main. They're going to flash out here with Divide. He doesn't actually have a flash. They're trying to scramble, and there's nowhere to run. Demon One's in danger, tries to backpedal. It's sensational from Paper X. And now Boostio and Ethan are reeling off the back of it. Yeah, they get the rest of the map, but look at the upgrades. Look at what they get. A reward for all of that work. But a plant will be had. Can they defend a 2v4 like this? Oh, he's a Spectre and a Look Sheriff. at Ethan. Look at Ethan's position. Oh my God. Oh, he's heard it. Ethan knows what's coming his way. 3 on the other side. First found, second follow-up. Ethan holding them back. Oh, third! Recovering what looked like a lost round! What a performance from Ethan. That's an Arte round right there. A sensational 4K. To bail out EG. That looked like Paper X's mic all day long. That start was, God, out of this world. I mean, this third kill is beautiful. Then the bait with the flash here. Bounces deep. Forsaken has to commit to turning it. Yeah, take a bow. Oh man, Paper X, need you to stabilize here now. Rifles coming up. Gotta keep their heads held high in this one. EG willing to get down and dirty, scrappy into this. A little bit more of a pace change here, getting a little bit more progress done early on. Looking like Ethan wants to work towards that ult, and well, with the round that he just had, why not? He's very close by. Team 1's got some space to work with here. Look at the respect given by something. Playing all the way towards Fountain. Door is closed, so there's no real need to jump spot anything, but to say that, Jing did actually just sat you up. Spotted a ton of players inside B main. We see this exchange of utility here. It's almost TP'd in. He's in, and Demon One's caught someone in. What? Demon One! How is he doing this much damage? Jing and something trying to hold the line. And they're doing so well. Something is serious about this one. Trying to dig his heels in here, but Demon One's still standing and still breathing. There are problems. Dubai by something's side. And Jorgamo on the other. They're getting aggressive. They're going fast. Something wants in, and he's got in. He's taken the round away from them. EG left in tatters as Paper X depending on something there, and he finds it. What a brutal battle in some of these rounds. A furious exchange. Mechanical monsters. Look at... Oh my God. I said, given some space, something respecting the setup here initially. Beautiful cleanup though between Divide and something. Find Paper X their first round here in the second half. They come away with that though, 2 Bulldogs, so that was just EG's bonus. Jing's getting a little interested. He's got something walking middle as well. EG aren't really taking that walk. Slowly but surely. Trying to get a bit more curious about what's happening in middle here. It's been enough that's put some question marks around the map. Oh my God, something. I don't think he knows just how close Boostio was here. Oh, Jing! Yeah, Ethan trying to set it up with a flash. Boostio punished. Yeah, fell for that one, almost hook, line, and sinker, wanting to try and punish contact that they had. And Jing's not relenting. He's not falling back, and maybe he should have. Ethan's got an opportunity, even the scoreboard.
Just look at this setup here. Between something and Forsaken. Oh. Yeah, Demon One's like, what the hell's going on in there? Didn't like what he found. But this map is not looking comfy. 30 seconds, they have no way in here. Ethan going for the ult. They pushed forward. Profound aggression from... He just spotted him. Oh my god. Oh my good god. He's played ahead of it. And Ethan's still doing damage. Spike is running towards A with 18 seconds. When do they realize? When do they turn already? You can see one of them on the case. Mind Freak trying to come on over with 12 seconds. Oh, this plant could be in. Let's see if that cross is made. Jorgamos made it over. That should be a plant. But up towards heaven, there's two coming on forward. Not denied on the plant, but the follow-up's everything. Something now starting to get closer. Comms found something. Mind Freak couldn't quite get the trade. They've slipped away. And Devi gets a bit closer himself. Jorgamo's got him. And now it's Devi in a 1v3. 2 low, and it's very possible for this man. But look at these angles. Brutal to clear. 2 flashes to play with. Can he isolate a fight? What can he do in this? Takes another step, looks for the fight, he's got it! And now the 1v1, but time is against him, and there's a demon on the other side! Beautiful stuff here. Devi catching a crucial kill onto Ethan, or knocking him in the null command here. And that's the time, but it comes so late that, I mean, you even noted it, when was somebody going to start rotating, but Devi finds the kill, and it's pretty much knife out the entire time. They still don't beat EG to A site. Beautiful all around Ethan as well. Can't even remember who it was actually caught in B main in the corner there with the Forsaken, I believe. The flash goes through, no command is popped, and again, with all Paper X's utility up, there's kind of I mean, it's their own demise in that regard. Yeah. The null command goes up, there's no open sight lines towards main, which is why they try and get aggressive. As soon as they concede that kill on Forsaken, Devi's hand is forced. He has to commit to the flank, and it's already too late at that point. 8 apiece here. Wow. I knew this was going to be a good best of 5, Mike, but we're seeing this really kept close. I'm a bit worried about this half, though. I think seeing the kind of start we're seeing here from EG looking quite well prepared, the money scenario for Paper X, what do they do with this? And the timeout hitting as it is, it's quite indicative they're trying to find adjustments, right? They're trying to find a way forward that's going to work for them here. This composition should be hard to make work, but they're aggressive. They know how this plays out, right? It's not the first time we're seeing it, but I'm a little worried. I'm seeing a hero rifle on Devi. That's about it. You have the showstopper to play with, but Jing not throwing a shield in the mix here. I don't know if that maybe he's going to try and use that reactor, but Ethan's got to get out of this corner. Spammed up, and a 51 HP. But escapes death. They need to try and feel out where the stack may be, and a quick reaction from Paper X is actually putting them in potentially the correct space. Eyeing up towards the A site now. You can see EG on red alert. After some of those moves we've been seeing coming out, some of those aggressive plays, the flashes off the back end. Speaking of aggressive plays, there's the flash. He knows he's drawn attention here. What do EG do now with the information they've received? Very cautious approach here. Saw an earlier example of anticipating aggression. Paper X already looking like they're going to lean towards a stack on A. Incorrect read here with what we can see. It's a gamble stack. You gotta try and risk it, but I mean, EG have done really well to deny information across the map, so forcing their hand at Paper X in that regard. Yeah, absolutely. So this should be the green light. Shouldn't be any resistance towards the B site here, so it's all on how much can they achieve on the way out. And I already like the readjustment from Comp. I love seeing this. I think we just saw a teaser for a future execution there. With the cloud burst up onto the top, the flash out from Ethan. So we do get that employed once again. Com. The timing, get out of it! Okay, good trade. That's a rifle, but they don't have time really to maybe run and grab that. No. Maybe Forsaken can try and give it a go, but they can get a bit dangerous. Hold on, that flash is a bit of an issue, but it plays in Boostio, but still very diligent on the clear. Boostio cleaning him up here. Forsaken, the last one alive. You can hear the timer ticking away. Demon One willing, ready and able to remove the final threat. This round was a gamble stack. It didn't work out.
EG will take the lead. Paperex now in a position that feels a little uncomfortable. You look at what's behind this purchase, you look at what's coming out in this purchase, to be honest with you. One enemy remains. Divide down on a Bulldog. You will see the operator coming out for something. A chance for him to maybe get something done here. Become a little more aggressive. Well, just sorry, yeah, he's behind Peter actually. Wow. So hold a very, very passive angle here. This isn't typical, really, of Paperex's approach here. Well, not typical of EG's approach either, but... Com, normally good for it. He's cleared out common angles. He's basically facilitated this whole site hit. So something has to try and hold. And the first shot not landing opens up so many opportunities for EG. Not feeling secure on the side just yet. Paperex looking maybe to pounce on this. Waterfall in, and they do. Jing takes away Ethan. This is looking much better here. Holding with 5 alive. Can they make it more? Yes! Mind Freak. Damage done. Good trade. Boostio still bounding away. But the plant's not in. It's held in the hands. Jorgamo not quite there just yet. 24 HP that all the Boostio has to boast. And now looking for the plant. Jorgamo's got Jing. A late lockdown as well. This causes real issues for Paperex. They've got to run. They've got to get out of this. This is the plant that they wanted. And now a true 3v3, but that up. Oh, no. Something. Maybe. Oh, my. Wait. Forsaken. Did Boostio try and reflank through mid? It looked like it, but Forsaken was so ready. And now the counter roll. They're going off this one. Jorgamo's in danger. He's screwed. Trying to stick around on the site. He's been noted. He's been seen. How long can he survive? He's going to be hounded down. Dead. Buried. It's all on Com in a 1v3. Tap on the spike. First challenge found. Seconds there. Paperex. Perfect to tie it back up to 9 apiece. I love the idea here from EG. Again, the execution, and maybe this is reliant on a kill or two towards short. Paperex in that regard, I guess, doing the right thing and not giving anything away. Well, they barrel down Catwalk, find themselves in tree very, very quickly. They're keeping up, Mike. They are clawing onto this game. They do not want this one to go like Split did, that 13-10. Paperex showing real resilience here. As said, last dance for Jing. Get out of my way. And it looks like an aggressive start for him as well. Up and over, not quite. Pain Shell going to be left, and Forsaken couldn't quite get around the corner. Jorgamo tries to capitalize on the aggression, TPing elsewhere on the map, but Paperex disengage very quickly. Something. We'll find Boostio as well. Finds a little bit of value with that operator in hand now. Where does EG look? Looking at Jorgamo, already cracked clear through Wine. Here. But there's 3 players here. Again, with Paperex keeping the numbers up, they get the beauty of just having that additional body they can post towards the site. Mind Freak drift around towards top middle, noting maybe the vulnerability there, but it looks like maybe Devi's the one who could receive the attention if they furthered the pathing up towards Tree. As it stands, it's only Demon 1. Yes, Jorgamo A main, but indecision. It feels like for EG, waiting to see if there is a re-aggress here. Oh, so have something. Find another kill here onto Com. Mind Freak tucked into this pocket though. This could be deadly. This. Oh, wait. No. They have no idea. Ethan's just found Jin. There's no idea. There's no way. Devi even. Not his call on the way up regardless. Beautiful from Devi. Yes, Mind Freak's position would have been the back line if required. But Devi doesn't even let it get that far. Finds all 3 to clean things up, finding Paperex double digits here. Huge for them. And a big bailout in terms of the finances. They've been struggling for the last few rounds to find a response. Like I said, the operator finally finding some value here. It's Boostio and Com. Paperex one away from the pit. EG, nothing really on the brink here for them. Yeah, rifle in the hands of Demon 1 to try and get something done here. An early paranoia though. Mitigated or negated by Paint Shell. EG don't want to give up the space though. But there's a trade. Forsaken's got to be careful. He's the last standing bastion of this site. Support's on the way and Devi gets there, but Boostio hands out a haircut to Forsaken.
It rolls on the floor. You're looking at Devi, who's been absolutely nuts this map. Does EG continue? They could pause for a little bit. They're still above a minute. This is early fights, and the temptation for that rifle, I'm sure, is just out as well. Boostio knows better. Note Mind Freak here. How far does he go? No, I think he felt the timing out a little bit. For sure, EG though, have cut noise behind this.